बिटकॉइन खरीद सकता था। जाहिर है बिटकॉइन को तब कोई ट्रस्ट नहीं करता था। जब 2009 में क्रिस्टोफर ने बिटकॉइन पर $26 लगाने का मन बनाया तो उसके फ्रेंड्स ने उन्हें एक फेक कॉइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह दी। इनफैक्ट क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करने से रोका जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और जिसे एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि क्रिस्टोफर ने किसी की भी नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनी और ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके क्रिस्टोफर उसे अगले 4 सालों के लिए भूल गए। और फिर अचानक 2013 में जब मीडिया में बढ़ चढ़कर बिटकॉइन के चर्चे होने लगे तो क्रिस्टोफर को उनकी वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट याद आई। लेकिन फिर आगे कहानी में आया ट्विस्ट। क्रिस्टोफर अपने इनक्रिप्टेड बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके थे। फिर क्या था, पूरा दिन अलग अलग पासवर्ड के साथ जूझने के बाद आखिरकार उन्हें पासवर्ड याद आ गया। आप सुनकर हैरान होंगे, 4 साल बाद उनकी वो इन्वेस्टमेंट कुबेर का खजाना बन गई थी। वो $26 अब 5000 बिटकॉइन की वैल्यू रखते थे, जिसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन में की गई उनकी इन्वेस्टमेंट का महज 1/5 पार्ट यानी 1000 बिटकॉइंस बेचकर क्रिस्टोफर ने कमाए $886,000। वाह, मुझ पर कब होगी पैसों की ऐसी बारिश। चलो आएगा वो दिन भी। खैर, इन पैसों से क्रिस्टोफर ने ओस्लो नॉर्वे में एक अपार्टमेंट खरीदा। माना जाता है कि अब भी क्रिस्टोफर के पास करीब 4000 बिटकॉइंस मौजूद हैं और वो सही मौके की तलाश में है जब वो इसके एक और चंक से ह्यूमंगस प्रॉफिट कमाए। तब इसे क्रिस्टोफर का विजन कहें, उनकी गट फीलिंग कहें या एक स्मार्ट बिजनेस मूव दैट मेड हिम अ मिलियनेयर, या फिर जलने वालों की तरह कहें उन्हें एक्सीडेंटल मिलियनेयर बनाया। But he invested in Bitcoin when one could buy thousands of Bitcoins for $100 or less. Hope you like the story. हम आपके लिए और कई क्रिप्टो मिलियनेयर्स की कहानियां लेकर आते रहेंगे। I'm रुचि शर्मा. Keep watching Crypto TV. Hello everyone, you're watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee. Today we are going to discuss the real life use cases of smart contracts. How does smart contract benefit you or me or any of our friends or family members? Let's find out in today's episode. But first, let's find out what are smart contracts. Well, in our day-to-day lives, we all need some sort of a contract to make sure that our promises are kept intact. But what if I tell you that there is a concept called smart contract? Smart contracts can be defined as a paperless digital code that offers a set of promises on predefined conditions that the two different parties have agreed to. In simple words, the parties can set a condition that can start an action or a series of actions when met. Smart contracts actually have the potential to make our world more democratic. Yes, you heard me. In fact, the whole concept of smart contract applications has unquestionably revolutionized the way we live our lives. Experts believe that smart contracts would be around long after everyone has forgotten about some of the leading crypto coins. Smart contracts use the blockchain technology to facilitate the exchange of money, property, information, or anything that people deem appropriate to initiate a smart contract for. The beauty of decentralized nature of blockchain technology is based on peer-to-peer transactions. That means that these smart contracts don't require anything in the way of a middleman. Traditionally, individuals or institutions such as banks and solicitors were required to facilitate legally binding contracts. We all know that, right?
But now, let's see what change the smart contracts implement in our lives. Smart contracts allow individuals to bypass this costly and often slow middlemen and agree on the contract directly. Well, doesn't that make you feel that smart contracts are going to simplify all of our lives? It truly does. In today's episode, we are going to discuss the top 10 real-life use cases of smart contracts. Let's find out. Number 1. Trade finance. Trade finance stands to benefit immensely from the introduction of smart contracts. Recently, Santander Innoventures said that it believes that blockchain technology will lead to more than $20 billion worth of savings per year by the year 2022. A huge amount of these savings will come from smart contracts, automating approval workflows and clearing calculations that, at the present time, are incredibly labor-intensive. Not only will this automation help to reduce work hours, but it will also dramatically reduce errors and the time taken for these calculations to take place. Records. Our next use case of smart contracts are in keeping records. Nearly every foreseeable industry in the world will be able to use smart contracts to help improve the speed and security of its record keeping. One industry in particular that stands to benefit enormously is the healthcare industry. Currently, the world's healthcare computer systems hold hundreds of millions of patient medical records. Despite the fact that these healthcare organizations have invested huge sums of money on security, still, the current access and storage methods are far more vulnerable to cyber attacks compared to the blockchain-based technology. Blockchain technology could allow the entire databases of personal health records to be kept secure. An added bonus is that the technology also facilitates the use of private key. That means only certain individuals can gain access. Some of the other blockchain smart contract use cases include their use in issuing prescriptions, storing receipts, general stock management, storing test results, and so on. Property ownership. Smart contracts have two huge uses when it comes to the property market. First, they can be used to record property ownership. Since the use of smart contracts is faster and more cost efficient, this makes them a much better alternative to existing systems. It also means that they can be used to record the ownership of all types of property from buildings, lands, to phones and watches. Number 2. Elimination of any kind of middlemen. Within the housing market, smart contracts can remove the need for expensive services such as those provided by lawyers and housing brokers. This new technology also means that for the very first time, sellers have the ability to handle transactions completely by themselves without the need of any middlemen. Mortgages. The property market also stands to benefit from cheaper, faster and more secure smart contract-based mortgage transactions. Not only will this allow buyers to get into the property quicker, but it will also help to make the entire process a little less of a headache. Smart contract mortgages would allow both the parties to digitally agree to the sale before processing the payment. Once this is done, the contract would update the property ownership details to reflect the change of ownership. Since the process would require unique key code authorization on behalf of the original owner, it will make the whole process more secure and reduce instances of fraud. Insurance. The next sector that stands to benefit from smart contracts is the insurance sector. The insurance industry spends tens of millions of dollars each year on processing claims. Not only that, it actually loses millions of dollars to fraudulent claims as well. Aside from supporting the initial insurance policy, smart contracts could also help to improve the process of claim processing in many ways. They could allow error checks and determine
payout amounts based on the set of criteria that takes into account the kind of policy that was held by the individual or the organization. Once again, reduced processing times, a dramatic reduction in errors, and cheaper costs are among the main benefits of smart contracts. In longer term, smart contracts could be used in tandem with Internet of Things enabled vehicles to allow for the pay-as-you-go insurance policies and the immediate activation of claims after an accident. Information such as driver licenses, driving records, accident reports, and policy details could be immediately processed to facilitate speedy payouts that would benefit both the parties. Medical research. The medical research industry will benefit from similar advantages as the healthcare industry. First of all, highly sensitive data such as patients' records could be transferred between departments, research centers, after having been securely encrypted via blockchain technology. Since many of the patients participating in medical research have sensitive medical conditions that they often wish to remain private, keeping these records secure is very essential. Likewise, medical research companies have enormous amount of data which includes test results and new drug formulas that they need to keep safe. This could be secured with the use of smart contracts, should they need to divulge any of this information to a third party for any reason. Voting. Well, smart contracts can be the smart formula that can be used for elections. Allegations of fraudulent activities have occurred in many elections of the past. Despite using computer systems that in some cases cost millions of dollars, fraudsters find increasingly imaginative ways to manipulate them. Well, here comes smart contract as a smart savior. Smart contracts are a simple and cost-effective solution to this problem. They can be used to validate a voter's identity and record their vote. This information could then be used to initiate an action after all voting had ceased. Since the blocks within a blockchain are impossible to alter once they have been recorded, manipulation of this record would be very difficult. Peer-to-peer transactions. Smart contracts can be used for a whole range of peer-to-peer transactions. This reasoning is what led to the creation of the Ethereum project and other such companies. Users of all shapes and sizes could use these platforms to create and agree on smart contracts. These contracts then remain active until a set of agreed conditions are met. Once the smart contract is happy that all the conditions have been met, it then allows the remaining portion of the agreement to be fulfilled. Typically, this is the transfer of money, but this isn't always the case. So far, smart contracts have been used for everything from launching ICOs to selling goods on the internet. Various companies are also using smart contracts to secure services of development teams and other outsourced companies. The possibilities of peer-to-peer smart contracts are literally endless. Theoretically, this could replace many of the existing roles that are currently fulfilled by currency. Product development. Another exciting use of smart contracts is to keep a ledger regarding the stages of development of a product. A huge part of the appeal of smart contracts is their ability to keep information secure and to prove its origins. A company that has invested huge amounts of money into developing a project obviously doesn't wish for the information to be stolen. Generally, the only route to justice when information is stolen is a lengthy court process, something which most companies don't have time and money to go through. Now, when it comes to intellectual property such as ideas, you don't need to look as far as the never-ending patent claims between Apple and Samsung just to see how important being able to prove ownership really can be. The list of industries that could benefit from this new technology is huge, given the fact that smart contracts support and secure product development. The kind of industries involved
could range from a small startup to a large tech company such as Microsoft or Amazon. Stock taking. Supply chains are another area of business that can benefit from blockchain-based smart contracts. Internet of Things devices could be used throughout the supply chain to record each step a product takes. Smart contract supply chains could theoretically, virtually eliminate in-house theft, as managers would be able to trace a missing product back to the exact time and place that it went missing. On huge supply chains, such as those found in large warehouses, these smart contracts would enable managers to see real-time stock levels and the time it takes for a product to move through the supply chain. Managers could use this data to adjust stock levels and develop new working practices to improve delivery times. For supply chains that operate in several different locations or companies, smart contracts could do all of the above and even initiate automating reorders and payments for order already received. Such information as contained in these contracts could also be used to help with determining up and coming busy periods and even which products to stock at different times of the year. So we see smart contracts are the most exciting thing to have come from the blockchain technology so far. Smart contracts really do have the power to take our lives out of the hands of institutions such as banks. Since we can use smart contracts to exchange something as simple as labor or more complex things such as loans, they will gain in popularity and the number of these services will grow exponentially. The technological advantages of smart contracts will help to speed up transaction times, lower costs, and even make processes much easier and stress-free. And when smart technology is present in the cars we drive, things we use, and help determine the choices that we make, the world could be a much more secure and a happy place to live. For all this interesting content from around the world of digital currencies and blockchain technology, keep watching your favorite channel, Crypto TV. Like, comment, share, and subscribe. I'm Vinita Chatterjee, signing off. રઈસમાં શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી એનએફટીનો ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્વાણ એકે પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીસ એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસી હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી એનએફટી જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક એનએફટી ક્રિએટ કેમ ના કરું. સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી એનએફટી લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ એનએફટી. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની એનએફટી માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ,
તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4,100ની એક ટોયલેટ પેપર રોલની NFT ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જ જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર NFT USAની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ચાર્મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ NFTની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવીએ છે. NFT એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી NFT ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મિન કંપની ઈચ NFTની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસે રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ, ચેરિટી કરવાનો આ જરા અતરંગી રસ્તો છે, નહીં? તો આ કંઈ નથી. નેક્સ્ટ વિયર્ડ NFT નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ NFT નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન NFT. આ NFT વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક NFT આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી NFT બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે 1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી, ક્રેઝી, રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે. સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની NFTને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7,65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો? તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાઝ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ, ઓકે? થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ NFT નું નામ છે સેલ યોર સોલ NFT. Yes, that's why I called it weird. રિસેન્ટલી 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને NFT નો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની NFT મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ NFT માર્કેટ પ્લેસ OpenSea ઉપર પોતાના સોલની NFT લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ NFT સેલ કરવામાં આવી છે.
એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાન શેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ NFT સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે, જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ્ડ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા ક્રેઝી જ કહેતા હતા જ્યારે તેને ઇલેક્ટ્રિક કાર અને રીયુઝેબલ રોકેટના કોન્સેપ્ટ્સને દુનિયા સામે પહેલીવાર મૂક્યા હતા. આજે એ વર્લ્ડનો રિચેસ્ટ મેન છે. સો સ્ટે હંગ્રી એન્ડ સ્ટે લિટલ ક્રેઝી ફોર સક્સેસ. અને આ મંત્ર સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્વાણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. આવી વિયર્ડ, એક્સાઇટિંગ અને ક્રેઝી સ્ટોરી સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स. उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी, लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया. जी हाँ, NFT की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए. ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है. लेकिन ये हुआ कैसे, चलिए सुनाते हैं आपको. क्रिप्टो पंक्स की लंका में आग कैसे लगी. दरअसल क्रिप्टो पंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी. 2017 में जब क्रिप्टो पंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे. देखते देखते क्रिप्टो पंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा. जे-ज़ी, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे. एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टो पंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप यॉट क्लब ने एंट्री मारी. अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी. जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और NFT होल्डर्स को क्रिप्टो पंक्स की खामियां चुभने लगी. दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टो पंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी. जैसे कि बोर्ड एप के NFT ओनर्स को NFT के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. लेकिन क्रिप्टो पंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे. लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टो पंक्स के NFT ओनर्स को IP, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं. क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही NFT अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है. क्रिप्टो पंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर NFT है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है. इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप यॉट क्लब ने 2 और फ्री NFTs लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया.
इसके साथ ही NFT होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब अपने NFT होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टोपंक्स के NFT होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टोपंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव NFT प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोपंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड NFT तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड NFT को रैप्ड V1 NFT करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया। लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे NFT प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के IP को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो NFT होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू IP के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो NFT होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार NFTs का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड NFTs म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे। नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी NFT ची नवीन लिस्ट। आता मी तुम्हाला अशा 3 NFTs बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल। चला तर मग सुरू करूया। तर या टॉप 3 क्रेझी NFTच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची NFT, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची NFT। नाही तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात। आता NFTs वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय। माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा NFTच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल। तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचे NFTच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये।
हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीनबन शेख या नावाच्या डच स्टुडंटवर एनएफटीचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच एनएफटी मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या भाईने जगातील सर्वात मोठी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपन सी वर आपल्या आत्म्याची एनएफटीला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथे संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या एनएफटीला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे, ज्याला एनएफटीच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयाने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या एनएफटीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या एनएफटीची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या एनएफटी सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला एनएफटीचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी एनएफटी आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या एनएफटीचे नाव आहे इनर ब्युटी म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची एनएफटी. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच एनएफटी बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केटप्लेसवर 28 मार्च 2022 ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच एनएफटी रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक एनएफटी बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा एनएफटीला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला एनएफटी बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड एनएफटीचा नेमका काय अर्थ काढायचा? कारण कोणी या एनएफटीला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंडे बाबा आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची एनएफटी किती मध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची एनएफटी आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटी मध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी एनएफटी लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या एनएफटी साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केलेत. आणि या एनएफटीचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची जेपॅग इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल एनएफटी लॉन्च केलं गेलं होतं. बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचन मध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी एनएफटीज. अशाच प्रकारच्या अतरंगी एनएफटीची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin
is OMI, OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. With only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell, and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days, and the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is crazy coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel, and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT, Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. मेटावर्स और एनएफटी मेनिया ने ग्लोबली सेलिब्रिटीज की दुनिया में तूफान मचा दिया है। एक्टर्स हो या आर्टिस्ट, मॉडल्स हो या फिर सिंगर, सभी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं। ऐसे में इंडियन सिंगर्स भला कैसे पीछे रहते? कुमार सानू, सोनू निगम, कैलाश खेर से लेकर एसपी बालासुब्रमण्यम तक से जुड़ी एनएफटीज सुर्खियां बटोर रही हैं। तो वहीं दिलेर मेहंदी ने सीधे मेटावर्स पर कब्जा जमा लिया है। वहां लैंड खरीदकर दिलेर जबरदस्त खलबली मचा रहे हैं। चुरा के दिल सभी का चले ये चले। जी हाँ, 90s में इनकी आवाज ने सभी को क्रेजी कर दिया था। तब शायद ही कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें इनकी आवाज का जादू न घुला हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस कुमार सानू की, जिनकी रुमानी आवाज ने ना जाने कितने दिलों को पहले प्यार का एहसास कराया। पॉपुलर मेलोडी किंग इस बार अपनी एनएफटी कलेक्शन के चलते सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, अनरिलीज सॉन्ग के ऑडियो और कुछ क्लिप्स के अलावा अपने फर्स्ट ऑडिशन और ऑटोग्राफ्ड डिजिटल मेमोरेबलिया की एनएफटी सीरीज लॉन्च की है। कुमार सानू की इस एनएफटी कलेक्शन में उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ साथ उनके घर के अंदर की खास झलक भी दिखेगी। ये एनएफटी एक्सक्लूसिवली फ्लेमिंगो एनएफटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसकी खास बात है, इससे होने वाली कलेक्शन का 5% एनजीओ को डोनेट किया जाएगा। एनएफटीज यूनिक एसेट होते हैं और इसीलिए अब ट्रिब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी और मलयालम फिल्म्स में
40,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के गुजरने के 6 महीने बाद उनके अनरिलीज सॉन्ग को बतौर एनएफटी उनके फैंस के लिए लॉन्च किया गया। उनका यह आखिरी सॉन्ग डिजीनूर नाम की लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस पर ऑक्शन किया गया। विश्वरूपा दारी सनम नाम की इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फनी रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इस एनएफटी से जुड़ी खास बात है कि इसके बायर को कॉपीराइट का 51% मिलेगा। साथ ही उनके पास इस सॉन्ग को अडेप्ट और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने के राइट्स भी होंगे। तो वहीं इन सब के बीच मेटावर्स की दुनिया में धूम मचाने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले पॉप स्टार दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में लैंड खरीदा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बल्ले बल्ले लैंड। सुनने में आ रहा है कि इस लैंड की एंट्री पर उनका एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टैच्यू होगा, जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉप स्टार और आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स होस्ट कर पाएंगे। दलेर इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं। दरअसल दलेर ने कुछ महीनों पहले पार्टी नाइट पर एक कॉन्सर्ट किया था। अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उसकी मौजूदगी हमेशा बनाए रखने के लिए पार्टी नाइट के साथ मिलकर बल्ले बल्ले लैंड क्रिएट कर दिया दलेर ने। दलेर इतने पर ही नहीं रुके, उनके इस बल्ले बल्ले लैंड पर स्टोर्स भी होंगे जहां फैंस स्पेशल मर्चेंडाइज की एनएफटी खरीद पाएंगे। एनएफटी फ्रेंजी में शामिल बड़े बड़े नामों में से एक है पॉपुलर सिंगर सोनू निगम का नाम, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एनएफटी सीरीज लॉन्च करने वाले पहले सेलिब्रिटी सिंगर हैं। सोनू ने इस एनएफटी कलेक्शन को लंदन में लॉन्च किया था। उसमें उनकी जर्नी और गानों के अलावा उनके लिखे हुए लिरिक्स और उनकी सिंगल हॉल ऑफ फेम की एनएफटी भी शामिल है। सोनू ने न्यू एज डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस के साथ मिलकर ये एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की थी। और अब बात एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनकी प्लेबैक, पॉप और रीजनल सॉन्ग्स की फैन फॉलोइंग देश में नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। लेकिन खास तौर पर सूफी सॉन्ग्स के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडियन सूफी किंग कहे जाने वाले कैलाश खेर ने अपनी एनएफटी कलेक्शन के लिए पॉपुलर एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को चुना। कैलाश खेर की ये एनएफटी सूफियाना अंदाज में रंगों और संगीत के सुंदर सपने जैसी है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ड्रीम्सकेप। संगीत सरहदों का मोहताज नहीं, संगीत की भाषा ही ऐसी है जो हर किसी को जोड़ती है, हर किसी के दिलों के तार छेड़ती है। शायद यही वजह है कि एक एक कर सभी सिंगर्स अब एनएफटी और मेटावर्स की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल एनएफटी और मेटावर्स भी जबरदस्त बूम पर है। ऐसे में इसका फायदा उठाना तो लाजमी है। तो कैसी लगी आपको म्यूजिक एनएफटी पर मेरी यानी रुचि की ये स्पेशल स्टोरी? अच्छी लगी? Then do watch all my special stories. See you soon with yet another interesting story. Till then, goodbye, take care and keep watching Crypto TV. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय। आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील। तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार
सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे. हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे. बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे? याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं. जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशर मध्ये आहे कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्स पेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंट साठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे. पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल. तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईल मध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जे या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद.
हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनेयर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी। इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक ज़ोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चौम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी RPO वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है?
बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है, ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी? ब्लॉकचेन ने बोला, निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माई का लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे। पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीने हे
ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे. हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल. याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल. मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन ॲक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या ॲक्सेप्टन्सला गती येणार आहे. आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदलात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते.
any big promises, but we will do everything to make this work. Through all our disagreements and conflict, we hope to grow our understanding of each other and ourselves. These are the vows taken by Mr. and Mrs. Narasipuram on 15th of November 2021. Now you would be wondering what is so special about these vows that I'm standing here and talking about it. Well, then let me tell you that these are not just the vows taken during the Feras in Hindu marriage ceremony or in any church. These are the vows actually taken on blockchain. Hello and welcome to our show of fun facts. I'm your host Parvati Nirvan, aka Paro, with me having no Deva in life, but I'm glad that this couple has found each other. And not just that, they have also immortalized their marriage on blockchain. Yes, you heard it right. And I have with me this cute couple who took the vows. Let's meet and greet them. Hello, Mr. Anil. Hello, Shruti. Welcome to our show and our channel, Crypto TV. Hi Parvati. Hi Parvati. How are you? How are you doing? Good. How are you? So, I'm pretty excited, and let me just fire my first question. Who got the idea? Like, how did this whole journey of taking your marriage to a new platform that is on blockchain technology happened? Well, it was all Anil. It was his idea. It was his brainchild, and it was his passion. I'll ask him to convey more about it. Yes, I've been in the crypto space for a while, so I kind of been interested in the technology and how it can be used. And we got married in November last year. Yes. So as part of that, I thought that we could do something different. And I heard about this couple that did a blockchain wedding in the US. So I thought, why not give that a try? And it was especially appropriate given that given the times that we live in with the pandemic, we try to keep our wedding small and, limit the number of people as much as possible. And given the situation we're in, it just seemed appropriate to also do it in the blockchain. So that's how it came about. Did you guys face any difficulty like while executing the vows on blockchain? Like you share your journey, like how this whole thing happened. Like if anyone is looking forward to do something like you guys did, they will get a fair idea. And I'm sure you guys have inspired a lot of people. Sure. I would say just to describe what we did and how we went about it a little bit. We, like I said, we didn't want the big Indian wedding, and we didn't want to have a lot of people show up and avoid large crowds for obvious reasons. So we did a registered marriage, which is not that uncommon in India. So we went to the registrar's office and we signed the sort of offline ledger. And then, we came back home and we just got on a Google Meet. We invited some family and friends. We had a digital priest who helped officiate that Google Meet and the ceremony. And we had prepared some things ahead of time, like setting up the wallets and setting up minting the NFT and all. So as part of the ceremony, we just went through the process of me transferring the NFT that which we made ahead of time to my wife's wallet. And as part of that transaction, we embedded some vows, we embedded some language in the contract itself that we were getting married. And we tried to make it a fun ceremony with a digital priest sort of saying a few things about marriage and love, and we said our vows to each other. So we tried to combine the best of both worlds, and yeah, that's kind of how we went about it.
Yes, lovely, lovely. Actually, this gives me another perspective to your marriage. Like people who are having some difficulty, like in this world, to get married, they can just go on blockchain and register and get married there. So any which ways, they are married somewhere in this world. Yeah. So yeah, actually, it's like a different perspective to how you can go about your marriage. And you guys have put that on Ethereum blockchain, if I'm not wrong. Can you just tell us about that? Yeah, so we used OpenSea to mint the NFT. And so, yeah, we use the default platform NFT, which is Ethereum. Yeah. OpenSea uses both Ethereum and Polygon, and because you are from this technological background, so I would like to ask, like, why did you choose Ethereum blockchain for the vows, and did you go Ethereum for NFT marketplace or Polygon? Which one? We used Ethereum. It was just no specific reason. It was just it was a default choice. Yeah, that it was just easier, I guess. Yeah, I think gas fees are a little higher in Ethereum, but for something special like this, I wasn't really worried about Gas fee. fees too Yeah, much. at least for this one. Yes, of course. You wouldn't be worried about the gas fees in this case. What's your next step? Like, what are you guys planning? Like, this question is specifically to Shruti. I want to hear this answer from you. Like, are you like guys planning now something like in metaverse, like having a child in metaverse, like being that creative? Yeah, that would be fun, like having some digital avatar and kind of do things that we probably can't like in real life, like have a really big mansion or something in metaverse. Right, right, right. And probably do interiors the way I want to do it and not like fight about it. I know, I know. Choose your own color, pick your own stuff to decorate it and stuff. Yeah, not a bad idea. And the kid also there. What do you say? Yeah, somewhere playing it. And maybe have like a nice infinity swimming pool or something. Yeah, yeah. Just elaborate me, like hypothetically, what would it look like if you would? So yeah, the probably like a really beautiful big mansion, something like what Kim and Kanye used to have. Correct. And like a big pool with a nice cute library somewhere, and he has his own office space with his computers and all the gears, Right. and probably some mining machine somewhere. Anything else you would like to speak before we close? I mean, anything you would want to go about? It's just that one thing that this whole blockchain wedding and using blockchain to get married, as technically amazing as it sounds, for me it was more like having this personalized way of declaring the love for each other. And it made it more special that he made that effort to create the image that we used for our NFT. And it's a great memory more than anything. And no matter what the gas fees, it's still worth it. Yes, 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 yes. It is kind of very cute, and that's why I was very curious to talk to you both of the guys, like, what it would be like. And you've actually given a lot of people a new relationship goals in case if you're not aware about it, No, I saw some comments on Instagram where like people were tagging their boyfriends on our like news clipping, and the guys were like, "Ab ye bhi seekhna padega." Yes, of course. There's always new things to do and to impress. Right. Yeah, and I would say like what makes for me what makes it special is that one thing is that it was like the way blockchain works, it was just between the two of us, right? It was we could do it in the way that we wanted. There was no one in the middle involved. So that was meaningful, and it's on the Ethereum blockchain, right? So now it's a permanent immutable record of of our immutable, exactly, and public record of our
of our relationship and of our union. So I think that has that's special. And high amount of security and safety and trust, like what blockchain offers. I'm sure this marriage is going to offer the same. Right. And no one can change that. No one can change that, yes. That's the most beautiful part. Because that will involve the consensus of how many, like thousands of people? Exactly. Right. Yes, so we Yeah. cannot change it, yeah. Yeah. Absolutely amazing, absolutely amazing. Well, this was a lovely chat, very interesting and something very new. I must say you guys have created a new landmark in terms of what couples can do more together. It was a lovely time to have you on our channel. Thank you very much for taking your time for our viewers. I wish you well and a great future together. Thanks once again. That's all from my side. This was a fun chit-chat interview on blockchain. I'll bring you more entertaining and interesting facts on what's happening in the blockchain space. Till then, stay tuned and keep watching Crypto TV. Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee, and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today, we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work by following a simple protocol: if, when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action
when predetermined conditions have been made and verified. These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed. That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved, and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Keep watching your favorite channel,
Crypto TV. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power of now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixowl that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dara. Bitcoin has fallen below $22,000 mark and is down by over 65% from the peak hit in November 2021. Crypto derivatives are diverging from their underlying assets, and a large crypto lender, Celsius, has stopped customer withdrawals, which triggered the panic button in the markets. The largest altcoin, Ethereum, is underperforming, similar to the downturn in 2018. Market participants believe that the potential difference in the current downturn is it is largely institutional crypto participation selling, as opposed to 2018 when the retail participation trading activity was much higher. To discuss all the reasons behind the fall in the markets, we have invited a special guest, Mr. Rohas Nagpal from HiFi Blockchain. Sir, welcome on Crypto TV. Thank you for inviting me. So as we are talking, cryptocurrency markets are in a big concern. So markets are falling on the back of USD liquidity being taken out of the markets as we speak, and at a time when expectations of the higher Fed interest rates are negatively impacting crypto prices. So what's your opinion on this, sir? As we are all aware that the broader fall in the market has led to Bitcoin falling by around, as we see from, in 2018, Bitcoin fell around 84% peak to through, and Bitcoin has fallen 66% from its peak in November 2021. So how can you explain this entire situation for our viewers, sir? Sure. So I don't believe that external events such as the interest rates and all have much of an impact on crypto. I think crypto is quite a very different world that we talk about. Now, I think this fall which is happening right now is actually overdue. ये काफी time से expected था, because the prices were becoming unrealistic. I will give you a simple example. Suppose in the stock market, the share price of Colgate shoots up. Will that make the toothpaste more expensive? No. Toothpaste का दाम change नहीं होगा. Right. But crypto में ऐसा नहीं होता है. Ethereum, which is the most important platform, every time you do a transaction, you have to pay ETH. If the value of ETH goes up, automatically transactions become expensive and people stop using Ethereum for transaction and they move to other platforms. So in crypto, there is a direct relationship between the usability of the product and the price of the native token. But that is not the case in conventional world like toothpaste, for example. So because since last year, Ethereum prices were constantly going up,
naturally a lot of people were moving to other platforms. And at some point of time, correction had to come in and markets had to become reasonable. So a lot of the projects which are otherwise not having good use cases, they are all going to fail and they will never come back again. And we will probably now see better projects with more realistic use cases coming back. Sir, as we are talking about broader fall in the cryptocurrency market, there are a lot of external factors. What is, according to you, is the pain point in this market, and a lot of retail investors are also losing money? Sure. So we can divide the crypto investors into three categories. So one I would say would be the institution. The second could be the retail investors, individuals like you and me. And third would be the actual projects that are really using the blockchain, and thereby they need to keep buying tokens to pay for transaction fee. So someone like a Bitcoin miner would also come into category 3. So we can say those are the actual blockchain and crypto users. And purely investors, we are talking about retail versus institutional. Now, when interest rates change and when various things happen at the global level, like say COVID lockdowns in China, the Russia-Ukraine war, that immediately impacts the institutional investors in a big way. And how they invest and what assets they hold completely starts to change. And definitely that also has a very negative bearish impact on crypto when such institutions are exiting the market. Right. The retail investors, unfortunately, they get stuck in the middle. Because while they are not impacted much by these international events, but they don't have much control over the market. They are very small and fragmented. And that is why they end up paying the price for the bearish movements. So you mentioned about this third segment as we're talking about Bitcoin miners. There are a lot of newspaper reports and they have mentioned that Bitcoin miners are selling their Bitcoin because of the cost pressure. What is your opinion on that, sir? Sure. So what happens is when we look at a proof of that has actually triggered a broader fall in the cryptocurrency market as well. Sure. So what happens is when you look at proof of work blockchains like Bitcoin, the miner has to spend a lot of money for computational power, electricity, heating, cooling, so many things they have to spend on. So their natural incentive is that the moment you are given a block reward or transaction fee, you have to sell part of it because you have to pay your bills. So a proof of work blockchain always creates selling pressure. Proof of stake blockchain on the other hand is reverse. It creates a buying pressure because you hold the crypto, only then can you stake and make more out. But the biggest blockchains in the world, which is Bitcoin and Ethereum, both run on proof of work. And because of that, that selling pressure is always there. And when the prices are falling, the miner is now forced to sell more and more of his past holding also because he has to continue doing his expenditures. So definitely that creates a lot of selling pressure also. Sir, you spoke about institutional investors, you spoke about retail investors, and you also highlighted about how Bitcoin miners are suffering losses, and hence they are selling their Bitcoin to just cover up their losses as well. So there is one more category that has been impacted as we speak, is the largest centralized crypto lender, which is called Celsius. It has paused customer withdrawals due to the lack of crypto and fiat liquidity, which is actually, sir, has triggered users' withdrawals on other platforms and exchanges. So what is the reason behind it? And actually this news of Celsius is triggered by when the market started falling. So how can you explain this entire episode for our viewers, sir? Sure. So see, Celsius has about 1.7 million users and they have about $12 billion of assets under management, and they are basically like a bank, but bank for the crypto world. And they have made more than $8 billion in loans because they were promising 18% per annum return, which is an extremely high return, right? So a lot of people felt that, okay, this is very good. I can borrow cheaply and then lend the money through platforms like Celsius and get 18% return. Now imagine if you are able to borrow at 3 and 4% and lend at 18%, you will make a huge profit. But these are very unrealistic and they can work for a very short run. But other than that, it defies the laws of economics. If it is actually possible for you to borrow at 2 and 3% and lend at 18 safely, then everybody will only do that. Everyone will leave their jobs and only start doing this lending. But the moment more and more people put that money, you cannot get those returns. And that is exactly what Celsius is now facing. So, but what happens is if you want to compare this to the NPAs of regular banks, in a regular bank, you are lending in the fiat currency. Now the value of the rupee in India doesn't keep going up and down, right? But crypto banks are not lending in fiat, they are lending in crypto itself. And the value of the crypto fluctuates wildly.
So you cannot afford to keep giving that 18% rate of return anymore. And that's the reason now, one by one, so many platforms are beginning to crash because it is not sustainable. Their economics doesn't make sense. So sustainable business model is something which you are highlighting as of now. Actually, this is the cause, why there was a big sell-off in Bitcoin yesterday. Sir, there are a lot of reasons as we speak. There are a lot of reasons and questions which investors are worried about. One is, of course, as we go back a bit, there was an episode of Terra Luna which happened last month, and that was a trigger, and that was a point when the entire thing happened. Roughly around $1.5 billion worth of Bitcoin were sold. Roughly around 88,000 Bitcoins were sold by the Terra Luna to protect their stable coin. So वहाँ से market से recover हो नहीं पाया है. So how can you explain this situation if you go back a bit, and what are the takeaways from this episode, sir? See, I have always been a critic of algorithmic stablecoins. They have never made any sense to me, and I have always said that algorithmic stablecoins in time will all fail. And as we can see, that is happening in reality. One by one, they're shutting. A stable coin has to be backed by a stable asset. Right. Right. And stable assets are usually the ones which nature has restricted. Right. Crypto, you can create like ETH, unlimited ETH can be created. But you cannot create unlimited gold. But tomorrow, if a huge new gold mine is found, or some asteroid comes close to Earth and we are able to go and mine gold from it, only then will the supply of gold increase huge amounts. But that's likely to be a rarer event. But in crypto, you can create as many projects as you want. There are close to 20,000 projects. They can create as many tokens as they want. So a Shiba Inu can create trillions of tokens. Nobody can stop them. Which is why we have to remember that these are two very different concepts. So when you say stable coin, it has to be backed by a stable external asset. Whereas an algorithmic stable coin is not backed by anything. Or worse, it is backed by a crypto itself. And a crypto can never be considered stable. So definitely, we saw a lot of problems happening with the US dollar. Even the US dollar stable coins have been facing pressure. Right, like few months ago in India, when there was a news that crypto is going to be banned, suddenly we saw that against the rupee, USDT crashed, but not against the dollar. And that created a huge opportunity for people to, take an arbitrage situation. So where we are seeing weakness even in a dollar-backed stable coin, definitely algorithmic stable coins had to fail. Sir, one more algorithmic stable coin is under concern. Yes, unfortunately offhand I'm not able to recall the name, but yes, all algorithmic stable coins, in my personal opinion, will fail over time. All right, sir. As we speak, you mentioned about government action which was taken. So governments around the world are getting harsher towards crypto. So how do you sense this news as an impact on investors? And is there an opportunity for retail investors, or there were broader concerns as far as the companies who are operating in the particular country and they are moving away to other countries, maybe which are more tax friendly. So what is your opinion as far as the government stance is concerned, sir? Sure. So when we look at the Indian perspective, so we have a 30% tax which has come in. Now, I don't think 30% is a very high tax because many of the investors anyway come under the 30% tax slab. But yes, where I do understand there is a problem we are facing is that you are not allowed to offset losses. But then that is the case in case of any speculative asset, whether it is horse racing or lotteries, the same kind of a law applies. But what happens is, like I remember in March end, I was telling everybody on social media that it is time to exit everything if you are an Indian. Because the tax begins from 1st April. So before 31st March, liquidate all your cryptos, then think very carefully and re-enter the market. And if you have followed that advice, you may have benefited and this current bear market would not have impacted you. Because see, we need to be in line with the thinking of the government of our country. We are not here all trying to become smugglers or criminals and say we will not listen to the government and we will start doing transactions in other countries. No, that is not the right approach. As long as the government of your country is against something, it is not a good idea for you as a citizen to invest in it. So I would say a lot of Indians are actually saved because of the tax. Many of them had sold out, so they may not have faced the brunt of this current crash. But we can see across the world, governments are getting harsh on crypto, and the reasons are very simple.
no government can allow a private currency to start taking over, because that is going to be disastrous for the common person. Secondly, we saw a lot of these ads being put up by exchanges saying 100 rupees mein Bitcoin le lo. Exactly. Now, let us think about it very rationally. Do we actually want non-savvy common man to actually start putting all his saving into Bitcoin? No, that is very, very dangerous. So naturally, the government was then forced to come out with more measures so that the common man does not fall for this. Crypto is a very sophisticated financial instrument, and you need to be very savvy and educated to actually learn how to deal with it. And even the most savvy whales make mistakes. So I think it is all coming together. Many countries are now trying to regulate crypto, and we should give it 3 to 5 years before the global legislations and all fall into proper place, and then maybe crypto becomes a better investment avenue. So many countries are trying to regulate cryptos. That's what you are saying, sir. But there has been one more concern point as far as the market is concerned. So several exploits and scams in 2022. For example, Ronin exploit, which happened of $615 million odd, Beanstalk protocol, flash loan episode, which triggered a 185 million hack. So these exploits and scam, sir, bleed investors and severely impacts market sentiment. That is also a cause of concern, sir. What is your view on this? Sure, definitely it is. So crypto is supposed to be all about technology. So people in fact say we are not investing in a financial thing, we are investing in technology. Now obviously technology is the most important thing in crypto, but when that technology breaks or regularly gets hacked, naturally it creates the fear in people that the technology is not as strong as we thought. And a lot of these attacks are actually happening on bridges. So bridges basically connect different blockchains to each other. Like if you take the normal real world example, if I'm in India, we use rupees. But when I go to the US, I have to use US dollar. Right. So I have to go to a bank or a third party, exchange my rupees for dollars, and I can spend in that country. So when we look at the blockchain world and we want to move from one blockchain to another, they each support only their native tokens. Right, sir. So Ethereum would support ETH and Ethereum tokens. Solana would support SOL and its own native tokens. So to interchange them, we need this blockchain bridge, which is a new technology. And because it's new, definitely there are problems and vulnerabilities, and they are constantly getting hacked because a hacker can make huge amounts of money when he breaks a bridge. And that creates fear in the minds of people that the technology is not strong enough. So definitely it has a huge impact. So all right, sir, as we are discussing about the top reasons why the market is under broader concern, just let me give you a recap. We discussed with Rohas Nagpal about the macro factors which are impacting the cryptocurrency market, right from inflation, right from the US interest rate scenario which is building up, and a broader sell-off by the institutional investors. And we are now discussing about the internal factors which are impacting the market, such as Rohas has highlighted about the scams, and we are discussing about internal factor. Let us discuss one more internal factor with Rohas. Is in 2018, Ethereum has fallen roughly around 92% as we speak, and it has fallen roughly around 73% from its peak. So if we go back to what the entire Ethereum episode is as of now, the merge is something which is getting delayed day by day, or by month, or maybe by years. So what is your opinion, Rohas, as far as the Ethereum universe is concerned? Because there are a lot of concern in the markets. Yesterday, there was a news that roughly around 1.5 billion worth of staked Ethereum were sold, that actually triggered a broader fall in the market. So what is your view as far as the Ethereum universe is concerned? Sure. So whatever I talk about, I always think as a developer or as a blockchain architect. So when I look at the Ethereum blockchain, while it is the best blockchain out there without any doubt, it has become very expensive to use. It is just like, imagine if tomorrow the price of petrol becomes 1,000 rupees a liter. It will impact the entire economy. Right. So as ETH goes up and Ethereum becomes costly to use, the entire decentralized finance ecosystem becomes unsustainable. Now, for a long time, Ethereum has been trying to upgrade its technology so that it can make transactions cheaper and faster. And one of the most important things in that is to move from proof of work to proof of stake. And this has already happened in a parallel chain called the Beacon chain. And this is the Ethereum mainnet. They are supposed to merge. And that is the meaning of, that's why we keep using the word the merge. But the merge is constantly getting delayed. So people are now beginning to become disillusioned with it and thinking maybe it will not really come soon. And
maybe the whole ecosystem is going to fall apart. This was Because the reason ecos- why the Ethereum staked Ethereum was sold, sir. Yes, to enable proof of stake. But proof of stake is not a reality yet. We are Right. still waiting. Right now it is happening on the beacon chain, but not on the main production blockchain. The test process has begun. Yes, the test process began quite some time ago, but unfortunately, we are not able to get a concrete date on when the real thing will happen, and it's constantly getting pushed, which obviously means there are some serious technological difficulties. So- And another thing we have to remember is that proof of work has been very secure so far, but proof of stake is not tested enough in the world. So it is possible that once Ethereum moves to proof of stake, new technological challenges may arise and the whole Ethereum ecosystem could collapse. The technology could actually break. So that is actually a bigger concern as we speak. Sir, there is one more topic which I wanted to discuss with you is the layer 2 solutions which are attached to this Ethereum ecosystem. So as you rightly said that Ethereum is trying to solve its high gas fees problem and the power issues as well. So layer 2 solution, what will be the way forward? Will they survive? Will they exist? You know, when Ethereum एक दिन तो सर वो कंप्लीट करेगा अपना मर्ज तो उसके बाद में उनका क्या आउटलुक है सर लेयर 2 सॉल्यूशंस का आप बताएं सर. Very good point. See, I believe fundamentally the concept of layer 2 is not logical. I mean, the blockchain should be strong enough to do things on layer 1. The moment we start doing this patchwork of putting band-aid on top of the blockchain, we are heading in the wrong direction. See, I believe ideally Polygon should be just a pure independent blockchain of its own. Perfect. It should not be a sidechain of Ethereum. Ethereum itself should grow properly that the L1 is able to do all the things that it is required to do. So fundamentally, I'm not convinced with the whole concept of it. But if Ethereum's merge does not happen even this year, I think then it is better to move on to, like I personally, since last year, I moved on to the Binance Smart Chain. All right. Sir, as you're talking about Binance Smart Chain, there are broader concerns as far as the BNB coin is concerned. So there is one case which is going on as far as the Binance ecosystem is concerned, which is actually not going well with the investors. Although the market is down, but there is a broader concern. We are discussing about the internal factors that are impacting the market. So as far what is your view as far as the BNB coin is concerned and its way forward? Sure. So now when we look at the Binance ecosystem, actually they are doing many things. In fact, many people don't know that Binance is also one of the largest Bitcoin miners. They also run a lot of the top sites like CoinMarketCap and other informational databases. They also run the Trust Wallet. They have their own centralized and decentralized exchange, and they have 2 blockchains, and now they're planning a 3rd one. So Binance has many things put together. I am talking only about the smart blockchain of this. That needs BNB as its native token to pay for transactions, but that's a very low cost. So there we are not facing any problem, and I'm very happy to say that the Binance Smart Chain transactions go fast. I have not really seen much downtime. BNB prices, on the other hand, is an altogether different story, but it doesn't really impact the smart blockchain much because the transaction fee is anyway very low. So no matter whether Binance BNB is at $600 or $200, it doesn't make much of a difference to me when it comes to transaction fees. Sir, as we are talking about the internal factors, what are the concerns in the markets? Solana has been under a broader concern because of its outages and the frequency at which it is happening. So, what is your view on Solana? Sure. So I used to be a very big fan of Solana, and I have spoken very positively about it many times. But then off late, I have begun to see far too many technological problems. See, blockchains are supposed to be decentralized. But when an entire blockchain can go down for 18 hours, what does it prove to us? That it is very centralized. Because if there are thousands of nodes running and normal people like me are running nodes, why should the entire blockchain go down? So because of the technological problems, I would say I'm staying away from Solana as of right now. Secondly, we have to also realize something. What are the use cases which startups are building? Are there actually so many use cases in the world that we need newer and newer blockchains? Every new blockchain says, I am faster. I can do, say, 20,000 transactions a second, 100,000 transactions a second. My question is always, do we need that speed? Exactly. Are we actually even doing so much business on the blockchain that we need this speed? And I think the answer is no. Even at a 7 to 10 TPS of Ethereum, I think it can handle most transactions. Or a Binance Smart Chain with 3 and 4 second block times can handle it. Do we really need so many new blockchains?
So as we are talking about what are the internal factors that are causing the fall in cryptocurrency market, sir, the hype around NFT seems to be dying out. What is your opinion? Since the beginning of 2022, we have seen broader volumes come down. What is your opinion on this sector and the way forward? Sure. So NFTs are of many types. We have the digital image NFTs, which are the most popular today, but they make no sense to me. I mean, like, I will give you a very simple example. How many people actually pay and buy physical art and put it at home? Very few. Now imagine how many people actually will be paying for digital art. What is the point? What do I get out of it? You know, those are not questions no one is answering. Right, sir. Now, many people say that you can take your digital art NFTs into your metaverse. So I'll give you an example. Behind me, there is a wallpaper. It is a physical wallpaper. I had to pay somebody, I bought it, they came and pasted it on the wall. Now, tomorrow, when I build a home in the metaverse, maybe I will pay for the digital version of this as an NFT and then take it into my home in the metaverse. Oh, when is that going to happen? The metaverse is yet very, very far away from mass adoption. I started using metaverse in 2003 when Second Life was created. Today, we are in 2021. 18 years later, I still don't see the metaverse getting mass adoption. So when is the world going to reach a place where we will buy digital art and take it into our metaverse homes? I think those are very far-fetched. So that is the reason I believe today's NFT version will not really last. So one last question before we let you go, sir. What is your advice for our viewers who are watching this interaction? Markets are steering towards, as we speak, Bitcoin is steering towards 2017 high, which it made of $19,500. So what will be your advice? को क्या करने चाहिए इन्वेस्टर्स ये टाइम पर जब भी मार्केट इतना ज्यादा ब्रॉडर कंसर्न्स में है, उनका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सर? अगर आपने मेरी बात सुनी होती और 31 मार्च के पहले बेच दिया होता, then I'm presuming right now you're not facing losses. सर अभी जिन्होंने नहीं बेचा है वो अभी क्या करें? Unfortunately, उनके बारे में I'm not able to give any advice. But those who did sell, now is a time to kind of slowly start moving back, but don't start with the big project. Identify pre-listed projects, means they are not yet listed on the crypto exchanges. They are in the initial stages, but those use cases are solid. There should be very nice use cases, and you will be able to get pre-listed tokens at a very cheap price today. Fantastic. And the best way to find them is to go to the airdrop sites. And whichever new projects are giving airdrops, which is free cryptos, first of all, sign up and take the free ones. Then whichever projects you find really strong, start taking a little bit of those. But stay away from the main projects for now, because we don't know how much more it is going to crash. It is next to impossible to predict the bottom. Nobody knows when the bottom has come. So I would say wait for some time. But start with pre-listed, which you can get for free in airdrops. I would recommend that as the next step. No one can predict where the market can take a U-turn. That's the word coming in from Rohas Nagpal. Thank you so much, sir, for joining on Crypto TV and educating our viewers. You gave a fantastic macro view as far as why there is a broader concern in the cryptocurrency market. What are the external factors? And you also spoke really well about the internal factors. Thank you so much, sir, for being a part of this interaction. Thank you. Bye-bye. So that's all there is in today's interaction with Rohas Nagpal. Keep watching Crypto TV for more such interesting interactions. Thank you so much. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is
Mana, Gala, Solana, bhai, kal aana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is crazy coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, oh, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum, once said, whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, blockchains automate away the center. Instead of putting the driver out of a job, blockchain puts the Uber out of a job and lets the taxi driver work with customer directly. What it also means, in other words, is blockchain is the key to prosperity. How? Let's figure this out with our guest on Zoom call. But before that, let me welcome all the viewers of Crypto TV, and I am your host Parvati Nirvan, and today I have with me on Zoom call Mr. Ashwin Safaya, who has many years of experience in building and scaling ventures related to crypto assets and its underneath technology blockchain across Southeast Asia. Let's welcome our guest. Hello, Mr. Ashwin. Hi Parvati, thanks for having me. Pleasure to be here. How are you doing today? I'm doing good. How are you doing? I'm glad to be here and thanks for inviting me for this discussion. Great. I'm doing well. So let's move to the first question, right? Sure. So as you are associated with many startup companies for building and scaling their businesses across Southeast Asia, what are the use cases on which these companies are working on? So, Parvati, that's a very interesting question. And I primarily work very closely in the startup ecosystem, primarily in the emerging tech space, especially with startups or businesses who are, leveraging and utilizing emerging technologies, especially in the blockchain space. So we help them expand and position in Southeast Asian APAC region. So there are varied and diverse use cases across all domains, right? Right from fintech to AI to blockchain and underlying
use cases or underlying utilization of the blockchain or emerging technologies. Right. So yeah, that's a very interesting space to sort of, figure out, and very broad as well. Right. So what are, like, can you name some use cases precisely, like the companies that you're working with? So we work with companies across the whole emerging tech ecosystem, right from fintech to edtech to martech, and especially in the blockchain space, we work on multiple applications of blockchain technology, right from crypto to exchanges to real world applications across multiple industries. Let's say in BFSI, right from transactions to cross-border transactions, remittances, etc., to document exchange on blockchain, to data and identity. So there are like varied and diverse use cases which could be obviously adapted and implemented across the whole ecosystem. Right. Across industry. Right. So continuing the first questions, are there any company or companies that are based out of India? And if yes, then what kind of businesses are being developed in the crypto space by those companies? So Parvati, I'm sure that there must be many businesses which are based out of India and outside of India in the greater region. And I'm sure they must be trying, or rather building, different business models related to use and applications of crypto and blockchain as a technology. These both are, somewhat used interchangeably by a lot of people, but they are actually separate in different use of technology. So blockchain is the underlying technology. So I believe right from sort of new crypto exchanges to more diverse and expansive use and utilization of blockchain as a technology across varied use cases and industry verticals. Can you name few? Like instead of naming the company, just the applications, the kind of applications being developed, if the companies that you're dealing with, which are based out of like India. So Parvati, again, applications have been developed across various layers. One could be platform applications. So there could be blockchain platforms which could cater to multiple use cases. There are a lot of companies or businesses which are developing blockchain platforms which could cater to respective processes, areas, and use cases across various industry verticals. Like, for example, in banking and financial services, there could be platforms which could unify use of blockchain across processes, right from, as I said, accounts and transactions to payments to cash to document, and then subsequently to identity and data on blockchain. So there are a lot of companies. I don't remember all of them at top of my head, but there are crypto exchanges, as I said. There could be blockchain platforms, there could be certain frameworks and protocols. So it cuts across various segments and layers of use of emerging tech, especially blockchain. Yeah, I understand. I just wanted to ask and understand, like, is there any difference when the specific use cases comes when the companies are from India and otherwise, like, because you are dealing with all the Southeast Asia region, right? So that is where I'm coming from. So typically use cases would depend on the key pain areas and the kind of pain points which a particular industry is facing. So be that, for that matter, be it India or any other country, there are similar, if not same applications of the technology as such. But then it could really depend on what kind of use cases are being positioned and what kind of pain areas a particular business wants to solve. So for a crypto exchange, the use case could be just trading of cryptocurrencies, for example. But for a blockchain platform, it could be completely different. So out of the many blockchain use cases that you have mentioned so far, one of the use cases is tokenization. Can we discuss about that? Sure, Parvati. I think tokenization is itself a very interesting use case for use and leveraging, blockchain technology. And I think the reason it's quite interesting and sort of diverse is because it has diverse applicability across industries as well as business processes and use cases. So, for example, there can be multiple use cases or business processes which can be possibly tokenized. And then those use cases could cater to, for example,
in BFSI space, in banking and financial services industry, the biggest use case of tokenization could be payments. And if you look at the projections, by 2023, digital transactions value would possibly surpass about $6.7 trillion globally. So you can look at the expanse and the potential for applicability of tokenization of payments. So it's basically utilizing that tokenization as a for the technology to obviously issue stable coins or cryptocurrencies, again depending on which use case you're driving. And then it could obviously help reduce costs for the payment processors and obviously and point of sale systems. So I think this is the major enabler of tokenization use cases catering to payments, which could also help enhance security, safety, and compliance, for the payment processes and transactions. So again, so this is one of the use cases. There could be other use cases across different industries. For example, in fraud mitigation, for example, tokenization, how that can be used to help tamper-proof, the online fraud. It could help to do the real-time analysis of various, processes. It could also help to audit the systems beforehand. And then it sort of provides that enterprise-grade How security. tokenization will help in that case? We have been hearing that this can happen by using the entire blockchain technology, and when all the things, all the documentation transformed or comes on blockchain. But how, with the tokenization, that is going to help? I think tokenization is one of the components of the entire blockchain technology. So it is basically about, So this is one of the components how it could, help mitigate certain fraud mitigation cases or scenarios. So this is one of the components. Obviously, the entire end-to-end ecosystem has to connect and integrate. So tokenization of, a particular asset, both on the digital and the physical world, could help in fraud mitigation, but then it has also to connect to other, I would say technicalities of the whole blockchain. Applicability of tokenization, or for that matter, the entire blockchain application ecosystem could cater to various industries. Again, issuing digital assets or tokens. It could be for sports organizations, for athletes. It could be for healthcare, organizations or institutions which could issue tokenized or digital credentials for participants. It could be medical practitioners or users of that healthcare, services or products. The NFT is a very popular and prominent use case among all other use cases so far, right? Do you think it's only a bubble that is being created and which will burst eventually, or do you think that it has a real world application attached to it? It's a very interesting question and very hard to answer at this point because nobody knows what it is. There's a huge hype around NFTs, and in my view and whatever limited understanding in my experience, what I've got of NFTs is basically, it's a bunch of computer generated variants, digital variants, which are put up on a web page. And say, for example, I sell you a NFT, or, it's essentially a receipt to a URL that says you theoretically own that, own that asset, which is essentially called an NFT. But that's about it. I mean, you can't really work around and sort of go and prove your ownerships. And even if you prove your ownerships, what you're gonna, what kind of value you're going to derive with that. So it's speculative, it's hyped, I guess, at this stage, and it could really, time will tell how, you could possibly use NFT. So essentially at this stage, what I understand and what I'm seeing is it's just essentially you're trading a receipt to somebody else, and then you're sort of having an NFT as a digital asset to yourself. So by default, it just gives you no rights, for example, no ownership rights. So it's literally just a receipt for, for a purchase. So you get a receipt in any transaction as you purchase something. So it's essentially a receipt, digital receipt, which you receive for, sort of purchasing a digital asset, which is called an NFT. But then you can subsequently trade it to multiple people, participants, etc., who are interested. But actual usability of NFT is still a big question on how that can be applied across, intellectual property gains,
or intellect property or other use cases, for example? What are real world applications of, issuing or making or creating NFTs? As of now, I do not see that much of a potential in sort of proliferating trading NFTs, but I think time will tell. Couple of years back, we were sort of speculating about how the cryptocurrencies or digital currencies would grow. And now we are at a stage wherein we get a bit better clarity on how the market would, turn out with respect to cryptocurrencies, both regulated and unregulated in due course. Right. So actually what has been happening around, and we keep hearing, is like, for example, big brands like Nike, they have created, NFT for their shoes, and then we have Snoop Dogg, artists like Snoop Dogg, they have created NFTs of their songs and the music. So a lot of big players are, or the big artists or people who are very popular, they are coming and buying it. For that matter, Mr. Amitabh Bachchan from India. So, Madhushala, they created an NFT of that. So that has been happening, and there's a lot of hype. So is the NFT overhyped? Firstly, the hype that has been created for this particular use case in the blockchain, if yes, then why? The market exuberance that powered the NFT boom has given way to more cynical conditions, forcing the largely speculative NFT market to confront reality. What is your view on that? The current situation that is there in the market. So again, Parvati, I'll add on to what I just said about the NFT ecosystem. I feel it's still very early stages, nascent stages, how the NFT is developing an ecosystem in terms of the applications and use cases of NFT. It's still to be seen how this will be developed. At this stage, it's more on connoisseurs kind of collections, that you do art collection or you do a certain unique probably a art or a song or a poem, as you said, related to Madhushala. So it could be anything, but what are the larger world applications or real practical applications of the usability of NFTs? That still has to be seen. And it could just happen, it could go two ways. One, it could possibly have more expansive and diverse applications for using NFTs. Probably you could have, more practical, better, usable applications on NFTs, just, rather than just having an art collection digitized as an NFT, or for that matter, anything else, as a celebrity doing it for some games. But then time will tell, and I think probably in a year or so, we would know how NFTs could apply across, use cases and applications, especially if we talk about metaverse in the future, how that NFT will play a part, what would be the, use cases or applicability of NFT. So it's still, I would say, early stages in seeing how the NFT ecosystem develops, but then it's again, it's somewhere in between hype and overhyped. It's somewhere in between that. So that's what I feel. Yes, NFT has been hyped, so that's my reason to particularly discuss this particular use case. The research says NFT data firm Non-Fungible reported that transaction volume was down 47% in first quarter of 2022 compared to the quarter previously. The data is even more stark when assessing daily average sales, which suffered a 92% decline between September 2021 to April 2022. So a washout was always inevitable for NFT market that has been light on value proposition but heavy on hype. Will this fall continue? What do you think? Again, I would just extend what I just said, based on the points you raised earlier, which are very pertinent. These are very interesting and very pertinent questions related to the current ecosystem and what's been happening in the blockchain/NFT/crypto space. So I feel, as I said, it's still early stages, or not that as a sort of early adoption of NFTs, just very niche adoption across some areas of art collection, etc. So I think this has to be seen possibly 6 months down the line, as we have also better clarity on metaverse. How the different use cases applications. I will come to metaverse. Yeah. So Parvati, I feel it possibly, again, if it does not go beyond the current applications and possibly
real world use cases. For NFT, I think it's going to fall further. It probably go down the same road as currently crypto is going across, various segments. Yeah. So what you are saying in the nutshell is it's a big question mark, right? At this It's a big question mark at the moment. And Yes. I think, again, if it does not go beyond the current, applications, it may further, go down the Fall. drain or probably become obsolete. Okay. A big remark. Fine. Let's move to the another question. The one you mentioned, which is the another popular use case. Like I'm talking with respect to the use case that has been developed, metaverse. What are the technologies that can be incorporated with the metaverse ecosystem, and will the integration of various technologies is the evolution of Web 3.0? If yes, then how? Yeah, again, a metaverse is a very interesting and, I won't say hype, but it's a very looked at and a trendy, discussion topic and a, sort of word to play around with. I think, again, a lot of people are stating metaverse is the future of internet, but it's, again, very early days and early. It is perceived so. Yeah, it is perceived so as a future of internet, but Yes. again, we are at very, very early stages of seeing what could be the potential applications of metaverse as an ecosystem and as a newer dimension to, people connecting digitally or integrating the physical and digital worlds. So I think, as you would know, obviously, it's been almost close to 6 months now since FB or Facebook announced its rebranding of Facebook to Meta as a platform. Meta. Yeah, and they are obviously seeing that how they can possibly leverage the future potential of developing a metaverse ecosystem. But essentially, Parvati, if you see metaverse, it's if you replace it with a more simpler, easily understandable term, it's actually cyberspace, right? So so many people are using these jargons and hype words of metaverse and this and that. Okay. But it's essentially a digital cyberspace in which various technologies would interact and communicate with each other. Yeah. Recently, I've just come across there is a integration of AI technology in the metaverse, with which doctors are performing surgery. So actually, I'm coming from that space wherein people are integrating various technology into the space to make it work. Not that those technologies are new. The technologies, for example, IoT also, for example, if they are including IoTs. So they are developing, or they are definitely at a very early stage to develop and go forward with this. But how do you see that progressing? I think, again, this is a space which is, as you rightly said, it is still at an earlier stage of development, and seeing how this could be a potential, I would say, practical applications across industry areas, especially in healthcare, as you said, for probably doing surgeries robotically or using robotics. And this could be a use of AI and other technologies. How it would integrate with metaverse, it's still A question a mark. question which probably we would have to ponder on. Right. Fine. Let's move to the very interesting question that I was waiting for, because you come from the Southeast Asia market. So Southeast Asia market is the emerging market in crypto space, right? What are the countries that actually are, business generating countries for you guys? And what are the sectors which are more prominent, like the business being developed? So essentially, Parvati, we actually work with businesses who are looking to expand scale and further position their business or offerings in the Southeast Asia APAC region. So of course, it's a emerging, growing, and a very huge potential market for a lot of businesses, especially in the emerging tech space, be it in AI, metaverse, blockchain, crypto. So it's a global hub anyway, and it's a financial services hub. If I talk about Singapore, it's a financial hub and a global port hub as well, in terms of the supply chain and port operations. So I think there's a huge potential for multiple applications of various technologies. So I think that's what we are currently sort of seeing, which kind of businesses we can probably work very closely on to help them
further position their offerings and potential use cases and applications across industry areas. Yes, yes. So the way Singapore is becoming or emerging as a hub for crypto space, Dubai is also offering a lot of things to companies, and it is actually emerging as another hub towards this side. So what do you think about Dubai in that case? So again, I would say Dubai is at the same league with respect to Singapore. It still, has put on certain regulations and certain features in attracting more stakeholders. I would say businesses, stakeholders, even high-skilled IT professionals or skilled technology professionals to go to the country and further innovate, further develop newer technologies or research on newer technologies, and then subsequently see what could be the potential applications. So Dubai, I see as an emerging, becoming an emerging crypto/financial hub. It's probably competing with Singapore at the moment, and it could even, come closer to what Singapore People are highly attracted to Dubai that way. Like the businesses are going there. So this is what's happening. So for example, in Dubai, they have relaxed the certain regulations for you going as a professional. So if you want to go to Dubai and you operate in a certain technology, you have a certain skill set, and you have something to sort of, go to that country and develop, then you can go off. You don't need a sponsorship from a particular business or a company to hire you. You can just go there, apply for a, let's say, independent visa, which could quote you as a, let's say, freelance or a solopreneur or an entrepreneur, which is doing something, and then, you could go into the country. Likewise, Singapore is also doing certain things similar to that, but, those are still a bit more stringent and more, I would say, difficult to cross than Dubai. So Dubai is trying to sort of become the new crypto/financial services hub and a tech hub as well. Yes, because they are more open to, more open with the regulations that they are forming. They are more open to people coming and more open to businesses, startups as well, right? Yeah. In fact, what I, in my view, Dubai has been a blockchain hub even way before then Singapore was sort of getting to that perception of becoming a financial services / emerging tech hub, and you can say blockchain hub. But Dubai was doing in a lot of building certain grounds into developing as a blockchain hub closer to when they were planning to do Expo 2020, which got obviously, didn't happen because of the COVID pandemic, but then they are further developing to, make Dubai as a tech hub. Yes, Dubai Expo actually was covered by our team as well, actually. Oh, awesome. Yes, we were there. Great insight. Anyways, so Singapore wants to become the next hub for the crypto market, right? Still, the regulatories are yet to be formed. How receptive Singapore is in terms of forming those regulatories, or we can say how considerate the government will be in this matter? So Parvati, again, I'm not a government or regulatory professionals, but I would just share my inputs in terms of my experience and, how I have learned interacting with the larger ecosystem as such. So please go ahead, no problem. As an example, in the last 2 years, Singapore and the regulatory authority in Singapore has granted multiple licenses to multiple digital payment service providers, including cryptocurrency exchanges. Okay. So for example, it included a stablecoin player like Paxos, cryptocurrency exchange, CoinHako, which they have, approved the license for, as well as established enterprise level, businesses such as DBS, which is a local bank. And so they have approved for DBS Vickers a license. So again, I would say Singapore as a regulatory ecosystem is very, very strict and stringent. So they don't really, cut corners and cut, certain processes just because to approve and, build up that perception of becoming a very liberal crypto or blockchain hub. So they will take their own, certain protocols. They have to, they really follow the, stringent processes and protocols. And I think that that's for the better, because that helps to, cut out or take out the bad apples in the industry.
and that's very important for developing the right sustainable and a long-term, any kind of a hub. So if you want to develop a crypto/blockchain hub, you would have to follow a stringent protocol and processes to make sure that only the right businesses with the practical applications and use cases, and with a very strong track record, regulatory framework, as well as the whole strong business models would get passed from the gate. Then in that case, what makes me think from this conversation is Dubai is going to give a tough competition to Singapore. Absolutely. So Dubai is going to be a very strong competition to Singapore in terms of both, attracting companies and businesses, both who are doing something in the emerging tech space, especially in blockchain and crypto. So Dubai is going to be a very, very strong competitor for Singapore, both in terms of regulations as well as, probably developing more attractive businesses for, attracting businesses to come and set up their entities and invest here. Right. Fine. Lovely. This was a lovely time that I've spent, and it was very insightful. We've got some new idea about how Southeast Asia market is doing and how the businesses are emerging. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you, Parvati. Likewise, thanks for having me, and pleasure to be here. This was a very interesting conversation that I had with Mr. Safaya. To continue more such conversations, I will bring you guys a lot more such episodes with the experts. Till then, take care, and to stay updated with the happenings of crypto world, do watch our daily news bulletin in Hindi and English both twice a day only on Crypto TV, and don't forget to subscribe our YouTube channel Crypto TV. I am your host Parvati Nirban, signing off for now. Bye-bye. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. आजकल जहां देखो NFTs की चर्चा है, जिसे देखो वो NFT बना रहा है या बेच खरीद रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज तो इससे करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NFT बनाना कोई रॉकेट साइंस है, इससे कमाना बेहद मुश्किल है, टू कॉम्प्लिकेटेड या टू टेक्निकल है, तो मैं आपको बता दूं कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। NFT बनाने के लिए आपको थोड़ा टैलेंट, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा लक चाहिए। लक इसलिए ताकि आपका आर्ट ऑडियंस के साथ क्लिक करे। तो चलिए बातों में वक्त नहीं गवाते हैं, आपको NFT बनाने का इजी वे बताते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की NFT बनानी है, और वो कुछ भी हो सकता है। कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो गेम कलेक्टिबल, कोई मीम, जिफ, यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी। बस जो भी हो वो रेयर हो और यूनिक हो। इससे आपकी NFT को वैल्यू मिलेगी, और हाँ, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वरना कोई लीगल ट्रबल हो सकती है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिजिटल एसेट सिलेक्ट कर लिया तो उसे NFT बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन को अपनी NFT के लिए यूज करना चाहते हैं। इन दिनों NFT आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। बाकी पॉपुलर ऑप्शंस हैं टीजोस, पोल्काडॉट, कॉस्मोस एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन। स्टेप नंबर 3, अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है तो फिर आपको डिजिटल वॉलेट बनाना होगा अपनी NFT क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपनी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी।
और इस वॉलेट के थ्रू आप अपने डिजिटल एसेट को एक्सेस कर पाएंगे। कॉइनबेस, वजीरएक्स, ज़ेप पे कुछ पॉपुलर इंडियन NFT वॉलेट्स में से हैं। मेटामास्क, मैथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट। ग्लोबली ये वॉलेट्स काफी यूज किए जाते हैं। आपके वॉलेट में कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ज्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स ईथर एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है तो उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करें so that you can use it to create and sell NFTs. स्टेप नंबर, आपका डिजिटल वॉलेट बन गया और आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है, तो अब आप NFT क्रिएट और सेल करने के लिए तैयार है। बस एक अच्छी डिटेल रिसर्च करके बेस्ट NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करनी है आपको। वजीरएक्स, कलेक्सियन, कलामिंट, beyondlife.club जैसी कई अच्छी मार्केटप्लेसेस हैं इंडिया में, जिन पर गैस फीस भी ज्यादा नहीं है। वजीरएक्स $1 की गैस फीस पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। कलेक्सियन सेल प्राइस का 5% लेता है। तो वहीं इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर मार्केटप्लेस ओपनसी की गैस फीस $100 से $150 के बीच रहती है। ओपनसी के अलावा एक्सी, लार्वा लैब्स, NBA टॉप शॉट, रेरिबल ये कुछ बेस्ट मार्केटप्लेसेस में से एक हैं। लेकिन आपको अपनी NFT के हिसाब से मार्केटप्लेस चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेम NFT के लिए एक्सी मार्केटप्लेस है। बास्केटबॉल फोकस्ड NFTs के लिए NBA टॉप शॉट है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ मार्केटप्लेसेस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है और उनके प्लेटफॉर्म पर वही यूज होती है, जैसे कि रेरिबल। NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप NFT मिंट करने के लिए नेसेसरी फीस चुका पाए। स्टेप नंबर 5, अब आप अपनी NFT को अपलोड करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिलेक्टेड NFT मार्केटप्लेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है एज टू हाउ टू अपलोड योर NFT, और इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी NFT फाइल, जो कि PNG, GIF, MP3 या कोई भी और फाइल टाइप हो, उसे मार्केटेबल NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप 6, अपनी NFT को मिंट करने के लिए फाइनल स्टेप पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कैसे मोनेटाइज करेंगे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, फिक्स्ड प्राइस। आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जो भी पहला इंसान वो प्राइस देने को तैयार होगा, वही आपका बायर होगा। टाइम्ड ऑक्शन। टाइम्ड ऑक्शन से ऑडियंस को एक टाइम लिमिट मिलेगी, यानी थोड़ा वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितने पर बिड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन, अनलिमिटेड ऑक्शन। इस तरह की ऑक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप जब चाहें अपने हिसाब से ऑक्शन को एंड कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी NFT का मिनिमम प्राइस सेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। उस पर रॉयल्टी रखें ताकि अगर आपकी NFT किसी सेकेंडरी मार्केट पर रीसेल हो तो आपको उसका फायदा मिलता रहे। NFT कैसे क्रिएट और सेल करें वो तो आप समझ गए हैं। NFT बाय करने का प्रोसेस भी बहुत इजी एंड सिमिलर है। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाएं, उस वॉलेट को फंड करें, बेस्ट मार्केट प्लेस चूज करें, वॉलेट को उस मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट करें, फिर जो भी NFT आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बिड सबमिट कर दीजिए और अब आप अपनी पसंदीदा NFT खरीद पाएंगे। नाउ दैट यू नो ऑल अबाउट NFTs, तो देर किस बात की, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए और उतर जाइए NFT मार्केट के मैदान में। क्या पता बिग बी की तरह आपकी NFT भी करोड़ों कमाए। क्रिप्टो से जुड़ी और कई चीजों को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरी जरूर देखिए। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसे देखो वो एनएफटी बनाने के होड़ में लगा हुआ है। आम हो या फिर खास, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, सभी नए जमाने के साथ बने रहने के लिए एनएफटी क्रिएट कर पैसे कमाने के नए जरिए का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया तेजी से बदल रही है और दुनिया भर के मौजूद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2021 में एनएफटी स्टोर के नाम से सस्पिशियस लुकिंग डोमेन रजिस्ट्रेशंस की संख्या में लगभग 300% की बढ़त है। इस तरह से एनएफटी मार्केटप्लेस में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसका एक्टिव क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। और यही वही जगह है जो एनएफटी होल्डर्स को नए रिस्क की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अटैकर्स किसी भी होल्डर्स के क्रिप्टो वॉलेट में मार्केटप्लेस अकाउंट के जरिए सेंध लगा सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद शातिर हैकर्स अब तक एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में पलक झपकते ही एक गलती और उनके निशाने पर आना बेहद आम है। इस तरह कुछ नई तकनीक तो कुछ अभी भी पुराने फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके होल्डर से उनके फंड्स ट्रांसफर कराने से लेकर क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एनएफटी सिक्योरिटी रिस्क में इजाफा करने वाले उभरते खतरों के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले है पुराने जमाने की फिशिंग स्टाइल और एनएफटी धोखाधड़ी। दोस्तों, नए जमाने के खिलाड़ी भले ही कितने ही समझदार और सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कई बार पुराने तरीके भी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होते हैं। हाल की बात करें तो फरवरी 2022 में स्कैमर्स ने हमले के दौरान चोरी किए गए 254 टोकन्स के साथ ओपनसी यूजर्स से सैकड़ों एनएफटी चुरा लिए थे। हैकर्स द्वारा हासिल किए गए एस्टिमेटेड वैल्यू की कीमत $1.7 मिलियन से ज्यादा आंकी गई थी, जिसे महज 3 घंटे के समय में अंजाम दिया गया था। इस दौरान ओपनसी सीईओ डेविन फिजर ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़ितों को टोकन के ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के नाम पर धोखा दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पूरी तरह से ब्लैंक था और यही वजह थी कि जिसने हैकर्स को एनएफटी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ एक नकली एनएफटी स्टोर साइट भी मौजूद है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तरफ तलाश करता है और बड़ी सफाई से धोखा देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी क्रैकिंग के बारे में। कई बार स्कैम से बचने के लिए होल्डर्स किसी भी फिशिंग स्कैम्स के झांसे में नहीं आते, लेकिन तब क्या जब कोई आपको फ्री एनएफटी दे और वो भी बतौर गिफ्ट। और यह वो छोटी सी गलती जिसे एक्सेप्ट करने के साथ कोई भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। अटैकर्स अक्सर विक्टिम को टारगेट करने के लिए मैलिशियस एनएफटी को क्रिएट कर उसे गिफ्ट्स के रूप में ऑफर किया करते हैं। जैसे ही विक्टिम थोड़े लालच में आने के साथ मैलिशियस एनएफटी को खोलते हैं, तब उसमें से ओपनसी स्टोरेज डोमेन से एक पॉपअप ट्रिगर होता है। और खास बात यह है कि यह पॉपअप विक्टिम के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन रिक्वेस्ट शो करता है, जिसके बाद खुद ब खुद विक्टिम अपने ही हाथों अपने वॉलेट कनेक्शन को ओपन कर अटैकर्स द्वारा अपने फंड से हाथ धो बैठता है। और इसे ही कहते हैं खाया पिया कुश्ती और ग्लास तोड़ा लाखों का। बात करें फेक एनएफटी सपोर्ट ऑन डिस्कॉर्ड की, तो ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हुई चालबाजी को कौन भूल सकता है। यहां अटैकर्स घात लगाए बैठे थे कि कोई सपोर्ट क्वेश्चन पूछे और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता वो उसे सेकेंडरी फेक सपोर्ट सर्वर पर इनवाइट करते, जहां विक्टिम को अटैकर्स अपने मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट को क्रोम एक्सटेंशन के साथ अपने मेटामास्क ऐप को रीसिंक्रोनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हुए विक्टिम को कॉन्फ़िगरेशन एडवांस मोबाइल एक्शन चेन से लिंक करने के लिए गाइड करते हैं, जिसके बाद अटैकर्स को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो क्यूआर कोड जनरेट कर पाते हैं। इस तरह से बड़ी सफाई से अटैकर क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर और इमेज का इस्तेमाल अपने खुद के मेटामास्क ऐप के साथ वॉलेट को सिंक करने के लिए करते हैं, जिसके साथ अटैकर्स विक्टिम के वॉलेट से क्रिप्टो फंड को आराम से बिना किसी मुश्किल से चुरा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल आर्ट स्कैम्स के बारे में। डिजिटल आर्ट की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? आप सोच रहे रहेंगे कि आखिर कैसे हो सकती है किसी के आर्ट वर्क की चोरी, और वो भी एनएफटी फॉर्म में। तो आपको बता दें कि जब कोई एनएफटी मिंट की जाती है तब क्रिएट किए गए टोकन के लिए एक यूनिक फिजिकल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे यूआरएल के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई एनएफटी खरीदता है तो असल में वो यूआरएल अपने नाम करता है।
बहुत से मार्केट प्लेसेस पर एनएफटीज को बेचते समय आर्टिस्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ही फायदा उठाते हुए ऑनलाइन आर्ट थीव्स बड़े आराम से किसी भी आर्ट वर्क को कॉपी पेस्ट मिंट और सेल कर पाते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में समझाया गया है कि कई बार खरीदार इलीगल आर्ट के कॉपीज के लिए मुंह मांगी कीमत देकर फंस जाते हैं। ये स्कैम यही तक नहीं रुकता, बल्कि कई बार विक्टिम्स को ब्लैकमेलर से डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए सपोर्ट किए जाने की धमकी मिला करती है। दोस्तों, बात करते हैं ट्वीट थेफ्ट के बारे में। मौजूदा एनएफटी स्कैम्स के वाइड रेंज में इसे एग्जीक्यूट करना सबसे आसान है। एक ऑटोमेटेड एनएफटी ट्वीट माइनिंग बॉट ऑटोमेटिकली रूप से ट्वीट्स को एनएफटीज में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स किसी काम के नहीं होते हैं, तो आपको ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट याद ही होगा, जिसे $2.9 मिलियन के बराबर बेचा गया था, जबकि अब उसे पहले से 16 गुना ज्यादा यानी $48 मिलियन से ज्यादा में बेचने के लिए फिर से ओपन रखा गया है। वही अगर कोई ट्वीट में अपना आर्टवर्क पोस्ट करता है तो उसे बड़ी ही आसानी से अटैकर्स द्वारा नाक के नीचे से चुराया जा सकता है, जैसा कि आर्टिस्ट आरजे पाल्मर के साथ हुआ था। इन सभी तरह के फ्रॉड और स्कैम्स के बावजूद एनएफटी यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो भी एनएफटी इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले रहा है, उसे खुद को इन सभी तरह की धोखेबाजी से बचाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे। पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या आयटी इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीने हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे। हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल। याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल। मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल। ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन एक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या एक्सेप्टन्सला गती येणार आहे आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे।
कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदलात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पिछले 1 साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी. उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी. लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही हैं.
दरअसल NFT की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस OpenSea पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी NFTs मिंट करने की कन्वीनियंस थी, लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है OpenSea और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक NFT कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, OpenSea ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग NFT टूल्स के तहत लॉन्च की गई NFTs में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। OpenSea ही नहीं, और भी कई NFT मार्केट प्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि DeviantArt ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म LooksRare पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी-कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में NFT को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस NFT की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी NFT एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट NFT कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन NFTs 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% NFT ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% NFTs को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन NFTs की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। NFT की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छू मंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स NFT प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है NFT की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो NFT फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथेबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली NFT के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथेबी के ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस NFT के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये NFT रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus। उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlyNFT नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक JPEG इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि
काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं, तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल NFT की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheeb. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people, thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted Sheeb. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his Sheeb holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of Sheeb is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Algorand, the future of finance on blockchain. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host Parvati Nirman, and today I am going to take you on a sky ride of Algorand. Now you would think, why is it a sky ride? How a blockchain technology can be connected to a sky ride? Well, then let me tell you, Algorand is the latest technology buzz in the market as Drone Racing League, DRL, is going crypto.
DRL has announced to launch its play-to-earn crypto game on Algorand blockchain. So there begins the ride. Together, DRL and Playground Labs will build a virtual version of the Drone Race League on Algorand. And not just that, Algorand or Algo, being the layer 1 blockchain for decentralized and traditional finance, has added direct fiat payment channels into their network by integrating with Alchemy Pay, which is ACH. Alchemy Pay is a payment solutions provider that connects fiat and crypto economies, and its global merchant network now supports Algorand's Algo token for payments in 65 countries. Even more, Marshall Island is adopting Algorand for the issue of its sovereign currency. So the Marshall Islands is the first country to adopt a national digital currency built on Algorand blockchain. Algorand's Algo token ranked 20th on the Forbes list of most influential digital assets, has the 18th highest market cap of any cryptocurrency, hovering around $11 billion as of 5th Jan 2022. So we know now how Algorand is one of the fastest growing blockchain technology today. Let's find out a little bit of the history of Algorand. Algorand was founded by Silvio Micali, a computer science professor at the Massachusetts Institute of Technology. Silvio received the 2012 Turing Award for his innovative contributions in cryptography, blockchain, and cryptocurrency protocols and electronic cash, making him a leading mind in the cryptocurrency and blockchain industry. Silvio Micali has been a professor of cryptography since 1980s. Around 2015, he started researching how to create a better blockchain technology instead of criticizing Bitcoin. Well thought. He was then approached by Nikolai Zeldovich, an MIT professor, and based on the success of testing the new blockchain technology with different simulated transactions, the Algorand company was incorporated in 2017. Algorand's white paper was co-authored in 2017 by Silvio Micali and Jing Chan, a professor at Stony Brook University. This blockchain is particularly carbon negative, as it operates on pure proof-of-stake network, which is the need of the hour as everyone is eyeing green blockchain initiatives. That's true. So well, in today's time, the Algorand protocol is chosen for its speed, scalability, security, and its ability to effectively implement the required compliance controls and the transactional finality needed for the digital currency. Just like other competitors like Solana, Cardano, Algorand intends to displace Ethereum as the primary blockchain home for decentralized apps, DeFi projects, and crypto-native games of the future, or in crypto speak, the metaverse. So what exactly is this Algorand and how does this new blockchain technology functions? Well, Algorand serves as the infrastructure layer on which we can build crypto networks, decentralized apps, and crypto tokens. It is one of the most prominent layer 1 blockchains available in the ecosystem and include fungible, non-fungible, restricted fungible, and restricted non-fungible assets. Yes, Algorand is the new gen blockchain and is bridging the decentralized and centralized world of finance. Algorand has the biggest advantage as higher transaction speed. It is officially launched in 2019 with its native crypto as Algo with a maximum supply of 10 billion Algo. Algorand maintains a block explorer which keeps an official count of its circulating supply of Algo. Algorand also enables users to create smart contracts and tokens that can represent both new and existing assets. The code for Algorand is open source and can be cloned, copied, otherwise used in private or permission blockchains. As we all know,
All cryptocurrencies work on consensus mechanism to approve or disapprove every user-initiated transaction on its network. Legacy cryptos like Bitcoin, Ethereum work on POW, that is, proof of work mechanism, which requires huge computing power and hence consumes a lot of electricity, while Algorand uses pure POS, which is pure proof of stake, which is less power intensive. And how is this pure POS system works? Well, it randomly selects committees from the participating algo holders to validate and approve the next block in the chain. This randomization is the result of unique cryptographic tool called VRF, which is verifiable random function. And pure refers to the users not having to lock up or bond their algos to participate in this process. So to summarize, what sets Algorand apart is its speed and advanced capabilities, as it's fast, low cost, decentralized, carbon negative, and has advanced smart contract capabilities. Algorand can process thousands of transactions per second with instant finality and with transaction fees of fraction of a penny, whereas other blockchain can be much more expensive. So that's all from my side on Algorand blockchain technology. I am Parvati Nirban signing off for now. See you again very soon with more technological facts and developments. Till then, keep watching Crypto TV. हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाउ करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी
फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5. सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत, त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉक वाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत, त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता, त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहे. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटर्जी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात, तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत, ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. अरे सुनिए ना, जरा पीछे से शुरू करते हैं. हाँ, महबूबा महबूबा. डोंट वरी गाइस, मेरी खिसकी नहीं है. मैं महबूबा का नाम इतनी बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी सेकंड क्रिप्टो क्वीन का नाम है रोया महबूब. हाय गाइस, मेरा नाम है यशस्वी और इस खास सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्वीन ऑफ क्रिप्टोस की. और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ रोया महबूब के बारे में. इनकी अचीवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड की विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है.
क्योंकि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं, जहां तालिबान के डर से लड़कियां ABCD पढ़ने तक स्कूल नहीं जा सकती, आवाज उठाकर बात नहीं कर सकती हैं। ऐसी देश में टेक कंपनी का CEO बनना कौनो छोटी बात नहीं है, क्या समझे? रोया महबूब अफगानिस सिटाडेल सॉफ्टवेयर कंपनी की फाउंडर भी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी कंपनी की 50% से भी ज्यादा कर्मचारी वैसे लेडीज हैं। अनफॉर्चुनेटली सितंबर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से टेक ओवर कर लिया था, मिस रोया महबूब को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की औरतों के पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट का भी एक्सेस नहीं था, इसलिए मिस रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन से सैलरी देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मिस महबूब डिजिटल सिटीजन फंड यानी कि DFC की प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर भी हैं। बॉस लेडी। अगर DCF की बात करें तो ये एक ऐसा NGO है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की लड़कियों और औरतों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे में एडुकेट करने के लिए काम करता है। ब्रावो मिस महबूबा, ब्रावो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बिटकॉइन क्वीन, इनका नाम है अलकलानी एतरेलेंगे। वैसे काफी टंग ट्विस्टिंग नाम है ना? डोंट वरी, जितना टंग ट्विस्टिंग इनका नाम है उतनी सिंपल एंड स्ट्रेट इनकी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज है। वैसे अलकलानी, जिनको लोग प्यार से बोत्सवाना की बिटकॉइन लेडी भी कहते हैं, ये टाटा बिरला, अंबानी, एलन मस्क की तरह कोई बड़ी प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं। बोत्सवाना जैसे अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ते पढ़ते ये लेडी अपनी फैमिली के लिए ऑनलाइन साइड इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रही थी कि तभी इनकी नजर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर पड़ी और इसके बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। बैठे बैठे इतनी रिसर्च कर डाली कि इन्होंने अक्टूबर 2013 में बोत्सवाना का फर्स्ट बिटकॉइन मीट ऑर्गेनाइज कर डाला। बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी कंपनी सतोशी सेंटर स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिटी की वुमनिया और उनके हस्बैंडवा एंड एवरी अदर मर्दवा को एडुकेट करते हुए नजर आई। वो घर बैठे बैठे कैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर उनकी मदद करती आई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ बोत्सवाना को ये भी कह दिया कि भैया बिटकॉइन को एल साल्वाडोर की तरह लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लो और क्रिप्टो फ्रेंडली कायदा भी अपना लो। इससे देश जो है वो फायदे में ही रहेगा, है ना? सोने पे सुहागा ये है कि बोत्सवाना की ये लेडी एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट डेवलप कर रही है जिससे डायरेक्टली किसी भी नॉर्मल ATM से लिंक किया जा सकता है। सो माय डियर इंडियन लेडीज, अगर ये बोत्सवाना के गांव से बैठे बैठे क्रिप्टो की दुनिया में बवाल मचा सकती हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अब आप कहेंगी कि यार मोटिवेशन से क्या होता है यशी? क्रिप्टो स्पेस में वुमनिया तभी झंडा गाड़ेगी जब वो दूसरी वुमनिया से मिलेगी, राइट? लेकिन कैसे? कहाँ ढूंढे दूसरी क्रिप्टो लेडीज को? इधर आओ, आओ, मैं बताऊंगी ना दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू क्रिप्टो टीवी। मेरा नाम है यशस्वी, साइनिंग ऑफ। Hi, this is me, Yashasvi Acharya. DeFi or Decentralized Finance is an umbrella term representing a collection of financial products and services created and offered over the distributed ledger technology. The intermediation of financial institutions is denecessitated by these protocols with the use of cryptographic proof of transactions. These protocols also make use of advanced tools like programmed smart contracts and tokenization to design innovative financial products offered to participants of the blockchain peer-to-peer network. The DeFi ecosystem appeared with smart contract-enabled blockchain platform Ethereum going live in 2015
and today, by end of November 2021, has proliferated to more than 250 protocols with over $100 billion in total value logged in these protocols. The DeFi ecosystem is rapidly innovating and emerging with wonderful new products, which is disrupting the financial products and services marketplace. These products include stablecoins, decentralized exchanges, decentralized lending and borrowing platforms, decentralized asset management tools, decentralized autonomous organizations or DAOs, and governance, insurance products, derivatives products, margin trading products, payment solutions, staking solutions, KYC and identity solutions, tokenization, yield aggregation platforms, prediction markets, infrastructure and developing tooling products, analytics services, among many such offerings. The innovation in the DeFi segment is prolific and exciting. This segment is evolving rapidly as better and better protocols are coming up with each innovative iteration and market offering in any particular segment. The blockchain projects are also evolving, and so are the applications in the form of DeFi. The returns of the DeFi instrument are quite handsome when compared to similar traditional finance products and services. The traditional financial product and service marketplace is also referred as CeFi, acronym for centralized finance. This is possible because the smart contracts and decentralized consensus reduce the counterparty risk, monitoring and arbitration cost, and also the cost of intermediation. The programmable nature of decentralized applications also provides the flexibility to order the best possible combinations of these instruments to maximize returns. This feature is given a very interesting terms. It is called money Legos, indicating that paths can be joined together in a preferred order of precedence depending on the comfort of the user. Oracles on the decentralized ecosystem connect the real-world trigger events to smart contracts, enabling conditional execution of the same. This enables creation of derivatives, prediction markets, and a lot of other possibilities. Tokenization of the real-world assets helps granularization of high-value assets, helping address a wider investor base and also brings them into digital realm, transcending the geographical boundaries, helping cater to a larger digital global audience. Programmability of the decentralized applications in the financial realm help create bespoke products for the users, providing for many interesting innovations in this area. Currently, as the craze of DeFi grips and drives the imagination of investors, we can say we are for some very interesting times in this area. However, along with innovation suitably follows a word of caveat, the DeFi segment is not regulated at the moment. The regulatory framework moves slowly to catch up with the innovation, and it's the same which is happening in this area. Therefore, users have to be extremely careful with their research of the DeFi project before participating into it and availing its benefits. Choosing on the basis of returns only may not be a judicious approach at the moment. One must do your own research meticulously and observe the proliferation of any project closely before participating in it. One may also avail services of several audit companies who specialize in auditing and security and other features of the smart contracts published by project. If one covers the risk well, DeFi is one segment which would provide the early adopters with exciting returns. That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Have a really good day.
and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहेत, त्याचे किती प्रकार असतात, त्याचे फायदे काय आहेत, हे आपण मागील एपिसोड मध्ये जाणून घेतलं. तर आज आपण पाहणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे ॲक्टर्स आहेत. त्यात प्रथम क्रमांक आहे इन्व्हेस्टर, जे क्रिप्टो ॲसेटच्या दुनियेत सर्वात महत्त्वाचे ॲक्टर आहेत. म्हणजेच जी लोक वेगवेगळ्या क्रिप्टो ॲसेटमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्ट करतात. तुम्हाला माहित आहे का, सर्वात जास्त क्रिप्टो ओनर्स हे भारतात आहेत, म्हणजेच जवळपास 10 करोड एवढे. आणि ह्यामध्ये सर्वप्रथम 24 वयोगटातील तरुण मंडळी आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला कळत असेलच की तरुणाईमध्ये याचा जास्त क्रेज पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फायनान्शियल इंटरमिजिएटरीज, म्हणजेच आर्थिक मध्यस्थी. क्रिप्टो ॲसेटच्या मार्केटमध्ये जे दुसरे मेन ॲक्टर आहेत ते आहेत ब्रोकर आणि ॲडवायझर. स्टॉक मार्केट प्रमाणेच येथे सुद्धा ब्रोकर्स आणि ॲडवायझर्स ट्रेडर्सला क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ॲडवाइज करत असतात. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण म्हटलं तर आहे ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सचेंजेस. यामध्ये ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि एक्सचेंजेसवर क्रिप्टो ॲसेटची होते जास्तीत जास्त डीलिंग. जगातील टॉप 5 एक्सचेंजेस आहेत बायनान्स, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, कारकेड आणि कुकॉइन. आणि भारतात जर पाहिलं तर टॉप एक्सचेंजेसमध्ये कॉइनस्विच, कुबेर, वझिरेक्स इत्यादी आहेत. चौथ्या क्रमांकावर आहे वॉलेट प्रोव्हायडर्स. आपल्याला तर माहीतच आहे की क्रिप्टो करन्सी ही नेहमी वॉलेट्समध्ये स्टोअर केली जाते, मग ते हॉट वॉलेट असू दे किंवा कोल्ड वॉलेट. ग्लोबली जर पाहिलं तर भरपूर असे वॉलेट्स प्रोव्हायडर आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस वॉलेट, जे बिगनर्ससाठी खूप चांगलं आहे. नंतर इलेक्ट्रियम वॉलेट, जे खास करून बिटकॉइनसाठी चांगलं आहे. त्यानंतर मायसिलियम, जे मोबाईलसाठी चांगलं आहे. नंतर लेजर नॅनो एक्स, हे ऑफलाईन क्रिप्टो वॉलेटसाठी चांगलं आहे. आणि शेवटी एक्झोडस, हे डेस्कटॉपसाठी चांगलं आहे. तर आपण पुन्हा वळणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटच्या ॲक्टर्सकडे. तर 5व्या क्रमांकावर आहे पेमेंट आणि मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेटचे बरेच ट्रान्झॅक्शन हे व्हिसा कार्ड आणि मास्टर कार्ड सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या माध्यमातून सुद्धा करता येते. खरं तर यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट डीलिंगसाठी मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस, जे शॉपिफाय आणि वूकॉमर्स सोबत इंटिग्रेट करते. बिटपे हे वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट गेटवे आहे आणि यावर भरपूर प्रकारचे वर्सटाईल पेमेंट ऑप्शन आहेत. यासारखंच कॉइनगेट सुद्धा खूप ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सोबत इंटिग्रेट करत असतात. पुढे 6व्या क्रमांकावर जर म्हटलं तर आहे लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्सची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे.
तसेच हाय लिक्विडिटीचा अर्थ आहे प्राइस स्टेबल असणं आणि त्यात कोणत्याही प्रकाराचे चढ उतर नसणं. आता यामध्ये 5 लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स आहेत, ज्यामध्ये लंडन UK मधून FXCM Pro, मॅस्को रशियामधून B2 ब्रोकर, सायप्रस मधून लेव्हिरेट आणि लंडन UK मधून X ओपन हब आणि भरपूर सारे आहेत. नेक्स्ट 7व्या क्रमांकावर आहे मायनर्स आणि व्हॅलिडेटर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये होणारी सर्व ट्रान्झॅक्शनला मायनर किंवा व्हॅलिडेटर्स अप्रूव्ह करत असतात. मायनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करतात आणि व्हॅलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेकला. निश्चितच आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असणार की क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कोण असतात आणि कोण कोण यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात. मग चला तर प्रश्नाची उत्तरं आम्ही आपल्याला देतो. बघा, क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 5 पार्टिसिपेंट असतात. फर्स्ट, युजर्स, जी लोक या लीगल एंटिटीज म्हणजेच कायदेशीर संस्थांमध्ये असतात, जे क्रिप्टो ॲसेट सोबत पिअर टू पिअर पेमेंट करत असतात किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे परचेस किंवा सेल करत असतात. सेकंड, मायनर्स, ब्लॉकचेनवर होणारे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे प्रूफ ऑफ वर्क कन्सेन्सस मेकॅनिझमच्या थ्रू मायनर्स हे व्हॅलिडेट करत असतात. यासाठी मायनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअरचा अजून खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्युटिंग पॉवरसाठी वापर होत असतो. या कामाच्या बदल्यात मायनर्सला नेहमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो ॲसेटमध्ये कॉम्पेन्सेट केलं जातं. थर्ड, क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून युजर्स आपल्या क्रिप्टो ॲसेटला फिएट करन्सीच्या बदल्यात किंवा दुसऱ्या क्रिप्टो ॲसेटच्या बदल्यात एक्सचेंज करू शकतात. या सर्व्हिसेससाठी क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस हे फीस चार्ज सुद्धा करते. हे एक्सचेंजेस कोणत्या ॲडमिनिस्ट्रेटर सोबत संलग्न आणि स्वतंत्र असू शकते किंवा थर्ड पार्टी प्रोव्हायडर सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल Bitfinex आणि कार्पेट. फोर्थ, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या ऐवजी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा ट्रान्झॅक्शन फॅसिलिटेट करत असतात, जे अशा मार्केट प्लेस सारखे काम करत असतात जे वेगवेगळ्या युजर्सला कनेक्ट करतात. एक्सचेंजेस सारख्या या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म क्रिप्टो ॲसेटला परचेस किंवा सेल नाही करता येत, तर फक्त त्याच्याकडे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनला फॅसिलिटेट करत असतात. 5. वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सला असे वॉलेट प्रोव्हाइड करतात जे क्रिप्टो ॲसेटची होल्डिंग, स्टोरेज आणि ट्रान्सफर्समध्ये हेल्प करतात. हे वॉलेट्स युजर्ससाठी प्रायव्हेट की होल्ड करत असतात आणि युजर्सला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर उपस्थित पब्लिक कीच्या माध्यमातून क्रिप्टो ॲसेटमध्ये ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी मदत करत असतात. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सची ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री अशा प्रमाणे मेंटेन करतात की जी रीडेबल असेल, जेणेकरून ट्रान्झॅक्शनची सिक्युरिटी राखली जाईल. वॉलेट प्रोव्हायडर सुद्धा 2 प्रकाराचे असतात, एक हार्डवेअर आणि दुसरे सॉफ्टवेअर वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट्सला स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा 2 पद्धती असतात, एक ऑनलाईन म्हणजेच हॉट वॉलेट आणि दुसरे ऑफलाईन म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज. कधी कधी एक्सचेंजेस युजर्सची क्रिप्टोग्राफिक कीला सेफगार्ड करून कस्टोडियन वॉलेट प्रोव्हायडर्सला फायदा सुद्धा पोहोचवत असते. तर मित्रांनो, क्रिप्टो ॲसेट्सच्या खास प्रोग्राममध्ये सध्या एवढंच. मला आशा आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन तुमच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं आम्ही निरसन केलं असणार. क्रिप्टो विषयीचे अशाच प्रकाराचे नवीन टॉपिक्स आम्ही आपल्या समोर घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. बाय.
क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're most welcome. And now you must be wondering कि यशी हम सब तो यहाँ हैं पर लेडीज कहाँ हैं? अरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा। इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है। दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे। ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं। इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है। हुफ, लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो, तो फट से कैथरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना। हाँ, कोई डाउट मत रखना। ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं। इसके अलावा कैथरीना फरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, व्हिच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया। गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहां से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है। नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ। इनका नाम है मानसी वोरा। वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कॉमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है। डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है। मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर, दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए तो उन्हें कॉमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने वुमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है, जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है, बट बिफोर एवरीथिंग आई एम एन इंडियन टू द कोर यार। तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो हैं वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? बट जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो हैं वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए watch out this space for more. This is me Yashasvi Acharya signing off. Thank you for watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da!
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूं तो हर किसी के अलग अलग शौक, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है, जिसमें सबका इक्वल इंटरेस्ट है, और वो है पैसा, मनी, काचिंग। आपने नोटिस किया होगा आजकल हर तरफ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के चर्चे हैं। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किसी की भी एडवाइस पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो को बारीकी से स्टडी करें और फिर सोच समझकर डिसीजन लें। इसीलिए हम आए दिन आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी नॉलेज उसके बारे में बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स की। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है? नो प्रॉब्लम। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री ने गजब की तरक्की की है। ग्लोबली करीब 300 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। इंडिया में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चंद सालों में ही इंडिया में 2 क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स हैं। अरे ये यूनिकॉर्न नहीं, मतलब क्रिप्टो की ऐसी जायंट कंपनीज जो वेंचर कैपिटलिस्ट के मुताबिक $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। इतना ही नहीं, इंडिया में 350 क्रिप्टो स्टार्टअप्स भी है, जिसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो ग्लोबली ही नहीं, इंडिया में भी धूम मचा रहा है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। Sorry, I got carried away. Okay, so we were talking about crypto assets. क्रिप्टो एसेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्रिप्टो एसेट्स वो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या फिर क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। क्रिप्टो एसेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्रिप्टो एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स को समझना होगा। क्रिप्टो एसेट्स 6 टाइप के होते हैं: स्टेबल कॉइन, CBDC, प्रिवेसी कॉइन्स, गवर्नेंस टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले बात स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जो किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर एटसेट्रा या फिर किसी अंडरलाइंग एसेट से बैक्ड होती है, जो कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। मतलब स्टेबल कॉइन के प्राइस में उतनी ही फ्लक्चुएशन होगी जितनी उसकी फिएट करेंसी में या उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स डिजिटल करेंसी है दैट इज बैक्ड बाय डॉलर, तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा घटेगा वैसे ही ये एक्स स्टेबल कॉइन बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट इज CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। CBDC किसी कंट्री की ऑफिशियल करेंसी या डिजिटल टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की CBDC में अब तक $10 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है। अगला है गवर्नेंस टोकन। कभी कभी कंपनीज इनिशियल स्टेज पर फंड रेजिंग के लिए अपने फाउंडिंग मेंबर्स को ICO मतलब कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स देती है। साथ ही इन मेंबर्स को वोटिंग पावर भी मिलती है। ऐसे कॉइन्स को गवर्नेंस टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एथर $0.31 पर बेचा गया था और अब एथर की वैल्यू ऑलमोस्ट $3,128 है। सोचिए इस पर ROI यानी कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना भारी होगा। और अब बात नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबल टोकन्स कोई भी यूनिक आर्ट हो सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पेंटिंग, ऑडियो, कोई एनिमेशन, गेम एटसेट्रा, जिसे बाय एंड सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन किसी क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीपल ये नाम तो सुना ही होगा। बीपल ने 13 सालों में बनाई अपनी पेंटिंग्स का एक कोलाज बनाया और इस डिजिटल पिक्चर को एज अ NFT सेल किया $69 मिलियन में। चलिए, ये तो आप समझ गए कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। क्रिप्टो एसेट डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर अनइनक्रिप्टेड डिजिटल एसेट सच एज डिजिटल मनी से क्रिएट होती है, क्योंकि डिजिटल मनी के साथ फॉल्स ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स बनाना आसान है, क्योंकि ये इजीली रेप्लिकेबल है और इनकी हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन को ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं क्रिप्टो एसेट की सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर अपडेट एंड वेरीफाई होते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, इसीलिए इन डिजिटल एसेट्स को हर कोई ट्रैक कर सकता है।
उम्मीद है क्रिप्टो एसेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो एसेट मार्केट में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है और क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन में कौन-कौन इन्वॉल्व होता है। Till then, it is me Ruchi signing off. Keep watching Crypto TV. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, म्हणतात ना, अतिलोभ हा माणसाला विनाशाकडे नेत असतो. बस याच विषयावर आधारित आजचा एपिसोड हा आम्ही खास तुमच्यासाठी आणलाय. मित्रांनो, वेगाने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या या दुनियेत आता फसवणूक करणाऱ्या चोरट्यांच्या प्रमाणात सुद्धा वाढ होताना पाहायला मिळते. या चोरट्यांनी आता भारताची आर्थिक राजधानी म्हणजेच मुंबईत सुद्धा धुमाकूळ घातलाय. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील चारकोप परिसरात ही घटना घडली असून तब्बल 1.5 कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो फसवणुकीसाठी आरोपी जगदीश लाडी नावाच्या एका 23 वर्षीय मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएटला चारकोप पोलिसांनी अटक केली आहे. चारकोप पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जगदीश लाडी हा BBAचा पदवीधर असून तो 2020 मध्ये कोरोनाची महामारी सुरू झाल्यापासून ऑनलाईन ट्रेडिंग सुरू करायचा. दरम्यान आरोपी जगदीश लाडी हा लोकांना क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवण्याची ऑफर देऊन चांगले रिटर्न्स देण्याचे देखील आमिष दाखवत होता. आतापर्यंत जगदीश लाडी विरोधात 7 लोकांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात अजूनही अनेकांची फसवणूक झाल्याचा संशय असल्याचे पोलिसांनी म्हटलंय. अधिक मिळालेल्या माहितीनुसार या तक्रारकर्त्यांमध्ये एक जिम ट्रेनर आहे ज्याने आपल्या सेव्हिंग्ज मधून एकूण 1.65 लाख रुपये गमावले आहेत. या ट्रेनरने जगदीश लाडीबद्दल 2021 मध्ये एका महिला क्लायंटकडून ऐकले होते की जिने लाडीसोबत गुंतवणूक केली होती आणि त्यावेळी त्याने इतर दोघांची ओळख देखील करून दिली होती. या दरम्यान जगदीश लाडीने ट्रेनरला दर आठवड्याला 25% रिटर्न्स देण्याचे आमिष सुद्धा दाखवले होते. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जेव्हा ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ चारकोप येथील एका क्लायंटच्या घरी गेला होता त्यावेळी तेथे लाडी देखील उपस्थित होता. त्याने त्याच्या फोनवर एक प्रेझेंटेशन दाखवले ज्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास किती जास्त प्रमाणात रिटर्न्स मिळतील याबद्दल सांगितले गेले होते. लाडीने असेही सांगितले होते की त्याच्याकडे 3 कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओ आहे आणि जर का काही प्रॉब्लेम झालाच तर गुंतवणूक केलेली संपूर्ण रक्कम ही परत करू. ट्रेनरने अखेरीस त्याच्या बोलण्यावर आणि त्याने दाखवलेल्या पोर्टफोलिओवर विश्वास ठेवला आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर 2021 दरम्यान जवळपास 1.65 लाख रुपये गुंतवले. सुरुवातीला लाडीने ट्रेनरला थोडे रिटर्न्स देण्यास सुरुवात केली. मग काही दिवसानंतर जेव्हा रिटर्न्स येणं बंद झालं तेव्हा तो ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीला काही रिटर्न्स बद्दल विचारण्यासाठी फोन करायचा. तेव्हा तो बोलणे टाळायचा आणि नंतर त्याने फोन उचलायचं देखील बंद केलं. मग अखेरीस कंटाळून ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीच्या घरी गेले तेव्हा त्यांना कळले की लाडी तिथून रफूचक्कर झाला होता. त्यावेळी लाडीच्या घराजवळ इतर गुंतवणूकदार देखील आले होते जे लाडीच्या फसवणुकीला बळी पडले होते. दरम्यान त्या ठिकाणी एका महिलेशी देखील त्या ट्रेनरची ओळख झाली. त्या महिलेनं सुद्धा 10 लाख रुपये लाडीच्या फेक क्रिप्टो स्कीम मध्ये गुंतवले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाडी हा फ्रॉड एकटाच ऑपरेट करत होता आणि इतर कोणत्याही ट्रेडिंग फर्मशी त्याचा संबंध नव्हता. जेव्हा चारकोप पोलिसांनी लाडीचा पोर्टफोलिओ तपासला तेव्हा त्यांना आढळले की लाडी हा लोकांना त्याच्या स्वतःच्या खात्यात पैसे जमा करायला सांगायचा आणि नंतर स्वतःच्याच नावाने क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करायचा. तपासकर्त्यांनी सांगितले की लाडी हा सुरुवातीला त्याच्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी म्हणून त्यांना मध्ये छोटीशी अमाऊंट सुद्धा द्यायचा. नंतर हळूहळू गुंतवणूकदारांनी जास्त रिटर्नच्या नादात आणखी पैसे गुंतवले आणि शेवटी रिटर्न्स येणं हे बंद झाल्यामुळे गुंतवणूकदार हे अखेरीस अशा फसवणुकीला बळी पडले. तुमच्या माहितीसाठी लाडीने त्याची संपूर्ण प्रसिद्धी फक्त तोंडी म्हणजेच वर्ड ऑफ माउथ केली होती. अशी बरीच लोक आहेत ज्यांच्यासोबत लाडीने फ्रॉड केलाय. यापैकी काहींनी लाडी विरोधात तक्रार दाखल केली आहे तर काहींनी नाही. कारण काही गुंतवणूकदारांना अजूनही विश्वास आहे की लाडी एकदा तुरुंगातून बाहेर पडला तर तो त्यांचे सर्व पैसे परत करेल. मित्रांनो, या स्टोरीच्या माध्यमातून आम्हाला आपल्याला हे सांगायचं आहे की जास्त रिटर्नच्या नादात आपण अशा फसवणुकीला बळी पडत असतो आणि आपल्या आयुष्याची जी सेव्हिंग्ज आहे ती गमावून बसतो. म्हणून मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात असू द्या, बघा, क्रिप्टो करन्सी हे आपल्या सर्वांचेच भविष्य आहे. या माध्यमातून तुम्ही करोडो रुपये देखील कमावू शकता, पण केव्हा, जेव्हा सतर्कपणा, अभ्यास आणि मार्केट रिसर्च केला तरच.
तर मित्रांनो, क्रिप्टो जगतात होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या क्राईम व स्कॅम स्टोरीज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ. देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. माइंड. कहते हैं इंडिया में दो ही रिलीजन है, पहला बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट, जिनके लिए लोगों की दीवानगी सोच से परे है. यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स जो भी करते हैं वो सुपर हिट हो जाता है. तभी तो ये स्पोर्ट्स स्टार्स ऑन फील्ड जलवे बिखेरने के बाद अब ऑफ फील्ड भी अपने स्टारडम का दम दिखाते नजर आ रहे हैं. दरअसल मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रेंड यानी NFTs की, जहां सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. इनके अलावा और कई प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल होने की फिराक में हैं. NFTs की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है सचिन. जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के भी क्या कहने. कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके सचिन लगता है NFT की दुनिया में भी नया रिकॉर्ड कायम करेंगे. सचिन की इस NFT कलेक्शन में क्रिकेट से जुड़े कई गोल्डन मोमेंट्स कैद हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टेस्ट से जुड़ी कलेक्शन, ऑटोग्राफ्स ऑफ इंडियन टीम प्लेयर्स ऑन देयर मेडन टूर टू इंग्लैंड इन 1932. साथ ही 1983 की टीम का साइन किया गया मेमोरेबलिया भी इसकी शान बढ़ा रहा है. इतना ही नहीं, लेजेंडरी डोनाल्ड ब्रैडमैन के साइंड रेयर स्टैम्प्स और 1983 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग के बाद लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग भी इस NFT कलेक्शन की शोभा बढ़ा रहे हैं. सचिन ने खास तौर पर अपने फैंस के लिए इसमें ग्लोबल क्रिकेट से जुड़े 23 आर्टिफैक्ट्स भी जोड़े हैं. सचिन ने इस प्राइसलेस NFT को रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन में क्लिक फ्लिक पर ऑक्शन किया है. और अब बात उस क्रिकेट स्टार की जिसने लगातार 6 छक्के लगाकर हर किसी के होश उड़ा दिए थे. जी हाँ, जब युवराज सिंह का बल्ला बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है. ऐसे में फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने डिजिटल कलेक्टिबल्स NFT मार्केटप्लेस कोलेक्शन के साथ पार्टनरशिप कर अपनी कई पर्सनल और क्रिकेट मोमेंट्स को NFT के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया. युवराज सिंह ने अपनी इस NFT के बारे में बताते हुए एक वीडियो में अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी पहली गेंद से लेकर उनकी जर्सी टांगने के फैसले तक हमेशा उनका साथ दिया. अच्छे समय पर पीठ थपथपाई तो बुरे समय पर हौसला बढ़ाया. युवराज की जिंदगी के प्रेशियस मोमेंट से सजी इस NFT की बदौलत कोलेक्शन NFT मार्केटप्लेस अब किसी वर्चुअल म्यूजियम से कम नजर नहीं आ रही, जहां युवराज की जर्नी और प्रीमियम NFT कलेक्शन दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट कर रही है. और अब बात नजफगढ़ के नवाब की. फॉर्मर इंडियन ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का नाम सुनकर आज भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स कांप जाते हैं. अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाने वाले वीरू पाजी हाल फिलहाल में NFT बैंडवैगन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने NFT प्लेटफॉर्म रेडियो को चुना. रेडियो दुनिया का पहला फर्स्ट ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेटर्स के अलावा इंटरनेशनल लीग से भी जुड़ी NFTs में ट्रेड करता है. सहवाग ने रेडियो के साथ अपने पार्टनरशिप में फैंस के लिए अपने फाइनेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट से जुड़ी यादों को NFT का अवतार दिया. इस लिस्ट में ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है,
जो कई खास मौकों पर अपने जबरदस्त बैटिंग अटैक से फैंस को अपना मुरीद बना चुके हैं। फैन क्रेज पर अपनी इस NFT कलेक्शन में रोहित ने 2019 ICC वर्ल्ड कप में जीते ICC गोल्डन बैट और अपनी फर्स्ट IPL हैट्रिक से जुड़े कई मेमोरेबलिया शामिल किए हैं। मेल डोमिनेटेड इस क्रिकेट स्पोर्ट में हमारी वुमनिया वुमनिया भी शामिल है। फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी भले ही इन दिनों अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन वो NFT वर्ल्ड में जोरदार सिक्सर लगाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर के तौर पर भी काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं। क्रिकफ्लिक्स, रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के सहयोग से लॉन्च की गई इस NFT में गोस्वामी की जर्सी के अलावा फैंस के लिए NFT के रूप में उनके क्रिकेट खेलने के दिनों से जुड़े कई रेयर और ऑथेंटिक क्रिकेट मेमोरेबलिया भी हैं। NFT वर्ल्ड में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की एंट्री यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस लिस्ट में सुनील गावस्कर से लेकर जहीर खान, ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, AB डिविलियर्स, शाकिब अल हसन और फैफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधरों का नाम भी शामिल है और वक्त के साथ इस फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैन क्रेज के साथ हाथ मिलाते हुए ICC क्रिकेटर्स नाम से अपनी कलेक्शन लॉन्च की, जिसमें 2015 और 2019 के ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी खास चीजों के अलावा टोटल 75 की मोमेंट्स हैं जिन्हें NFT में कन्वर्ट किया गया है। इनमें विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और कुमार संगकारा जैसे दमदार क्रिकेटर्स के साथ NFTs भी शामिल हैं। तो कैसी लगी आपको स्पोर्ट्स NFT पर हमारी स्पेशल स्टोरी? To know more such interesting facts, do watch my stories. This is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great day. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. So gone are the days where parents used to stop children from playing computer games, stating it is a waste of time and money. Thanks to blockchain integration in the gaming ecosystem, the traditional one-way money flow has evolved into a two-way street. India claims nearly 100 million gamers as blockchain gaming is set to change this landscape. Concepts such as play to earn have seen a significant uptick in adoption, because players will be able to own and sell assets within the game for the first time. So to explain this entire episode of the gaming, game fee, as far as the fan token arena, we have invited two special guests. Let me introduce you to Mr. Siddharth Jaiswal, founder and CEO of Sports Chain, which is on my left. Siddharth, welcome on the show. Thank you, Manoj. So on my right is Mr. Vinayak Yanam, co-founder Sports Chain. Thank you, Vinayak, Manoj. welcome on the show as well. Gentlemen, welcome to Crypto TV. So my first question to you, Siddharth, is, since we are talking about Sports Chain and its way forward, what's the main important, सबसे बड़ा objective क्या है आपकी company का? If you can just highlight that. So before I highlight the objective, right, I know, Manoj, you are a sports fan, follow cricket in and out, right? So as a fan, I would like to ask three simple questions. मुझे आप उसके answers देना, ठीक है? As a fan, would you like to influence team decision, right? Such as playing squad क्या होना चाहिए, jersey कौन से color का होना चाहिए? Absolutely, yes. The second question is, as a fan, would you like to be a part of an exclusive club where you get an opportunity to meet Sachin Tendulkar, try and understand how to play cricket, or maybe just randomly go and meet your favorite superstar? Will you grab that opportunity? Answer is yes again. And the last element what I wanted to ask you is, as a fan, you invest your time, money, energy to watch sports, right? Right. What you get in return is entertainment. Yeah. But all financial incentives goes to the team or the sponsors at large. Exactly. Would you like to participate in the financial upside potential of that? Actually, Siddharth, मैं वही सोच रहा था कि apart from the regular salary which we do, is there any other extracurricular activities from
Wherein, but the answer is yes again, which is actually a very lucrative thing for anyone. Absolutely. So this is where you just introduce gamification comes into picture, Right. where we are moving from Web 2 to Web 3. Fantastic. Where we say that user is king. अगर आप कुछ spend कर रहे हो, maybe अपना time या effort है, you should be participate in the financial reward. This is where SportsChain come into picture, bringing data is king Fantastic. and user is king on the platform. Sure. So Siddharth has started with a note that ये सारी problem areas है और क्या ये sports chain का एक method है to tackle all this problem and move forward? This is the main business model. So all of us, when we started off, we were all sports fans, right? So I'm a fan of Mumbai Indians. I'm a fan of Arsenal Football Club based in the EPL. And what we were seeing that on the regular fan engagement platforms that you see today, it was a one-way communication. There was no way to tell that I'm unhappy about this jersey. I'm unhappy about this particular thing. There was no way to influence all of this. So our story began as fans, and also our story began as crypto investors, where we said, is there a way to kind of put all this together? And uska jawab tha yes. SportsChain was the result of that. And this is where we wanted to make sure that Asia, as a big community of fans, not just IPL, but cricket, football, everything put together, is the biggest number in the whole world and one of the biggest paying audiences in the world. So why not bring that fan engagement, that next level fan engagement to the Asian audience? So since Vinayak has highlighted about the main objective of SportsChain is to cater to all those individuals who are actual passive fans, and what's your way forward? Since we are talking about fan token disruption, which you have already highlighted, and बहुत जोरदार आपने opening भी दी है इसको लेकर. What's your way forward, Siddharth, as far as SportsChain? What's the main objective? So two simple objectives what we plan to do with SportsChain, right? Our overall mission is to get 10 million Web 2 users or diehard sports fan adopt the power of blockchain and Web 3. Fantastic. Right? That is one. Second most important thing is we want to convert passive fans into invested fans. The Western world has already adopted this concept. The fans or the sports fans are getting the benefit of this blockchain technology. Have you thought about any number? So approximately the fan token market, if you see, is around $300 million dollar market at this point of time. That also we are saying only 56 fan tokens that have been launched across the globe. And this we are talking about the circulating supply. All right. If I include a totally diluted market supply, it would be 10x of that, right? So this is the benefit which has been reaped by Western audience. Why not the same opportunity and benefit is given to the Indian fans as well as the Asian fan? This is where SportsChain are trying to capture the Asia market at this point of time and bring out the benefit to them. So in continuation to what Siddharth has highlighted, what are the steps your company is taken in terms of, to build the community or fan engagement, if you can just highlight that? So to start off with, we wanted to partner with teams. And the first place we actually went to was Pro Kabaddi. Okay. Now you must be thinking, why Pro Kabaddi? But the answer to the Pro Kabaddi, to that is that Pro Kabaddi is actually the second most watched league in the country after IPL. That's a big number, okay? So that's second to IPL only. And that's where we went and partnered with 4 teams. And we wanted to do this because Kabaddi is a place where you have a mix of both tier 1 fans from cities like Mumbai, but you also have fans from different other states like Haryana and basically more northern and southern as well. Some of the teams that we partnered with include Tamil Talaivas, Dabang Delhi, which are current season's champions, etc. And what has happened because of that is that we have now put our entire focus on Kabaddi. We are partnering with these teams, and what we want to do is we want to start off with the fan engagement aspect of it. So fan engagement aspect of it is where we started off building the community. Okay, now this is a SportsChain community of that specific team, explaining to them that the benefit is so and so, etc., etc. That community itself right now for just 4 teams is more than 2,000. Fantastic. Okay. So since we are talking about the SportsChain and the initiative it has taken to engage fans as well, so Siddharth, can you just explain this for our viewers that Web 2 and Web 3 ये दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले and as a SportsChain अगर हम उसको coupled with your initiative, what is the way forward? और उसमें as you have already highlighted that users का आपको passive users को आपको invested users में आपको convert करना है, तो ऐसे अगर पूरे scenario को अगर आप कैसा explain करेंगे, because user is always the king. Perfect. So great question, Manoj. Web 2 versus Web 3. Now people across the country is talking about this. How the dynamics of companies are moving from Web 2 to Web 3. Summary would be Web 3 is more decentralized in nature, and Web 2 is more centralized in nature.
But to give you a very simple rationale behind it, Web 2 में कैसा हो रहा था कि भाई आप data generate कर रहे हो, but data is there in the centralized system. The person who is taking the most out of it is the company which is managing the platform, right? This is Web 2. And when it shifts to Web 3, what happens there is you are generating the data, you are the user, you are the king of that particular thing, right? So you will be participating in the financial or the revenue potential of whatever is being generated because of your data. Perfect. This is the classic difference between Web 2 and Web 3. So since you are taking care of the entire fan engagement and community building as well, can you just explain for our viewers that what all aspects your company considers as far as the fan engagement is concerned, and what are the benefits your fans can expect once they have subscribed, or maybe the sports chain activity is on? Correct. So few things is that we have actually started putting fans together at a single platform. Otherwise, you will see that everybody is kind of spread across 2-3 different platforms. Plus, what has happened is that those 2-3 platforms were not giving them like a unified view of what is happening. What is happening from an auction perspective of the team, what is happening in terms of the jersey perspective of the team. We have put that all together. Now, what is going to happen for people who sign up for our specific fan tokens is that we are rolling out a lot of benefits. So, early access to the fan token when it comes to the pricing will be of benefit for them. Multiple other benefits will include that now, when the season is supposed to start, some of the exclusive fans will get something that they have never experienced before. So things like going back to the auction table when they start bidding for the players. How would you like to be there with the team making those decisions, right? And also, in terms of helping figure out, how the squad will look like. The fans would like to know. And many other things like, VIP tickets that we previously didn't have because of COVID. All of that is going to come online. And this is just the tip of the iceberg. So Vinayak has already highlighted about a few aspects, what's the way forward as far as the fan engagement is concerned. But as a company perspective, Siddharth, if you can just highlight for our viewers how many projects your company is currently working on, and the tie-ups you are looking at, what's the outlook on the fan engagement as far as the business is concerned and the way forward? So one thing Vinayak has already mentioned is the fan side of story. Yeah. But when we talk about India and Asia, these sporting teams are looking at two different solutions, right, which they are looking at. One is directly monetizing their user base, which is their diehard fans. All right. They are unable to do that. With the help of Sports Chain, we are facilitating that, right? Fantastic. Second is, because it's a blockchain technology, it's very global. So right now, it's the Kabaddi teams which you're talking about. They are focusing on domestic fans, right? But through the concept of blockchain and fan token, the people, a Kabaddi fan in Malaysia, Singapore, will be able to be very closely associated with the team. So this is where we are changing the game completely. And when to answer your question on partnership, what we have done right now is we have done 4 team partnership with Kabaddi teams across the India map, north, south, east and west. So we have strategically covered the entire India map at this point of time because we do not want to leave any stone unturned, right? In addition, our idea is to build a sports chain community which is very focused on Asian fan base. Because if you see in terms of numbers, the overall fandom or sports fandom is around 7.5 billion people. Wow. Right? Which is the world population because people follow multiple sports as well, right? When we see that particular number from an Asia lens, it's 51%. Approximately 3.5 billion people are sports fans. And if you're able to capture at least 10 to 15% of this through Web3 technology, we are talking about huge numbers, which will be very big from a gamification element as well. 3.5 billion is roughly around 350 crores just to cut it down. Yeah. So what is the way forward, Vinayak? Because since we are talking about a technology, it's catering to 3.5 billion. So what's the solution you are providing? Since Siddharth was telling that someone from Malaysia will be able to subscribe or maybe to use this facility. So what are the on-ramp solutions you are providing so that the big concern as far as this community is concerned is fiat to crypto and the reverse. So what is the solution you are working on, if you can just highlight that? Sure. So what you may have seen that there's a big audience, right? 3.5 billion is a big audience, but a lot of people usme say are still Web 2.0. We understand that, we know that, but these fans already have a lot of fan group, which we are directly working with them. What we want to do is when we work with the fan group, put them together and say, boss, this is how we can actually do
many things by buying fan tokens. And when you work with a fan group, that influences a wider audience as well. Helps them figure out, yeah, maybe I can do this. It's not as complicated as it looks. It's all about buying a token, which is a simple process, buying a fiat currency and going from there. So that's what we want to do as step one. And like I said, we've actually put them together in one place right now, which is a Telegram group that's easy for people to communicate and converse. So you're talking about community building, but what's the solution you are providing for this? If you can just highlight. So right now at SportsChain, what we're trying to do here is we are building a digital world for fans. You, me, all understand that blockchain technology or cryptocurrency is at a very nascent stage, specifically when we talk about Indian audience, right? Considering we see a large amount of hue and cry because of the regulation, whatever is happening at that point of time. So our mission is completely simple. We want to create a platform which is as simple as Amazon.com. The fan token would be a product where you go, sign up. You do not have to worry whether you have to open a MetaMask wallet. Everything will happen at the back end of SportsChain, right? You go, sign up, automatically a wallet would be created. And through that wallet, you can, through an on-ramp and off-ramp solution, obviously we'll be integrating because we know that we want to capture 10 million fans, and obviously crypto audience is not that big at this point of time. We're talking about Web2 users. Web2 users do not have a ERC20 wallet. The adoption is very low at this point of time. So on-ramp solution would be very critical, where people with the help of their Visa and MasterCard come on our platform, buy our native currency, which is SPN, and with the help of SPN, which is an in-game token or assets, you can buy any fan token or do multiple engagement on our platform. And to top it up, what we're gonna do is digital world for fan. It's not only buying tokens and converting at a higher dollar amount. This is not our objective at all. All right. What we are doing here is we are tokenizing the membership. We are saying ट्रेडिशनल मेंबरशिप में आप 3,000 रुपए देते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, VIP greet and meet मिलता है, but after 1 year it expired, right? And your 3,000 rupees goes to zero. But here we are bringing that particular concept on chain, where we are tokenizing the membership. Fantastic. You're getting all the traditional membership, whatever you want. But over and above, because of demand and supply, the game theory dynamics, the price will go up or down. At least you will have something in return, and it's an infinite period membership, right? Because you hold an on-chain data which is completely decentralized and it can be transferred. Right now you have utilized a VIP ticket. You want your friend to utilize, just transfer that fan token to them. He will pay you back whatever the money it is or trading amount would be, and he'll be able to participate in the fan engagement activity. All right, so this is transferable. That's what you're saying. Absolutely. So, but which platform you are using, Siddha? So right now, the main or the layer one is Ethereum. All right. And why Ethereum we all know, because this is the one biggest platform on blockchain, a layer one standpoint. So this is what we are using. But unfortunately, you also know that gas fee issue is too big in Ethereum at this point of time. So what we have done is we have connected with Polygon. Yes. So we are entering into layer 2, wherein our platform, our tokens would be on ERC20, but our overall platform will work on Polygon. We have already received a grant from Polygon. So we are building a web app on Polygon so that a user, a tier 2 or tier 3 audience who is a very die-hard Tamil Thalaiva fan, want to buy $5 tokens, they can buy it with a very minuscule gas fee. Fantastic. This is where we want to change the game. Rather than paying $20 on Ethereum for buying $5 worth of tokens. So since we are talking about layer 1 and layer 2 solution, I just wanted to ask you, Ethereum is undergoing the merge process, and there are market participants who are expecting that once this merge is complete from proof of work to proof of stake, it's going to solve a couple of things such as the high transaction fees which you guys are facing as of now. And the other is the environmental concerns. That's a separate thing. Correct. But SportsChain, is it prepared when this merge will happen? It's going to solve the problem? You will not require layer 2 as of now? Absolutely. So our whole idea to move on layer 2 is the only basic problem is gas fees, right? If Ethereum transition to proof of stake has been in talks for the last 2 years, we don't know when it's going to happen. But whenever it happens, we are already built on ERC20. So it's much more easy for SportsChain to shift from Polygon to Ethereum, the upgraded version as well. So that doesn't stop at all. So I think it would be a win-win situation for everyone. But obviously then Polygon needs to find another solution how they're going to fight with the new proof of stake of Ethereum, because ultimately that's going to eat a large amount of pie of their business. That's a big question, which everyone is asking. Will these layer 2
chains will be obsolete. Although we are discussing about fans, let's move on. Since we are talking about this entire gaming sector, can you just explain to me, Vinayak, since cryptocurrency market, as we all are aware, that it is going through a troubled time. We have seen a lot of institutional investors selling recently, but this gaming sector has witnessed roughly around $10 billion of funds only in 2022. At a time when market is falling, this sector is witnessing a lot of inflows. What is the main objective? What is the way forward? What do you think is the main reason behind this inflows? So the main reason behind this inflows is that they believe, or the investors believe, that these play to earn concept is a win-win. Okay, it's a win because the player themselves are able to earn either in the form of NFT or tokens, and the fact is that the range of games is also quite vast, from casual to something as deep as role playing. So that's why, because of these factors, you will see a lot of inflow coming to. But this market is expected to undergo a change as well, because what happens is, for us, what we believe is that, and what we are basing our concept is that, crypto market is like you have to have an in and you have to have an out. A lot of these games that do not give you an out, in the sense that you're not able to reap benefits, financial benefits, and that's the end goal for everybody, right? Those games will slowly get weeded out. So that money is going to come in very well right now, but the utility and the out factor is going to determine which are the companies that are going to stay in the market. So you rightly mentioned, when you started this particular discussion, you mentioned about play to earn, right? Play to earn is the element which will change the gamification or the GameFi completely. To give you numbers, GameFi is around 11.5 billion market cap, the various projects on GameFi at this point of time. And on a trading volume standpoint, 2 billion of trades happens on a daily basis on these particular platforms, which is NFTs, fan tokens, so on and so forth. So here, how the game will evolve is, right now, to give you an example of Dream 11, right? Dream 11, you participate in a particular pool amount, but only 1 or 2% wins, right? Mm-hmm. But when we talk about GameFi, even on our platform, we're going to incorporate gamification for user stickiness and user rewards. You participate, you invest your time in terms of playing those games, you will be rewarded in SPN tokens or fan tokens as well. So this is where your time is money is the concept which we are bringing to reality from a sporting world standpoint by integrating gamification and GameFi element to it. Do you play games? Yes. No, I'm talking about physical games. Physical games right now, no. But I have been playing computer games. I play on Xbox for a very, very, very long time. And now I'm getting back into computer games because of the whole GameFi thing as well. So which is your favorite computer game? My favorite computer game is FIFA. So I've been playing. Why do you think that FIFA is best? What are the features that you like in that? So two things. I can play against my friends and I can play online, and obviously I can play with my favorite team, which is Arsenal. And that's why I like it. And every year there's an upgrade to it, and that upgrade is quite nice. So which is your favorite game, Siddharth? So I generally play some physical sports such as badminton and chess. So these are the games, and normal mobile games such as stick cricket and so on and so forth. I'm a big fan of that, so I generally play all those games as well. But as you rightly mentioned, the reason behind playing FIFA is these three things, right? Peer-to-peer, playing with your favorite team, and playing online. This is what is the cornerstone of the concept of sports chain as well, right? Exactly. That's the reason why I asked you guys this question, that are you guys playing an online game rather than pitching everyone? This is something, which I wanted to understand. So, when will your project be live, if you can just give an outlook on... So, right now what we have done is our sign-up activity is already live. So, you can go to fans.sportschain.com and do sign-up and win up to 400 SPN tokens, right? This is where we have started a sign-up and we have received more than 500 sign-ups till date. But from a roadmap standpoint, July is the date where we want to launch a beta app. Mm-hmm. When I say beta app, what we will be doing there is, we'll be integrating stick cricket type of games from a gamification, and then we'll be able to launch fan tokens of our partner teams from the month of August onwards. This is where we exactly are from a technology roadmap standpoint. All right. So since we are talking about August, and what is the kind of approach your company has taken toward this project? Since August, it's like hardly 2 months are remaining. So what is the main objective behind this? Main objective behind this is, frankly, we want to prove to the global market that we can do this in Asia. If you remember in the early part of the conversation, Siddharth said 57 fan tokens were launched, not even one in Asia, or not even one from Asia. So we want to
prove that yes, this is also going to work in India. We will build an India community, and the objective is to showcase that these teams that we are partnering with, उनका सिर्फ एक source of revenue नहीं है, match day tickets या sponsorship etc. Monetizing their fans, we want to prove that in India, and this will be one of the first times that will happen in the Indian Asian market that a professional team is being able to monetize their fans at this scale. So Siddharth, since we are talking about monetization of fans going forward as well, so what are the fundraising options you have explored, and what is the way forward in terms of fundraising as far as the business is concerned? If you can just highlight that. So from a Web2 project, the fundraising is actually a little different, right? Or it generally happens from a Web2 arena standpoint as well as a Web3. So what we have done till date is we have done token sale of our SPN, which is expected to launch in the month of July, where we will be doing our public sale by doing an IEO on various global exchanges as well. So we are currently in talks. So once that talks are fruitful, we will be launching our SPN where early users will be able to come, participate, buy it, and with the help of SPN token, they will be engaging on a platform. Fantastic. That is one part of it. So we have already closed the seed round as well as early backing round. Approximately, we raised around $800,000. Couple of PRs are already there on our website. The name of investors are already out. You can definitely view that. But right now we are in an equity fundraising as well, where we plan to raise another $1.2 to $3 million. The whole idea of raising this money is twofold. One, we want to expand into Asia market by doing sporting team partnership. The money would be used there. The second most important is user acquisition, marketing. The large amount of money would be spent there because we want to have at least 5,000 to 25,000 users onboarded when we launch a particular platform. So at least we can show or have large amount of daily active users, create stickiness on the platform, and then take it forward. So user engagement and acquisition is the big question as far as the company is concerned. बहुत खर्चा भी होता है इसमें. Correct. So उसको tackle करने का क्या आपने strategy बनाया है? So there is no perfect strategy to build a community. It is to be done in multiple ways, and multiple routes are there. One of the important ways to do it is actually utilize our team partnerships. They themselves, you take any kabaddi team on an average, they have about 300 to 500,000 fans. That is one way to start doing that. So that's how you kind of build the community, introduce that all together. And then what we are also doing is we're working with a lot of fan groups, such as, Bharat Army, as you know, that's for the Indian cricket team. Multiple fan groups are there. So work with them to get their, users on board as well. And then also market this very vastly to the crypto community in India. So crypto community in India में definitely 10 में से 5 तो कोई sport के fan होंगे ही, and they will see that as a good proposition to kind of move away from traditional the investments that they've done on layer 2 application, etc. How many of them would have come across a sports related kind of a project coming through? So I believe there are 2-3 ways to do this, and we've already started inculcating these methods. So it's not a set formula, but these 3 approaches are something that we've already begun and started witnessing the results of that on our Telegram group, which is now crossed 9,000 people. Our aim was 5 to 25,000, but now 9,000 हम already हो चुके हैं. And Discord as well. So these are some 3 approaches that we have already started taking. All right, 3 approaches. Fan building, community is something which is more important going forward as well. There are a lot of projects in the crypto ecosystem are only surviving because of the community. So one last question before we let you guys go is what's the take? What's your opinion or what's your suggestion to all the fans which are watching this interaction on Crypto TV? What's your view as far as the entire sector is concerned? What's the way forward, and क्या best आने वाला है उनके लिए going forward? बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, because हम खुद, I am not the founder of that company I am talking from a fan perspective as well, right? We started Sports Chain because we were sports fan. We saw there are large amount of gaps. हम अपना time, energy, effort डालते हैं. We should be very closely knit with our favorite teams. We should be able to participate in their financial upside potential as well. This is where data is king concept was missing in sports world. We are bringing that data is king and user is king concept through Sports Chain, where you will be able to not only buy tokens, meet your favorite star, but play games, spend money, spend effort, spend time, and you will be able to reap financial benefits as well. So obviously this is the casual game. How are we going to change from a sporting standpoint as well? Vinayak, a quick view, last
comments on that? Very simple, guys. Don't stay on the sideline or other side of the boundary. Please step in through Sports Chain, and you will really understand, why you should be participating in a project like this. Because for a very long time, fans have been on the other side of the fence. It's time to jump over on this side of the fence and really experience what it means to be a fan as an Asian fan base. So jump over on this side. That's the word coming in from Vinayak. Thank you so much, Vinayak, for being part of the show, and you gave a very broader perspective as far as fans are concerned. Thank you so much, Siddharth, for giving a broader outlook as far as the company plans and projects going forward are concerned. Thank you so much for watching this special segment on Digitally Unplugged. This is Manoj Dara signing off. Thank you. तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल. हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड एनएफटीज म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे. नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलोय आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी एनएफटीची नवीन लिस्ट. आता मी तुम्हाला अशा 3 एनएफटीज बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल. चला तर मग सुरू करूया. तर या टॉप 3 क्रेझी एनएफटीच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची एनएफटी, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची एनएफटी. नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात. आता एनएफटीज वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा एनएफटीच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं एनएफटीच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन वन शेक या नावाच्या डच स्टुडंटवर एनएफटीचे क्रेज एवढा हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच एनएफटी मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या बाईने जगातील सर्वात मोठी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची एनएफटीला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या एनएफटीला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला एनएफटीच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या एनएफटीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या एनएफटीची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या एनएफटी सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला एनएफटीचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे.
चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी NFT आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप NFT साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या NFT चे नाव आहे इनर ब्युटी, म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो, किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची NFT. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच NFT बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केटप्लेसवर 28 मार्च 2022 ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच NFT रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो, भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक NFT बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा NFT ला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला NFT बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड NFTचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या NFTला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंड आहे बाबा, आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची NFT कितीमध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची NFT आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटीमध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी NFT लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या NFT साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या NFTचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची JPEG इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल NFT लॉन्च केलं गेलं होतं. बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचन मध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी NFTs. अशाच प्रकारच्या अतरंगी NFTची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मेटावर्स और NFT मेनिया ने ग्लोबली सेलिब्रिटीज की दुनिया में तूफान मचा दिया है. एक्टर्स हो या आर्टिस्ट, मॉडल्स हो या फिर सिंगर, सभी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं. ऐसे में इंडियन सिंगर्स भला कैसे पीछे रहते? कुमार सानू, सोनू निगम, कैलाश खेर से लेकर SP बालासुब्रमण्यम तक से जुड़ी NFTs सुर्खियां बटोर रही हैं. तो वहीं दिलेर मेहंदी ने सीधे मेटावर्स पर कब्जा जमा लिया है. वहां लैंड खरीदकर दिलेर जबरदस्त खलबली मचा रहे हैं. चुरा के दिल सभी का चले ये चले. जी हाँ, 90s में इनकी आवाज ने सभी को क्रेजी कर दिया था. तब शायद ही कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें इनकी आवाज का जादू न घुला हो. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस कुमार सानू की, जिनकी रुमानी आवाज ने ना जाने कितने दिलों को पहले प्यार का एहसास कराया. पॉपुलर मेलोडी किंग इस बार अपनी NFT कलेक्शन के चलते सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, अनरिलीज सॉन्ग के ऑडियो और कुछ क्लिप्स के अलावा अपने फर्स्ट ऑडिशन और ऑटोग्राफ्ड डिजिटल मेमोरेबलिया की NFT सीरीज लॉन्च की है.
कुमार सानू की इस NFT कलेक्शन में उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ साथ उनके घर के अंदर की खास झलक भी दिखेगी। ये NFT एक्सक्लूसिवली फ्लेमिंगो NFT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसकी खास बात है, इससे होने वाली कलेक्शन का 5% NGO को डोनेट किया जाएगा। NFTs यूनिक एसेट होते हैं और इसीलिए अब ट्रिब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी और मलयालम फिल्म्स में 40,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम के गुजरने के 6 महीने बाद उनके अनरिलीज सॉन्ग को बतौर NFT उनके फैंस के लिए लॉन्च किया गया। उनका यह आखिरी सॉन्ग डिजी नूर नाम की लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस पर ऑक्शन किया गया। विश्वरूपा दारी सनम नाम की इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फनी रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इस NFT से जुड़ी खास बात है कि इसके बायर को कॉपीराइट का 51% मिलेगा। साथ ही उनके पास इस सॉन्ग को अडेप्ट और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने के राइट्स भी होंगे। तो वहीं इन सब के बीच मेटावर्स की दुनिया में धूम मचाने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले पॉप स्टार दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में लैंड खरीदा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बल्ले बल्ले लैंड। सुनने में आ रहा है कि इस लैंड की एंट्री पर उनका एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टैच्यू होगा, जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉप स्टार और आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स होस्ट कर पाएंगे। दलेर इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं। दरअसल दलेर ने कुछ महीनों पहले पार्टी नाइट पर एक कॉन्सर्ट किया था। अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उसकी मौजूदगी हमेशा बनाए रखने के लिए पार्टी नाइट के साथ मिलकर बल्ले बल्ले लैंड क्रिएट कर दिया दलेर ने। दलेर इतने पर ही नहीं रुके, उनके इस बल्ले बल्ले लैंड पर स्टोर्स भी होंगे जहां फैंस स्पेशल मर्चेंडाइज की NFT खरीद पाएंगे। NFT फ्रेंजी में शामिल बड़े बड़े नामों में से एक है पॉपुलर सिंगर सोनू निगम का नाम, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में NFT सीरीज लॉन्च करने वाले पहले सेलिब्रिटी सिंगर हैं। सोनू ने इस NFT कलेक्शन को लंदन में लॉन्च किया था। उसमें उनकी जर्नी और गानों के अलावा उनके लिखे हुए लिरिक्स और उनकी सिंगल हॉल ऑफ फेम की NFT भी शामिल है। सोनू ने न्यू एज डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस के साथ मिलकर ये NFT कलेक्शन लॉन्च की थी। और अब बात एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनकी प्लेबैक, पॉप और रीजनल सॉन्ग्स की फैन फॉलोइंग देश में नहीं विदेशों में भी फैली हुई है, लेकिन खास तौर पर सूफी सॉन्ग्स के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडियन सूफी किंग कहे जाने वाले कैलाश खेर ने अपनी NFT कलेक्शन के लिए पॉपुलर NFT मार्केटप्लेस OpenSea को चुना। कैलाश खेर की ये NFT सूफियाना अंदाज में रंगों और संगीत की सुंदर सपने जैसी है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ड्रीम्सकेप। संगीत सरहदों का मोहताज नहीं, संगीत की भाषा ही ऐसी है जो हर किसी को जोड़ती है, हर किसी के दिलों के तार छेड़ती है। शायद यही वजह है कि एक एक कर सभी सिंगर्स अब NFT और मेटावर्स की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल NFT और मेटावर्स भी जबरदस्त बूम पर है, ऐसे में इसका फायदा उठाना तो लाजमी है। तो कैसी लगी आपको म्यूजिक NFT पर मेरी यानी रुचि की ये स्पेशल स्टोरी? अच्छी लगी? Then do watch all my special stories. See you soon with yet another interesting story. Till then, goodbye, take care and keep watching Crypto TV.
ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनेयर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी? इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोर्नेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक ज़ोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चौम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोर्नेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोर्नेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और
फिनेकी आरपीओ वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोतो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है? बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी? ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माई का लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोतो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, or Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is,
OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. आमतौर पर कहा जाता है कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है और मिलियनेयर बनने में बाल सफेद हो जाते हैं। वेल, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के यंगेस्ट मिलियनेयर एरिक फिनमैन ने तमाम बातों को गलत साबित कर दिया है। एरिक फिनमैन ने 12 साल की उम्र में वो फैसला लिया जो 30 साल या 40 साल की उम्र में लोग नहीं ले पाते, और 18 की उम्र में एरिक ने वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोगों की उम्र बीत जाती है। चलिए अब ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट नहीं करते और आपको सुनाते हैं एरिक की कामयाबी की कहानी। 12 साल की उम्र में एरिक को उसकी दादी ने दिए $1000 और किसी आम बच्चे की तरह एरिक ने उन पैसों से ना तो स्मार्टफोन खरीदा और ना ही कोई गेमिंग कंसोल। इनफैक्ट आप सुनकर हैरान होंगे कि एरिक ने 12 साल की उम्र में उन $1000 से बिटकॉइन खरीदा। महज 2 सालों में बिटकॉइन की कीमत $1200 तक पहुंच गई। ऐसे में एरिक के इरादों को और मजबूती मिली। तब एरिक ने बिटकॉइन से कमाए प्रॉफिट को बेचकर बोटैंगल में उन पैसों को लगाने का फैसला किया। बोटैंगल एक ऐसा वेब वेंचर है जो वीडियो ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। एरिक और बोटैंगल दोनों के पोटेंशियल को परखने में इन्वेस्टर्स को ज्यादा वक्त नहीं लगा और इन्वेस्टर्स ने एरिक के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए, या तो $1,00,000 में बोटैंगल को बेच दें या फिर 300 बिटकॉइंस में। एरिक ने क्या चुना उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। जी हाँ, एरिक ने एक बार फिर अपना सब कुछ बिटकॉइन पर दांव पर लगा दिया। और लगाते भी कैसे नहीं, एरिक ने अपने पेरेंट्स के साथ एक डील जो की थी कि अगर वो 18 की उम्र तक मिलियनेयर बन गए तो वो कॉलेज नहीं जाएंगे, और वही हुआ। एरिक दुनिया के यंगेस्ट मिलियनेयर बन गए। CNBC को दिए एक इंटरव्यू में एरिक ने कहा कि उसने कर दिखाया और अब उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। एरिक ने ये तक कहा कि जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रक्चर है वो किसी को भी कॉलेज रेकमेंड नहीं करेंगे। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है इंटरनेट जो एब्सोल्युटली फ्री है और वहाँ YouTube और विकिपीडिया के थ्रू कई गुना ज्यादा पढ़ाई की जा सकती है। नो डाउट्स, वो एरिक जो कभी कॉलेज नहीं गए, आज उनके पास 400 से ज्यादा बिटकॉइंस है और उनकी टोटल वर्थ है $5 मिलियन। अमेजिंग ना? इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरीज कितना मोटिवेट करती है ना। रियली काश मैं 18 साल की उम्र में वापस लौट पाती और कुछ ऐसा ही स्टेप ले पाती। Where there is will, there is a way. We will keep inspiring you with such stories. I am Ruchi Sharma. Keep watching Crypto TV.
गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील. तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे. बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं, जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे, कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्स पेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंटसाठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे, पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल, तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून ह्या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत, कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये
देखील बरेच ॲप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ॲप्लिकेशन होतं जे या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ॲप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. હેલો, કેમ છો? મસ્ત મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી, AKA પારો. દેવા. જેમ ગોલ્ડ પછી ચાંદીનું નામ આવે તેમ ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે બિટકોઇન પછી ડિજિટલ સિલ્વર એટલે ઇથિરિયમનું નામ આવે. આજે આપણે ઇથિરિયમ શું છે, કોણ બનાવ્યું, શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું ફેમસ કેમ થયું, આ બધું આજે એઝ ઓલવેઝ ફન વેમાં લર્ન કરશું. इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर. 1991 ફિલ્મ સોદાગરમાં બોલિવૂડના બે શેર ધ લેજેન્ડ્સ રાજકુમાર અને દિલીપ કુમારે લાસ્ટ ટાઈમ સ્ક્રીન શેર કરી હતી. બોલિવૂડની જેમ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં પણ બે શેર રાજ કરે છે. ઇમલી કા બૂટા બેરી કા પેડ. આ લિરિક્સથી સમજીએ તો ઇમલી એટલે ઇથિરિયમ અને બેરી એટલે બિટકોઇન. આજે આપણે ઇથિરિયમ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઇથિરિયમ એટલે શું? ઇથિરિયમ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, જેને ઈથર, ETH ઓર ઇથિરિયમ પણ કહેવાય છે. શું તમને ખબર છે, 2015માં લોન્ચ થવાથી આજ દિવસ સુધીમાં ઇથિરિયમની પ્રાઇસ એપ્રોક્સિમેટલી 36,000% વધી છે. સ્ટોક માર્કેટમાં આપણે સ્ટોક 20થી 30% વધે તો આપણે ફોર્મમાં આવી જઈએ. જસ્ટ ઇમેજિન 36,000%નું રિટર્ન એટલે કેટલું થાય બોસ? મગજ ફરી ગયું ને? મારો પણ. એમ થાય છે કે હમણાં જે ઇથિરિયમમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઈએ, હે ના? રૂકો જરા, વેટ કરો. પહેલા ઇથિરિયમને પૂરી રીતે સમજી લો. ઇથિરિયમ ફક્ત એક ક્રિપ્ટોકરન્સી નથી. ના 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 રે ના રે ના રે ના 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 રે ના રે ના. इथेरियम ना रहोगे ते ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन के सारे मजे कैसे करोगे. इथेरियम है इथेरियम है. ઇથિરિયમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન માટેનું ગ્લોબલ ઓપન સોર્સ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. કઈ ટપ્પો ન પડ્યું? ડોન્ટ વરી, હું સિમ્પ્લિફાય કરું છું. સિમ્પલી પુટ, હિસાબ કિતાબની શેર ડિજિટલ લેજર એટલે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. આ લેજરમાં ઈચ ન્યૂ ડેટા બ્લોકના ફોર્મમાં એડ થતો જાય છે. આવા બ્લોક્સથી બનતા ડેટા ચેનને બ્લોકચેન કહેવાય છે. ઇથિરિયમ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ પ્રોગ્રામેબલ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. સિંઘમમાં અજય દેવગન કહે છે ના, જિસમે હૈ દમ વો હૈ ફક્ત બાજીરાવ સિંઘમ. ઇથિરિયમ પ્લેટફોર્મમાં પણ બહુ જ દમ છે. આ ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ સ્ટોર કરવાની ડિજિટલ લેજર નથી. ઇથિરિયમનું વિઝન એક ન્યૂ ઇન્ટરનેટ ક્રિએટ કરવાનું છે, જ્યાં કોઈ ટેક જાયન્ટ કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીને દાદાગીરી નહીં ચાલે. તમારા પ્રાઇવેટ ડેટાને સલમાનના બિગ બોસની જેમ કોઈ જોઈ ન શકે. આટલું જ નહીં, ઇથિરિયમ પર ગેમિંગ, એન્ટરટેનમેન્ટ, બ્રાઉઝિંગ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેને ડી એપ્સ કહેવામાં આવે છે.
ઇથેરિયમ યુઝર્સ ડી એપ યુઝ કરવા માટે ફીસ ભરે છે. આ ફીસને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં ગેસ કહેવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે વર્લ્ડના 93% ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇથેરિયમ પર કરવામાં આવે છે. શોર્ટ ટાઈમમાં ઇથેરિયમને ફેમસ થવાનું કારણ છે સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે થર્ડ પાર્ટી વગેર કમ્પ્યુટર કોડથી થતો બે પાર્ટી વચ્ચેનું અગ્રીમેન્ટ. મિયા બીવી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાઝી? ઇથેરિયમ બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સનો સૌથી મોટો ફાયદો અહીંયા ક્રિપ્ટોગ્રાફીના કારણે ફ્રોડના જરા પણ ચાન્સ નથી. પ્લસ તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી ના રાખવી પડે. ઊંધિયાથી લઈને અંડર વોટર સબમરીન સુધી તમારા કંઈ પણ સેફટી ટ્રેડ કરવું હોય તો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ હે ના. શું તમને ખબર છે ઇથેરિયમના ક્રિએટર વર્લ્ડના વન ઓફ ધ યંગેસ્ટ ક્રિપ્ટો બિલિયનર છે. અત્યારે એમની એજ ઓનલી 27 યર્સ છે. તેમનું નામ છે વિતાલિક બુટરીન. આ રશિયામાં પેદા થયા અને કેનેડામાં મોટા થયા. એમની એક વાત પર તો તમને સલામ કરવાનું મન થશે. 2021માં વિતાલિક ભાઈએ ઇન્ડિયન કોવિડ રિલીફ ફંડને લાખો નહીં, કરોડો નહીં, ખરબો રૂપિયા ડોનેટ કર્યા હતા. $1.14 બિલિયન ટુ બી એક્ઝેક્ટ. સલામ છે બોસ. જેમ સુપરસ્ટાર એન્ડ અર થલાઈવા રજનીકાંતની રોબોટ ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર સાથે રોબોટ 2.0 ફિલ્મ આવી, તેમ ઇથેરિયમ 2.0 પણ બહુ જલ્દી લોન્ચ થવાનું છે. ઇથેરિયમ 2.0 નું બીજું નામ છે સેરેનિટી. કોઈ પણ બ્લોકચેનને 3 ફેક્ટર્સ પર ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે: સ્કેલિંગ, સિક્યોરિટી એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. સ્કેલિંગ એટલે પર સેકન્ડ કેટલા મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. સિક્યોરિટી એટલે આ હેકિંગ અને ફ્રોડથી કેટલું સિક્યોર છે. અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે આને કોઈ એક કંપની, ગવર્મેન્ટ કે વ્યક્તિ ઓન નથી કરતું. ઇથેરિયમમાં કરન્ટલી સ્કેલિંગનો ઇશ્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વિઝા પર સેકન્ડ 1700 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરે છે. વિઝાની સ્કેલિંગ થઈ 1700 TPS, જ્યારે ઇથેરિયમ કરન્ટલી ઓનલી 15 TPS એટલે કે 15 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર સેકન્ડ હેન્ડલ કરે છે. ફિકર નોટ, 2022માં જે ઇથેરિયમ 2.0 આવે છે ના, તે પર સેકન્ડ 15,000 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરશે. બાબા રે, ક્યાં 15 TPS થી 15,000 TPS પર પહોંચી ગયા? ગજબ છે ના બોસ. એક વાત તો નક્કી છે, 2022માં ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મ તો ફૂલ સ્પીડમાં ભાગવાનું છે અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં કંઈ એક તૂફાની કરવાનું છે. બસ આજે અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી અપ ટુ ડેટ રાખવાની પ્રોમિસ સાથે હું પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. ફરી મળશું ક્રિપ્ટો વર્લ્ડના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ્સ સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો TV. क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथेरियम बद्दल जाणून घेऊया. इथेरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथेरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच. इथेरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे. गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत. इथेरियम हे डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो. इथेरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे. हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते. हे ॲप्लिकेशन इथेरियम नेटवर्कवर चालवता येतात. इथेरियम आर्किटेक्टचे 2 पैलू आहेत: क्रिप्टो करन्सी आणि इथेरियम ब्लॉकचेन. इथेरियम कोणी तयार केले?
इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटरीन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते. तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला. ब्युटरीनला गणितात रस आहे. त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते. इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाऱ्याशिवाय. हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात. इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत. वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच. उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो. इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात. इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. मैंने एक स्पॉन्सर्ड एड देखा था अबाउट फाइलकॉइन एंड दैट गॉट मी रियली वेरी क्यूरियस. आखिर फाइलकॉइन है क्या और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में? दिमाग की घंटी थोड़ी सी घूमी, राइट? हे गाइस, दिस इज मी यशस्वी आचार्य. आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी. ये है इंडिया का पहला 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज फाइलकॉइन? फाइलकॉइन और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में? Filecoin is a decentralized peer-to-peer digital storage marketplace using blockchain technology. It's built on top of interplanetary file system. ओह, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, राइट? IPFS भी कह सकते हैं आप इसको. और ये अलाउ करता है यूजर्स को to rent unused hard disk space and earn FIL tokens in return, यानी कि fill tokens in return. Now let's see how Filecoins aim to shake up the online storage space. Ooh, this is going to be used. Filecoin can offer an appealing alternative to purchasing Amazon S3 storage buckets, Dropbox space, and getting logged into the same cloud storage contracts. ये सारे words काफी familiar sound कर रहे हैं, right? With the right infrastructure, anyone can buy and sell storage on the Filecoin network while setting their own prices and marking their own contracts. Now let's see how this works. Filecoin is a decentralized storage network that lets anyone rent out storage space instead of having to trust only one company with important data. It can be split up and stored on different computers around the world. Filecoin, a cryptocurrency operated file storage network. चलो अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ाते हैं. Filecoin कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था? Filecoin was first introduced in 2014 when John Bennett released the white paper, which is a cryptocurrency operated file storage network. The proposal is a blockchain network similar to Bitcoin, but where nodes in the network can store data guaranteed by, यानी कि आप वापस से उसको retrieve कर सकते हैं, यानी कि फिर से store कर सकते हैं. Filecoin is developed by Protocol Labs. Filecoin is sometimes called an incentive layer on top of interplanetary file system, जिसको हम IPFS भी कहते हैं, which means users are incentivized to rent out their storage space by getting paid in FIL tokens. So can you use Filecoin to send Christmas photos to the North Pole? Well, not yet. चलो अब थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली IPFS, जिसे हम इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम कहते हैं, वो होता क्या है.
So basically, IPFS is a peer-to-peer data storage and retrieval protocol that's built using a more decentralized approach. Unlike HTTP या फिर HTTPS, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया, राइट? एक बार फिर से बताती हूँ. Unlike HTTP और HTTPS, it doesn't rely on centralized servers to store data. Individuals become storage miners with Filecoin. So basically हुआ ये था 2017 ICO में Filecoin ने रेस किए थे approximately $250 million. Filecoin Minute was subsequently launched in October 2020. The Filecoin infrastructure's main purpose is to provide a new way for organizations and individuals to store data around the world. ये इतना सा वर्ल्ड है हमारा, हाँ, इसी की बात कर रही हूँ मैं. So basically होता क्या है ना कि when people have free storage available, they can become storage miners who are essentially responsible for storing data on the Filecoin network. Clients pay FIL tokens both to store and retrieve data. वैसे जितना भी आपको समझ में आया होगा, तो ये तो जरूर समझ में आया होगा that is it safe to use? हाँ, आया ना मन में question? So basically, retrieval miners are another class of participants. They facilitate the data retrieval process between clients and storage miners and also receive a small amount of FIL for their services. थोड़ा सा उनका भी फायदा होना चाहिए, right? Filecoin uses end-to-end encryption and storage providers don't have access to decryption keys. Since it's a distributed system, files are kept safe across the multiple storage locations. देखो जैसे जैसे टाइम बदलता है ना वैसे वैसे the technique of data storage and access has changed. Over the past few decades, the way that we store access data has changed completely. In business, this has changed from on-site storage, where companies have huge server rooms, to remote data storage warehouses and more diversified cloud storage across the entire world. Currently, most businesses use a combination of all of these. Similarly, consumer data storage has also changed with an increased reliance on cloud storage. तो आप ये सोच रहे होंगे what makes Filecoin potentially better than its centralized competitors? Well, it offers a peer-to-peer cloud storage solution for businesses and consumers. Because the same item, यानी कि storage, is offered by different sellers potentially at different prices. यानी कि जितना competition है, उतना price change भी है. The consumer may benefit in the end. फायदा तो वैसे अगर आप कंज्यूमर है आपका ही होने वाला है. While at times you might not have enough storage for all your data. Sometimes you'll have access and you can sell it also. Well, that's the promise of Filecoin. वैसे ये तो हो गई हीरो की बात, पर कंपेटिटर्स की बात अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. Stay tuned to Crypto TV. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसे देखो वो एनएफटी बनाने के होड़ में लगा हुआ है। आम हो या फिर खास, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, सभी नए जमाने के साथ बने रहने के लिए एनएफटी क्रिएट कर पैसे कमाने के नए जरिए का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया तेजी से बदल रही है और दुनिया भर के मौजूद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2021 में एनएफटी स्टोर के नाम से सस्पिशियस लुकिंग डोमेन रजिस्ट्रेशंस की संख्या में लगभग 300% की बढ़त है। इस तरह से एनएफटी मार्केटप्लेस में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसका एक्टिव क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट होना चाहिए। और यही वही जगह है जो एनएफटी होल्डर्स को नए रिस्क की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अटैकर्स किसी भी होल्डर्स के क्रिप्टो वॉलेट में मार्केटप्लेस अकाउंट के जरिए सेंध लगा सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद शातिर हैकर्स अब तक एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में पलक झपकते ही एक गलती और उनके निशाने पर आना बेहद आम है। इस तरह कुछ नई तकनीक तो कुछ अभी भी पुराने फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके होल्डर से उनके फंड्स ट्रांसफर कराने से लेकर क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एनएफटी सिक्योरिटी रिस्क में इजाफा करने वाले उभरते खतरों के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले है
पुराने जमाने की फिशिंग स्टाइल और एनएफटी धोखाधड़ी। दोस्तों, नए जमाने के खिलाड़ी भले ही कितने ही समझदार और सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कई बार पुराने तरीके भी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होते हैं। हाल की बात करें तो फरवरी 2022 में स्कैमर्स ने हमले के दौरान चोरी किए गए 254 टोकन्स के साथ ओपन सी यूजर्स से सैकड़ों एनएफटी चुरा लिए थे। हैकर्स द्वारा हासिल किए गए एस्टिमेटेड वैल्यू की कीमत $1.7 मिलियन से ज्यादा आंकी गई थी, जिसे महज 3 घंटे के समय में अंजाम दिया गया था। इस दौरान ओपन सी सीईओ डेविन फिजर ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़ितों को टोकन के ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के नाम पर धोखा दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पूरी तरह से ब्लैंक था और यही वजह थी कि जिसने हैकर्स को एनएफटी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ एक नकली एनएफटी स्टोर साइट भी मौजूद है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तरफ तलाश करता है और बड़ी सफाई से धोखा देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी क्रैकिंग के बारे में। कई बार स्कैम से बचने के लिए होल्डर्स किसी भी फिशिंग स्कैम्स के झांसे में नहीं आते, लेकिन तब क्या जब कोई आपको फ्री एनएफटी दे और वो भी बतौर गिफ्ट, और यह वो छोटी सी गलती जिसे एक्सेप्ट करने के साथ कोई भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। अटैकर्स अक्सर विक्टिम को टारगेट करने के लिए मैलिशियस एनएफटी को क्रिएट कर उसे गिफ्ट्स के रूप में ऑफर किया करते हैं। जैसे ही विक्टिम थोड़े लालच में आने के साथ मैलिशियस एनएफटी को खोलते हैं, तब उसमें से ओपन सी स्टोरेज डोमेन से एक पॉपअप ट्रिगर होता है और खास बात यह है कि यह पॉपअप विक्टिम के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन रिक्वेस्ट शो करता है, जिसके बाद खुद ब खुद विक्टिम अपने ही हाथों अपने वॉलेट कनेक्शन को ओपन कर अटैकर्स द्वारा अपने फंड से हाथ धो बैठता है। और इसे ही कहते हैं खाया पिया कुश्ती और ग्लास तोड़ा लाखों का। बात करें फेक एनएफटी सपोर्ट ऑन डिस्कॉर्ड की, तो ओपन सी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हुई चालबाजी को कौन भूल सकता है। यहाँ अटैकर्स घात लगाए बैठे थे कि कोई सपोर्ट क्वेश्चन पूछे और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता वो उसे सेकेंडरी फेक सपोर्ट सर्वर पर इनवाइट करते, जहां विक्टिम को अटैकर्स अपने मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट को क्रोम एक्सटेंशन के साथ अपने मेटामास्क ऐप को रीसिंक्रोनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हुए विक्टिम को कॉन्फ़िगरेशन एडवांस मोबाइल एक्शन चेन से लिंक करने के लिए गाइड करते हैं, जिसके बाद अटैकर्स को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो क्यूआर कोड जनरेट कर पाते हैं। इस तरह से बड़ी सफाई से अटैकर क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर और इमेज का इस्तेमाल अपने खुद के मेटामास्क ऐप के साथ वॉलेट को सिंक करने के लिए करते हैं, जिसके साथ अटैकर्स विक्टिम के वॉलेट से क्रिप्टो फंड को आराम से बिना किसी मुश्किल से चुरा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल आर्ट स्कैम्स के बारे में। डिजिटल आर्ट की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? आप सोच रहे रहेंगे कि आखिर कैसे हो सकती है किसी के आर्ट वर्क की चोरी, और वो भी एनएफटी फॉर्म में। तो आपको बता दें कि जब कोई एनएफटी मिंट की जाती है तब क्रिएट किए गए टोकन के लिए एक यूनिक फिजिकल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे यूआरएल के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई एनएफटी खरीदता है तो असल में वो यूआरएल अपने नाम करता है। बहुत से मार्केट प्लेसेस पर एनएफटीज को बेचते समय आर्टिस्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ही फायदा उठाते हुए ऑनलाइन आर्ट थीव्स बड़े आराम से किसी भी आर्ट वर्क को कॉपी पेस्ट मिंट और सेल कर पाते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में समझाया गया है कि कई बार खरीदार इलीगल आर्ट के कॉपीज के लिए मुंह मांगी कीमत देकर फंस जाते हैं। ये स्कैम यही तक नहीं रुकता, बल्कि कई बार विक्टिम्स को ब्लैकमेलर से डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए सपोर्ट किए जाने की धमकी मिला करती है। दोस्तों, बात करते हैं ट्वीट थेफ्ट के बारे में। मौजूदा एनएफटी स्कैम्स के वाइड रेंज में इसे एग्जीक्यूट करना सबसे आसान है। एक ऑटोमेटेड एनएफटी ट्वीट माइनिंग बॉट ऑटोमेटिकली रूप से ट्वीट्स को एनएफटीज में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स किसी काम के नहीं होते हैं, तो आपको ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट याद ही होगा, जिसे $2.9 मिलियन के बराबर बेचा गया था, जबकि अब उसे पहले से 16 गुना ज्यादा यानी $48 मिलियन से ज्यादा में बेचने के लिए फिर से ओपन रखा गया है। वही अगर कोई ट्वीट में अपना आर्टवर्क पोस्ट करता है तो उसे बड़ी ही आसानी से अटैकर्स द्वारा नाक के नीचे से चुराया जा सकता है, जैसा कि आर्टिस्ट आरजे पाल्मर के साथ हुआ था। इन सभी तरह के फ्रॉड और स्कैम्स के बावजूद एनएफटी यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो भी एनएफटी इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले रहा है उसे खुद को इन सभी तरह की धोखेबाजी से बचाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। Hello everyone, you're watching your favorite channel, Crypto TV. I'm Vinita Chatterjee, your host who's going to lead you into the fantastic and mind-blowing journey of digital currencies. And today, we are going to discuss what is this cryptocurrency all about. So bringing to you the basics of cryptocurrency. What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a type of a currency that is digital and decentralized. Yes, you heard me right. Cryptocurrencies can be used to buy and sell things, and their potential to store and grow value has also caught the eyes of many investors. There are thousands of cryptocurrencies available in the market today. The most popular and the original cryptocurrency is Bitcoin. Bitcoin was created in 2009. The other common cryptocurrencies include Ethereum, XRP, and Bitcoin Cash. Each of these currencies serve a different purpose. While some are used in the place of cash, the others are used for direct transactions. Cryptocurrencies are wholly digital, so there is no physical coin or bill that is connected to the crypto that you own. Owners hold cryptocurrencies in a digital wallet and buy and sell them through online exchange. Your wallet may be online or stored offline on a device which is similar to your USB drive. Decentralization is a primary tenet of all cryptocurrencies. Whereas most currencies are backed by a central bank, like for example the US dollar, which is backed by the full faith and credit of the US government, cryptocurrencies are usually maintained and valued by their users. Now let's find out how cryptocurrency transactions actually happen. Cryptocurrency transactions are recorded on a decentralized ledger. This ledger is called blockchain. Every time a cryptocurrency is bought or sold, the transaction is added to the blockchain. A blockchain is a public database of transactions which is available to all crypto holders. Anyone can join and participate on the blockchain, but data on individual transactions and the people involved with them are secured using cryptography. Cryptography, which is the basis for the term cryptocurrency. For each transaction added to the blockchain, there is a digital validation process which verifies it and prevents any kind of fraud. Now, what can we do with cryptocurrency? Let's find out. While the characteristics of cryptocurrency are both that of currency and investments, there is still a debate among experts whether cryptocurrency is clearly one or the other. As its name suggests, you can use cryptocurrency to make purchases, but your purchasing power is limited. Crypto isn't widely accepted among retailers or other businesses. But for many people, crypto is type of an alternative investment. Just as you can buy and trade in stock markets in the public companies, you can also buy cryptocurrency with the hope that it will increase in value over time, allowing you to cash out for a profit or at a later date. Some people invest in crypto less for the belief that it will become a popular currency, but more for the belief that it is a bet on the blockchain technology which goes behind it. Cryptocurrencies do share characteristics of commodities like gold. Yes, they can be bought and sold for cash. Very similar to Forex or the foreign exchange trading, there can be significant risks involved with largely unregulated market, and your best bet is yet to get informed beforehand so that you don't invest your money that you cannot afford to lose. Only clear regulations may help us to understand how to use cryptocurrency and what its future may look like, but we aren't there yet.
Well, that was all about the basics of cryptocurrency. Well, I'm super excited to get into the groove and jump into this bandwagon. Are you not? If you are, keep watching your favorite channel, Crypto TV, with me, Vinita Chatterjee. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating
conflicting transaction history, and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for Ghost-Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. कई बार थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम कुछ ऑफर्स और कुछ कोइंसिडेंट पर हद से ज्यादा भरोसा करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और स्कैमस्टर्स के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर किसी भी तरह का कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ठग का शिकार बनने जा रहे हैं। Liquidity has dried up with the central bank's hiking rate, due to which trading activities in cryptos has fallen, and so have their prices.
So to discuss the reasons that are responsible for the fall in cryptocurrency markets, we have invited Sharat Chandra. If you look at inflation, so we are witnessing a decade high inflation, right? Mr. Shamrat Kishore. A lot of people whose, the risk appetite, the risk capital that they used to allocate towards various parts of the portfolio, that has gone down. अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है? मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a Satoshi के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना अपनी जो पूरी कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड। हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं और चलते। वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेना, या द एक्सीडेंटल मिलेना, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में। उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा, वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर, जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी। टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं?
नहीं हूँ नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप ये कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप अगले जन्म में करोगे। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। तो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए यूएस। ओके वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान और वहां से लेकर ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल यूएस ने उनको बैन कर दिया था। और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बिनांस यूएस कर दिया और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। Wow, that's amazing. और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिका से मुझे याद आया बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसिडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो। टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे UFO भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं UFO कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very, very, very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका decision खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us. Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal.
Bitcoin has fallen below $22,000 mark and is down by over 65% from the peak hit in November 2021. To discuss all the reasons behind the fall in the markets, we have invited a special guest, Mr. Rohas Nagpal. I don't believe that external events such as the interest rates and all have much of an impact on crypto. I think this fall which is happening right now is actually overdue. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथीरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथीरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथीरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथीरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे, अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है
तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं, हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। Hello everyone, you're watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee. Today we are going to discuss the real life use cases of smart contracts. How does smart contract benefit you or me or any of our friends or family members? Let's find out in today's episode. But first, let's find out what are smart contracts. Well, in our day-to-day lives, we all need some sort of a contract to make sure that our promises are kept intact. But what if I tell you that there is a concept called smart contract? Smart contracts can be defined as a paperless digital code that offers a set of promises on predefined conditions that the two different parties have agreed to. In simple words, the parties can set a condition that can start an action or a series of actions when met. Smart contracts actually have the potential to make our world more democratic. Yes, you heard me. In fact, the whole concept of smart contract applications has unquestionably revolutionized the way we live our lives. Experts believe that smart contracts would be around long after everyone has forgotten about some of the leading crypto coins. Smart contracts use the blockchain technology to facilitate the exchange of money, property, information, or anything that people deem appropriate to initiate a smart contract for. The beauty of decentralized nature of blockchain technology
is based on peer-to-peer transactions. That means that these smart contracts don't require anything in the way of a middleman. Traditionally, individuals or institutions such as banks and solicitors were required to facilitate legally binding contracts. We all know that, right? But now, let's see what change the smart contracts implement in our lives. Smart contracts allow individuals to bypass this costly and often slow middlemen and agree on the contract directly. Well, doesn't that make you feel that smart contracts are going to simplify all of our lives? It truly does. In today's episode, we are going to discuss the top 10 real-life use cases of smart contracts. Let's find out. Number 1. Trade finance. Trade finance stands to benefit immensely from the introduction of smart contracts. Recently, Santander Innoventures said that it believes that blockchain technology will lead to more than $20 billion worth of savings per year by the year 2022. A huge amount of these savings will come from smart contracts, automating approval workflows and clearing calculations that at the present time are incredibly labor intensive. Not only will this automation help to reduce work hours, but it will also dramatically reduce errors and the time taken for these calculations to take place. Records. Our next use case of smart contracts are in keeping records. Nearly every foreseeable industry in the world will be able to use smart contracts to help improve the speed and security of its record keeping. One industry in particular that stands to benefit enormously is the healthcare industry. Currently, the world's healthcare computer systems hold hundreds of millions of patient medical records. Despite the fact that these healthcare organizations have invested huge sums of money on security, still, the current access and storage methods are far more vulnerable to cyber attacks compared to the blockchain-based technology. Blockchain technology could allow the entire databases of personal health records to be kept secure. An added bonus is that the technology also facilitates the use of private key. That means only certain individuals can gain access. Some of the other blockchain smart contract use cases include their use in issuing prescriptions, storing receipts, general stock management, storing test results, and so on. Property ownership. Smart contracts have two huge uses when it comes to the property market. First, they can be used to record property ownership. Since the use of smart contracts is faster and more cost efficient, this makes them a much better alternative to existing systems. It also means that they can be used to record the ownership of all types of property from buildings, lands, to phones and watches. Number 2, elimination of any kind of middleman. Within the housing market, smart contracts can remove the need for expensive services such as those provided by lawyers and housing brokers. This new technology also means that for the very first time, sellers have the ability to handle transactions completely by themselves without the need of any middlemen. Mortgages. The property market also stands to benefit from cheaper, faster and more secure smart contract-based mortgage transactions. Not only will this allow buyers to get into the property quicker, but it will also help to make the entire process a little less of a headache. Smart contract mortgages would allow both the parties to digitally agree to the sale before processing the payment. Once this is done, the contract would update the property ownership details to reflect the change of ownership. Since the process would require unique key code authorization on behalf of the original owner, it will make the whole process more secure and reduce instances of fraud. Insurance. The next sector that stands to benefit from smart contracts is the insurance sector. The insurance industry spends tens of millions of dollars each year on processing claims.
Not only that, it actually loses millions of dollars to fraudulent claims as well. Aside from supporting the initial insurance policy, smart contracts could also help to improve the process of claim processing in many ways. They could allow error checks and determine payout amounts based on the set of criteria that takes into account the kind of policy that was held by the individual or the organization. Once again, reduced processing times, a dramatic reduction in errors, and cheaper costs are among the main benefits of smart contracts. In longer term, smart contracts could be used in tandem with Internet of Things enabled vehicles to allow for the pay-as-you-go insurance policies and the immediate activation of claims after an accident. Information such as driver licenses, driving records, accident reports, and policy details could be immediately processed to facilitate speedy payouts that would benefit both the parties. Medical research. The medical research industry will benefit from similar advantages as the healthcare industry. First of all, highly sensitive data such as patients' records could be transferred between departments, research centers, after having been securely encrypted via blockchain technology. Since many of the patients participating in medical research have sensitive medical conditions that they often wish to remain private, keeping these records secure is very essential. Likewise, medical research companies have enormous amount of data which includes test results and new drug formulas that they need to keep safe. This could be secured with the use of smart contracts, should they need to divulge any of this information to a third party for any reason. Voting. Well, smart contracts can be the smart formula that can be used for elections. Allegations of fraudulent activities have occurred in many elections of the past. Despite using computer systems that in some cases cost millions of dollars, fraudsters find increasingly imaginative ways to manipulate them. Well, here comes smart contract as a smart savior. Smart contracts are a simple and cost-effective solution to this problem. They can be used to validate a voter's identity and record their vote. This information could then be used to initiate an action after all voting had ceased. Since the blocks within a blockchain are impossible to alter once they have been recorded, manipulation of this record would be very difficult. Peer-to-peer transactions. Smart contracts can be used for a whole range of peer-to-peer transactions. This reasoning is what led to the creation of the Ethereum project and other such companies. Users of all shapes and sizes could use these platforms to create and agree on smart contracts. These contracts then remain active until a set of agreed conditions are met. Once the smart contract is happy that all the conditions have been met, it then allows the remaining portion of the agreement to be fulfilled. Typically, this is the transfer of money, but this isn't always the case. So far, smart contracts have been used for everything from launching ICOs to selling goods on the internet. Various companies are also using smart contracts to secure services of development teams and other outsourced companies. The possibilities of peer-to-peer smart contracts are literally endless. Theoretically, this could replace many of the existing roles that are currently fulfilled by currency. Product development. Another exciting use of smart contracts is to keep a ledger regarding the stages of development of a product. A huge part of the appeal of smart contracts is their ability to keep information secure and to prove its origins. A company that has invested huge amounts of money into developing a project obviously doesn't wish for the information to be stolen. Generally, the only route to justice when information is stolen is a lengthy court process, something which most companies don't have time and money to go through.
Now, when it comes to intellectual property such as ideas, you don't need to look as far as the never-ending patent claims between Apple and Samsung just to see how important being able to prove ownership really can be. The list of industries that could benefit from this new technology is huge, given the fact that smart contract support and secure product development, the kind of industries involved could range from a small startup to a large tech company such as Microsoft or Amazon. Stock taking. Supply chains are another area of business that can benefit from blockchain-based smart contracts. Internet of Things devices could be used throughout the supply chain to record each step a product takes. Smart contract supply chains could theoretically, virtually eliminate in-house theft, as managers would be able to trace a missing product back to the exact time and place that it went missing. On huge supply chains, such as those found in large warehouses, these smart contracts would enable managers to see real-time stock levels and the time it takes for a product to move through the supply chain. Managers could use this data to adjust stock levels and develop new working practices to improve delivery times. For supply chains that operate in several different locations or companies, smart contracts could do all of the above and even initiate automating reorders and payments for order already received. Such information as contained in these contracts could also be used to help with determining up and coming busy periods and even which products to stock at different times of the year. So we see smart contracts are the most exciting thing to have come from the blockchain technology so far. Smart contracts really do have the power to take our lives out of the hands of institutions such as banks. Since we can use smart contracts to exchange something as simple as labor or more complex things such as loans, they will gain in popularity and the number of these services will grow exponentially. The technological advantages of smart contracts will help to speed up transaction times, lower costs, and even make processes much easier and stress-free. And when smart technology is present in the cars we drive, things we use, and help determine the choices that we make, the world could be a much more secure and a happy place to live. For all this interesting content from around the world of digital currencies and blockchain technology, keep watching your favorite channel, Crypto TV. Like, comment, share, and subscribe. I'm Vinita Chatterjee, signing off. नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स। उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी, लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ, एनएफटी की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है।
लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टोपंक्स की लंका में आग कैसे लगी। दरअसल क्रिप्टोपंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी। 2017 में जब क्रिप्टोपंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे। देखते देखते क्रिप्टोपंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा। जे-ज़ी, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे। एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टोपंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप याcht क्लब ने एंट्री मारी। अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और एनएफटी होल्डर्स को क्रिप्टोपंक्स की खामियां चुभने लगी। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टोपंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी। जैसे कि बोर्ड एप के एनएफटी ओनर्स को एनएफटी के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। लेकिन क्रिप्टोपंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे। लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टोपंक्स के एनएफटी ओनर्स को आईपी, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं। क्रिप्टोपंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही एनएफटी अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। क्रिप्टोपंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर एनएफटी है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है। इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप याcht क्लब ने 2 और फ्री एनएफटीज लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप याcht क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके साथ ही एनएफटी होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड एप याcht क्लब अपने एनएफटी होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टोपंक्स के एनएफटी होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टोपंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव एनएफटी प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोपंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड एनएफटी तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड एनएफटी को रैप्ड V1 एनएफटी करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लार्वा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया। लार्वा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लार्वा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के आईपी को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो एनएफटी होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू आईपी के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो एनएफटी होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार एनएफटीज का क्रेज परवान चढ़ रहा है,
उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। રઈસમાં શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી NFT નો ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્વાણ AKA પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી NFTs એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસી હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી NFT જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક NFT ક્રિએટ કેમ ના કરું. સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી NFT લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ NFT. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ, તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4,100ની એક ટોયલેટ પેપર રોલની NFT ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જ જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર NFT USAની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની 4મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ NFTની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે. NFT એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી NFT ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મેન કંપની ઈચ NFTની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસ રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ, ચેરિટી કરવાનો આ જરા અતરંગી રસ્તો છે, નહીં? તો આ કંઈ નથી. નેક્સ્ટ વિયર્ડ NFT નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ NFT નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન NFT.
આ NFT વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક NFT આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી NFT બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે $1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી ક્રેઝી રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે. સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની NFTને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7,65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો? તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાઝ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ. ઓકે, થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ NFT નું નામ છે સેલ યોર સોલ NFT. Yes, that's why I called it weird. Recently 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને NFT નો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની NFT મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ NFT માર્કેટ પ્લેસ OpenSea ઉપર પોતાના સોલની NFT લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલ એ વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ NFT સેલ કરવામાં આવી છે. એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાનશેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ NFT સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી NFTના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા Welcome to the Coin Monitor. This is Manoj Dhara. So cryptocurrency markets are trading higher. So the retail traders are making the most of this current fall. So and are on the buying spree. The proof of this comes from the Glassnode data showing that the wallet holding less than 1 Bitcoin scooped up 60,460 Bitcoins in June at the most aggressive rate in the history. That's what the data is showing. So there is one more broader concern as far as the market is, the falling market is concerned. So data shows that the ProShare Bitcoin ETF grows over 300 in 1 week. So however, on
this is not everyone is bullish on the Bitcoin prospects in the short term. So according to the Arkham Research, the ProShares Short Bitcoin Strategy, which is the ETF, so BITI, the first exchange traded fund to be short Bitcoin has increased in the short exposure by more than 300% since the last week. So an ETF or exchange traded fund provides investors with an indirect exposure to an underlying asset. That's what the bases are. This can be useful when investing in commodities or cryptocurrencies, which can be difficult to transfer or store. So BITI, however, is structured in a manner that its performance is inversely correlated to the S&P CME Bitcoin Future Index. So in other words, the investors profit when the price of Bitcoin drops. So that's what the anticipation and hence the product. So Agro Blockchain, the latest crypto mining firm, has dumped its Bitcoin. So after selling $15.6 million in Bitcoin, so Agro is the second crypto miner to announce that it has sold more coins than it mined last month. So according to a research update, Agro has sold nearly around 637 Bitcoins in June at an average of $24,500. So bringing its total revenue from the Bitcoin traded last month to 15.6 million. Please remember, Bitfarm was the other miner, big miner, who has sold roughly around 3,000 Bitcoins on a broader concern as far as the liquidity market is concerned. When we have seen Celsius and Three Arrow Capital are filing for bankruptcy and heading southwards. So there is a big drought as far as the liquidity is concerned in the market. So as of June 30th, Agro holds 1,935 Bitcoins, 210 of which are Bitcoin equivalents. That's what the research has said. It has an outstanding balance of $22 million on the Bitcoin backed to Galaxy Digital loan. So that is the reason why it has taken the market route and it sold its Bitcoin holding rather than going for any lender. So in another development, DappRadar report has revealed that NFT has painted a bright picture amid the crypto market gloom. So what this report is saying, we will show you. So DappRadar's latest report has showed that the NFT space and blockchain gaming in Q2 2022 has shown better performance and resilience to the bear onslaughts. That's what markets are falling, but there is a sign of optimism as far as the NFT market is concerned. That's what the DappRadar report is showing. Although there is a slowdown quarter on quarter, the year-over-year trend remains bullish for NFTs. So overall trading volume and sales account for 533% jump and a 59% respectively from Q2 of 2021, the report has mentioned. So the market cap of Ethereum's top 100 NFTs plunged to collapsing value of Ethereum. The market is going, Bitcoin is down, and the major attribute is towards the falling prices of Ethereum. That's what the report is highlighted. So, and then another development, Ethereum has jumped 5%, following Ethereum's Sepolia testnet merge successful, and it is moving. And the next move is to Gorl next. On Wednesday, June 6th, Ethereum developers successfully conducted the merge on the testnet, taking the Ethereum network to a step closer to the proof of stake. That is the reason why the coin is climbing. So Sepolia's proof of work chain, also known as the execution layer, merged with the proof of stake beacon chain, also known as the consensus layer. So the management has also highlighted that it also paves the way for the implement the merge on the Gorl testnet. So this is what there was a broader concern as far as the merge is concerned. Is it happening or is it not happening? And the management has replied to the market in this manner. So similarly, Ethereum Layer 1 competitor Avalanche has reported a 15% jump. This is another development which we are highlighting, a 15% jump in the NFT trading volume. So Solana's marketplace dApps are gaining traction as they offer 0% listing fees and only 2% trading fees. That is the big development and a matter of update as well. So Bitcoin, the world's biggest cryptocurrency, was trading higher by 2.4% and was trading at $20,480. Ethereum too traded higher at 4.7%, was at $1,180. IC15 index of cryptocurrencies was up by 2.8%, was trading at 27,586 points.
Binance BNB was up by 0.5%, was trading at $237. Solana Sol was up by 3.6% and it was trading at $37.2. Ripple's XRP token was higher by 2.4% at $0.32. Cardano's ADA token was higher by 2.3% to trade at $0.46. Avalanche AVAX was trading at $19.3, 6.3% higher. Shiba Inu was up by 2.2%. Polkadot was up by 2% to trade at $7. Doge, the popular meme coin, is up by 3% and was trading at $0.07. Last on the list is Polygon Matic, trading up by 2.3%, was trading at $0.52. So let's get a technical perspective view from what we have gathered from the reports. So according to senior market analyst Jim, Bitcoin US dollar prices are near steady in nearly US trading on Thursday. So the price downtrend on the daily bar chart has stalled amid the recent sideways grind in the price action. That favors the bulls, but the bears still have the overall near-term technical advantage. That's what the market analyst is saying. Look for the more choppy trading in the near term. That's what he has advised to. So however, amid repeated calls for the Bitcoin USD pair to revisit levels not seen since quarter 4 2020, one simple historical trend is now saying that the pair has already seen in the latest macro lows. That's what his analysis says. So the 3-day chart, popularly known by the Wolf, argued that the 100-day moving average cross the 200-day moving average will act as a price floor signal, just like a previous bear markets. So specifically, the crossover of the two moving averages is due on by July 15. That's what the estimate is. In just a week's time, after which future trajectory could be confirmed. So should Bitcoin avoid major downside in the meantime, that is $17,600 will thus remain as the latest long-term BTC price bottom. That's what the analysis have highlighted. So if we talk about Ethereum, market analysts are saying that are attributing this rise to only one reason, wherein the Ethereum developers successfully conducted the merge on the Sepolia testnet. So taking the Ethereum's network to a step further closer to the proof of stake. That's what we have already highlighted in this segment. So the news brought some cheer to the Ethereum investors as the Ethereum price jumped 5% in the last 24 hours, which is currently around $1,170. The world's second largest cryptocurrency has been under major selling pressure earlier this week. Over the past week, Ethereum has hit a high of $1,194 and a low of 1,009 levels. The cryptocurrency overall has moved down during the past 3 months. Over the past 90 days, it has fallen to as the current price of $1,170. As of now, a total of 121,447,719 Ethereum have been mined. That's what the data is suggested. Unlike Bitcoin, Ethereum does not have a maximum supply. So market analysts are, however, mentioning that a level of $1,250 as a resistance level and a closing above it will take it to a level of $1,800. That's what the market analysts are attributing to. So this is not an advice from our side. This is just a technical view from reports, whatever they are suggesting. This will help you to make your investment decisions better. That's all there is in today's The Coin Monitor. This is Manoj Dara signing off, but keep watching Crypto TV for more such interesting updates. Thank you. आप आ गए। वैसे तो मैं कबूतरों को बुला रही थी। अच्छा हो गया आप आ गए। देखी मेरी प्रॉपर्टी कैसी लगी?
अरे ये लैंड, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने डिसेंट्रलैंड पे खरीदी है 15,000 माना में। सच में? क्या? नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकती, कुछ उगा भी नहीं सकती, रियल में घर भी नहीं बना सकती, लेकिन मैं यहाँ एक वर्चुअल मूवी थिएटर बना सकती हूँ या एक वर्चुअल मॉल बना सकती हूँ, और कुछ नहीं तो हायर वैल्यू पर इस लैंड को बेच सकती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल, है ना? अरे अरे, कंफ्यूज मत होइए, ये 21st सेंचुरी है, यानी डिजिटल का जमाना। यहाँ सब कुछ होता है वर्चुअली, और अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब सब कुछ हो रहा है ब्लॉकचेन पर। बचपन में हम क्या खेलते थे? घर घर, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स। चलिए थोड़े और बड़े हुए तो मोनोपोली खेली, जिसमें फेक करेंसी थी, टॉय हाउस, ऑफिस, फायर स्टेशन, एयरपोर्ट एटसेट्रा। लेकिन अब वर्चुअल गेमिंग के जमाने में ये सब ऑनलाइन होगा। इस वर्चुअल गेम के लिए करेंसी भी डिजिटल होगी, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर फिएट करेंसी में होगी। दैट्स द पॉपुलैरिटी एंड पावर ऑफ डिजिटल यूनिवर्स। इन दिनों यूथ में गेमिंग का गजब का क्रेज है, ऐसा कि ब्लॉकचेन पर पूरा गेमिंग यूनिवर्स बन गया है। और आजकल सबसे ज्यादा हिट है डिसेंट्रलैंड। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना एक वर्चुअल वर्ल्ड और कम्युनिटी है, जहां यूजर्स लैंड के प्लॉट्स, आर्टवर्क्स और NFTs डेवलप और ओन करते हैं। यहाँ एक बार आपने लैंड खरीद लिया, उसके बाद देयर इज लॉट्स यू कैन डू विद इट। यहाँ आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि डायनामिक 3D सीन्स। Why stop there? यहाँ आप लैंड रिलेटेड सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टूरिज्म एटसेट्रा। डिसेंट्रलैंड की पॉपुलैरिटी का अच्छा खासा श्रेय फेसबुक को भी जाता है, क्योंकि मेटावर्स के लिए डिजिटल रियलिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने के इरादे से जब फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा, तो जाहिर है मेटावर्स की दुनिया में बड़ा उछाल आया, और इसका सीधा फायदा हुआ डिसेंट्रलैंड को, क्योंकि डिसेंट्रलैंड एक स्पेसिफिक टाइप का मेटावर्स है जो ब्लॉकचेन यूज करता है। यहाँ लैंड और बाकी आइटम्स NFT के तौर पर खरीदी और बेची जाती है। डिसेंट्रलैंड के डेवलपर्स एस्टेबान ऑर्डानो और अरी मेलिक ने एक ऐसी वर्चुअल स्पेस क्रिएट की है जहां डिजिटल रियल एस्टेट पार्सल्स, आइटम्स और कस्टमाइज्ड एसेट्स माना में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। डिसेंट्रलैंड की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है माना, जिसे कई एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो या फिएट करेंसी पर लिया जा सकता है। डिसेंट्रलैंड इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अगर आप सेकेंड लाइफ गेम खेलते हैं और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी करते हैं, तो आपको डिसेंट्रलैंड बेहद पसंद आएगा। 2016 में 2D के साथ इसकी शुरुआत हुई और अब 3D में ये बहुत ज्यादा हिट है। Unlike ऑनलाइन गेम्स, यहाँ प्लेयर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द रूल्स ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड। इतना ही नहीं, DAO यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टोकन होल्डर्स को इन गेम और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में डायरेक्ट वोट करने की इजाजत भी देता है ये। लेकिन नए प्लेयर्स जो NFTs में इंटरेस्टेड है, उनके लिए काफी एंट्री बैरियर्स होंगे, जैसे कि इथेरियम गैस फीस की वजह से कई कॉस्मेटिक आइटम्स का प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। साथ ही यहाँ लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, जिसके लिए प्लेयर्स को $10,000 से भी ज्यादा खर्चने पड़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे जैसे गेमिंग का क्रेज बढ़ रहा है, गेमर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गेमिंग यूनिवर्स भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले एक साल में डिसेंट्रलैंड की नेटिव टोकन माना में कई गुना का उछाल आया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए बताते हैं आपको। डिजिटल वर्ल्ड की एक कहावत है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और डिसेंट्रलैंड तमाम ट्रेंड्स को बखूबी फॉलो करता है, जिससे इन टर्न डिसेंट्रलैंड और माना को फायदा पहुंचता है। पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे माना जैसे ऑल्ट कॉइन्स को फायदा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, लेट फरवरी में लॉन्च हुए ग्रे स्केल डिसेंट्रलैंड ट्रस्ट की मैनेजमेंट के अंडर फिलहाल करीब $49 मिलियन है। यानी इंसेप्शन से लेकर अब तक इसने लगभग 1000% की ग्रोथ देखी है, which is phenomenal। पॉइंट नंबर 3, डिसेंट्रलैंड की NFT वैल्यू में भी बड़ा जंप आया है, जहां किसी भी लैंड पार्सल के लिए मिनिमम 11,750 मानास चुकाने पड़ते हैं, यानी कि $37,012। पॉइंट नंबर 4, वर्चुअल इवेंट्स। पिछले कुछ महीनों में डिसेंट्रलैंड पर हुए वर्चुअल इवेंट्स के चलते हजारों नए यूजर्स इसके साथ जुड़े हैं।
जाहिर है ऐसे में माना का यूज भी ज्यादा हुआ है, यानी ज्यादा बढ़ा है। डिसेंट्रलैंड के एक ऐसे ही वर्चुअल कॉन्सर्ट पे जुड़े रोहस नागपाल, जो कि एक ब्लॉकचेन कैंपेनर और प्राइम चेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। डिसेंट्रलैंड के बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनसे। So I am a big fan of metaverse and I started using the metaverse somewhere in 2003 when Second Life came up, and then I remember in 2006 there was a rock show by a band called Duran Duran which happened in the metaverse of Second Life. So I am a very big fan of it, and when I look at movies like Matrix, Avatar, you begin to understand, or Inception also, how cool the metaverse can be. And I think with Facebook entering into the field, Microsoft entering into the field, we can expect a lot of people to start using the metaverse. Now, inside this metaverse, there is going to be demand for buying land, making a house on top of it. Then in the house, you are going to put furniture, wallpapers, you are going to buy clothes. So it is going to create a complete virtual clone of yourself. All right. And I think it's really, really cool, but we have to also understand all the platforms will not succeed. So many parties are trying to get in, it's just going to be one or two which will succeed. So you need to be very careful which one you are going to be betting on. डिसेंट्रलैंड के क्रिएटर्स ने बहुत सोच समझ के इसे क्रिएट किया है। अपने यूजर्स और प्लेयर्स की नफ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं ये, इसीलिए डिजिटल यूनिवर्स की फ्यूचर नीड्स और ट्रेंड्स को समझते हुए डिसेंट्रलैंड ने अपने व्हाइट पेपर में 5 यूज केसेस शामिल किए हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन। यहाँ यूजर्स एप्स और 3D सीन्स क्रिएट कर सकते हैं डिसेंट्रलैंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से, दैट प्रोवाइड्स रिचर इंटरैक्शन। Point number 2, content curation. Neighborhoods have developed in Decentraland, attracting like-minded fans and growing organic communities. Point number 3, advertising. नेबरहुड में प्लेयर ट्रैफिक की बदौलत एडवर्टाइजिंग ब्रांड स्पेस खरीद रहे हैं और बिलबोर्ड सेटअप कर रहे हैं। वाओ। Point number 4, digital collectibles. NFT items are collected, created and traded in the Decentraland marketplace, giving users ownership rights. Point number 5, social. Decentraland के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितनी कम्युनिटीज है या फिर जितने भी ऑफलाइन ग्रुप्स हैं, उन्हें फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्टिव वे में सोशलाइज करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब जिस तरह ब्लॉकचेन पर ऑनलाइन गेमिंग का यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मेटावर्स और डिसेंट्रलैंड की कामयाबी आने वाले सालों में सोच से परे होगी। अगर आप भी गेमिंग के शौकीन हैं, तो डिसेंट्रलैंड में शायद आपकी दिलचस्पी भी हो सकती है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, सो गो गिव इट अ ट्राई। ऐसी ही और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. હેલો, કેમ છો? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી, AKA પારો. તેવા આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી જોડાયેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બેસિક ફેક્ટ્સ. ઇન શોર્ટ, ક્રિપ્ટોની ABCD. આજે પોરબંદર હોય કે પોર્ટલેન્ડ, ન્યુયોર્ક હોય કે નવસારી, ચારે બાજુ ક્રિપ્ટોકરન્સીના તૂફાની પ્રોફિટનું જ ડિસ્કશન ચાલે છે. શાકભાજીની લારીથી લઈને લગનમાં ગીત ગાતી છોકરીઓ ક્રિપ્ટોની જ વાતો કરે છે. એલી, સાંભળ્યું?
ફલાના ઢીબકાના ભાઈ રાતોરાત ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને કરોડપતિ બની ગયા. તો કોઈ કહે ના, હવે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરાય, ક્રિપ્ટોનું કંઈ નક્કી નહીં, પૈસા ડૂબી પણ જાય. ક્રિપ્ટોકરન્સી રિલેટેડ ઇનફ નોલેજ ન હોય તો આવા ડાઉટ્સ થવા નેચરલ છે. આ કંઈ સ્ટોક માર્કેટ નથી કે સવારે ટ્રેડિંગ સ્ટાર્ટ થાય અને સાંજે પતી જાય. ક્રિપ્ટોકરન્સીની મની ટ્રેન તો દિવસ રાત ફૂલ સ્પીડમાં ભાગે. ચલો આપણે ક્રિપ્ટોકરન્સી રિલેટેડ તમારા ડાઉટ્સ એક એક કરીને ક્લિયર કરતા જાય. તો ફર્સ્ટ છે, ક્રિપ્ટોકરન્સી એટલે શું? સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહું તો ક્રિપ્ટોકરન્સી એટલે ડિજિટલ એસેટ્સ. દેશી હોય કે એનઆરઆઈ, કોઈ એવું ગુજરાતી ઘર નહીં જ્યાં લોકો સ્ટોક્સમાં કે બોન્ડ્સમાં કે કમોડિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરતા હોય. બસ ડિજિટલ એસેટ્સ ફંડ એની જેમ જ છે. બિઝનેસ તો આપણા ગુજરાતીઓના લોહીમાં છે. સિમ્પલ ફંડા છે. ક્રિપ્ટોકરન્સીના ભાવ ઓછા થાય એટલે બાય કરો અને વધી જાય તો સેલ કરી નાખો. થોડી સાવધાનીથી ટ્રેડિંગ કરો અને પ્રોફિટ મળીએ પછી જલસા કરો. ઠીક છે ને? તો હવે તમારા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ મૂવ કરીએ. ક્રિપ્ટોકરન્સી સ્ટોર ક્યાં અને કેવી રીતે કરવી, રાઈટ? જેવી રીતે આપણે પૈસાને આપણા પર્સમાં કે બેંક અકાઉન્ટમાં રાખીએ છીએ અને સ્ટોક હોય તો ડીમેટ અકાઉન્ટમાં રાખીએ, તેવી જ રીતે ક્રિપ્ટો એસેટ્સને ડિજિટલ વોલેટમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. આજકાલ આપણે આપણા મોબાઈલમાં પણ પાસવર્ડ રાખીએ છીએ. હસબન્ડને વાઈફના મોબાઈલના પાસવર્ડ ના ખબર હોય અને વાઈફને હસબન્ડના પાસવર્ડની ખબર ના હોય. બસ આવી જ રીતે ઓનલાઈન ડિજિટલ વોલેટમાં પણ પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટેડ રાખવાનું છે. ઘણાને લાગે આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બટ લેટ મી ટેલ યુ, આ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટિકટોક યુઝ કરવું જેટલું જ ઇઝી છે. ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા પાસવર્ડ બીજાને ખબર ના પડે. બીજાને પાસવર્ડ ખબર પડે તો એ ચૂટકીમાં તમારી કરન્સી પોતાના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. એટલે આખી કરન્સી સાફ કરી શકે. અને જો તમે ભૂલી ગયા તો પતી ગયું. કેમ કે ડિજિટલ વોલેટમાં પાસવર્ડ રિકવર કરવાનો ઓપ્શન નથી. જો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા તો તમારા વોલેટ ફોરએવર લોક થઈ ગયા અને તમારા લાખોના બાદ થઈ ગયા. મેક શ્યોર કે ભૂલો ભાલે બીજું બધું, પણ ડિજિટલ વોલેટના પાસવર્ડને ભૂલશો નહીં. હવે જોઈએ કે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે. ક્રિપ્ટોકરન્સીની ખરીદી ક્યાં અને કેવી રીતે કરવી? જેમ રૂપીઝ, ડોલર્સ, યુરોના આ બધી કરન્સી છે, એવી જ રીતે બિટકોઇન, ઇથેરિયમ, ડોજકોઇન ક્રિપ્ટોકરન્સી છે. જેવી રીતે સ્ટોક બાય કરવામાં ડીમેટ અકાઉન્ટ ખોલવું પડે, એને સ્ટોક એક્સચેન્જથી પરચેસ કરવું પડે, તેવી જ રીતે તમારા પસંદના ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જના એપ મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરી 5 મિનિટમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરી શકો છો. બસ તમારું કેવાયસી ડોક્યુમેન્ટ્સ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરી, લોગિન ડિટેલ્સ રજીસ્ટર કરી, એક્સચેન્જમાં થોડા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી તમે ધનાધન ક્રિપ્ટોકરન્સીનું ટ્રેડિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, ક્યાં કોઈનની ખરીદી કરવી? રાઈટ નાઉ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં 14,000 કરતાં વધારે ક્રિપ્ટો કોઇન્સ અને ટોકન અવેલેબલ છે. તમે કોઈ પણ કોઈન પરચેસ કરી શકો છો. બધાના મનમાં એક જ ક્વેશ્ચન હોય છે, કઈ ક્રિપ્ટોકરન્સી પરચેસ કરવાની? તમે શેર પરચેસ કર્યા પહેલા તે કંપની પર થોડું રિસર્ચ કરો છો ને? બસ તેવી જ રીતે કોઈ પણ ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા પહેલા તે પ્રોજેક્ટની કુંડલી કાઢી લો. કોઈ પણ ક્રિપ્ટોકરન્સીના પ્રોજેક્ટ ડોક્યુમેન્ટને ડાઉનલોડ કરી વાંચી લો. આ દસ્તાવેજને વ્હાઇટ પેપર કહેવાય છે. લગન પહેલા કુંડલી મેળવી છીએ ને? બસ ક્રિપ્ટોની કુંડલી એટલે વ્હાઇટ પેપર. એક વાતના ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈ ફ્રેન્ડે કહ્યું અથવા પાનવાલા કે રિલેટિવ્સ પાસેથી ટિપ મળી એટલે ક્રિપ્ટોમાં બ્લાઇન્ડલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ નહીં કરી દેતા. ક્રિપ્ટો એસેટની કુંડલી વાંચો, તેના રિલેટેડ બ્લોગ્સ, ડિસ્કશન્સ, વેબસાઇટ્સ પર પોતાના રિસર્ચ કરી પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ડિસિઝન લો. ઓકે,
હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ થાય કે ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં તમારે ટ્રેડર બનવું છે કે ઇન્વેસ્ટર? જેમ સ્ટોક માર્કેટમાં અમુક સ્ટોકનું આપણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરી સેમ ડે સેલ કરી નાખીએ છીએ અને અમુક બ્લુ ચિપ કંપનીના સ્ટોક્સ આપણે સિપ થ્રુ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે પરચેસ કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે તમારે પોતાની રિસ્ક એપેટાઇટ પ્રમાણે નક્કી કરવાનું કે કઈ ક્રિપ્ટોકરન્સી તમારે શોર્ટ ટર્મ માટે પરચેસ કરવી છે કે લોંગ ટર્મ માટે. બીજી એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, ક્રિપ્ટો માર્કેટ બહુ જ વધારે વોલેટાઇલ છે. જેમ કોઈને સ્પાઇસી ફૂડ ગમે, તે કોઈને સ્વીટ ફૂડ ખાવું ગમે, બધાના ટેસ્ટ અલગ અલગ હોય છે. તેવી રીતે ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં એન્ટર કર્યા પહેલા પોતાના ટેસ્ટ ચાખી લેવો કે તમારે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર બનવું છે કે લોંગ ટર્મ હોલ્ડર બનવું છે. બધા માર્કેટની જેમ ક્રિપ્ટો માર્કેટના રિસ્ક અને રિવોર્ડની ઇક્વેશનને સમજી વિચારીને ડિસાઇડ કરવું કે તમારા સહેવાગની જેમ હિટિંગ કરવી છે કે રાહુલ દ્રવિડની જેમ બેટિંગ કરવી છે. અને ફાઇનલી ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, ક્રિપ્ટોકરન્સી લીગલ છે કે નહીં? કહેવાત છે ને, અડધો ઘડો વધારે છલકાય. અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન રૂમર બની ક્રિપ્ટોકરન્સીની રિલાયબિલિટી અને લીગાલિટી રિલેટેડ એટલી બધી નેગેટિવિટી સ્પ્રેડ કરી દે છે કે લોકો આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને પૂરી રીતે સમજી નથી શકતા. લીગાલિટીની વાત કરીએ હોય તો આજ દિવસ સુધી દુનિયાની કોઈ પણ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રીએ ક્રિપ્ટોકરન્સીને બેન નથી કરી. ઇન્ડિયામાં પણ ક્રિપ્ટોકરન્સીનું જ નવું બિલ આવી રહ્યું છે. રિપોર્ટ્સ એમ કહે છે કે ગવર્મેન્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી પર પ્રતિબંધ નહીં મૂકે, ફક્ત નિયંત્રણ કરશે. જેમ સ્ટોક એક્સચેન્જના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન છે, એમ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જના પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન થવું જરૂરી છે. ધેટ્સ ઇટ. ઇન શોર્ટ, ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇઝ ધ ફ્યુચર. આમાં કોઈ શક નથી, કેમ કે તેની અંડરલાઇંગ બ્લોકચેન ટેકનોલોજીથી વધારે સેફ અને રિલાયબલ સિસ્ટમ છે જ નહીં. ફ્યુચરમાં આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, લેન્ડના દસ્તાવેજ બધા જ બ્લોકચેન ટેકનોલોજી પર આવી જાય. ઇટ્સ જસ્ટ ધ મેટર ઓફ ટાઈમ. કારણ કે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી તો રહેવાની જ છે. તો દોસ્તો, ચાલો હવે હું રજા લઉં છું. તમારી ક્રિપ્ટો દોસ્ત અને હોસ્ટ પાર્વતી એકે પારો. ફરી જલ્દી મળશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत, तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटिल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट, जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात.
मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5. सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉकवाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहेत. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटजी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. Today we are having a guest on the show, Mr. Lakshman. So how exactly BitBatwa is functioning? Cryptocurrency exchanges in India, I think they are exploring P2P options to allow their users to buy cryptocurrencies. We are not allowing people to buy cryptocurrency. People can use our gateway to accept payment in cryptocurrency. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ. देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. माइंड.
હેલો, કેમ છો? મજામાં? સ્વાગત કરું છું તમારા ક્રિપ્ટો ટીવી પર. હું છું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી AKA પારો અને ફરીથી લઈને આવી છું ડીડ યુ નો ફેક્ટ્સના ન્યૂ એપિસોડ. શું તમને ખબર છે કે એક બિટકોઇનની આજની વેલ્યુ અને 2010ની વેલ્યુમાં કેટલો ડિફરન્સ છે? જવાબ સાંભળશો તો લિટરલી ચક્કર આવી જશે. 2010માં જેટલા બિટકોઇન્સથી ઓનલી 2 પિઝા લીધા હતા ને તેટલા બિટકોઇન્સથી આજે આપણે 1 સિટી પણ બાય કરી શકીએ. સાચે, આઈ એમ નોટ કિડિંગ. અરાઉન્ડ 11 years ago મિસ્ટર લાઝલો હેનિયક્સ ભાઈ નવું ક્રિપ્ટો રમતા શીખ્યા અને 22 મે 2010માં આ ભાઈએ પૂરા 10,000 બિટકોઇન્સથી પાપા જોન્સના 2 પિઝા લીધા હતા. એ સમયે બિટકોઇનની વેલ્યુ $0.0025 હતી, એટલે આપણા 1 રૂપિયાના ઓલમોસ્ટ 5 બિટકોઇન્સ આવે. બિટકોઇન્સ એટલે એટલા સસ્તા હતા. મને પણ થાય છે કાશ આપણે ત્યારે બિટકોઇન્સ લઈ લીધા હોત તો લાઈફ સેટ થઈ જતી યાર. એનીવેઝ, કમિંગ બેક ટુ ધ પિઝા વેલ્યુ. આજે એક બિટકોઇનની વેલ્યુ એપ્રોક્સિમેટલી 24 લાખ છે. એ ભાઈને પિઝા લેવાની શું જલ્દી હતી? આવા ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણીવાર મિસ્ટર હેનિયક્સને પૂછવામાં આવ્યું તો એમને શું જવાબ આપ્યું ખબર છે? ભાઈએ કહીએ છે, મને થોડી ખબર હતી કે ડિકેડ પહેલા માઇન કરેલા બિટકોઇન્સની વેલ્યુ આજે ચાંદ સુધી પહોંચી જશે. હવે મને કોઈ રિગ્રેટ્સ પણ નહીં. આ સિચ્યુએશન્સમાં બેચારા બીજા બધા શું કહી શકે? હા, ક્રિપ્ટો લવર્સ અને ક્રિપ્ટો બુલ્સ ક્રિપ્ટોકરન્સીની ગ્રોથને રિફ્લેક્ટ કરવા માટે 22 મેને બિટકોઇનના પિઝા ડે તરીકે સેલિબ્રેટ કરે છે. ક્રિપ્ટો એવોલ્યુશનના કી મોમેન્ટમાં મિસ્ટર હેનિયક્સનું નામ અમર થઈ ગયું છે અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના ઇન્વેન્ટર મિસ્ટર સાતોશી નાકામોટોની જેમ આમને પણ 11 વર્ષ પહેલા શું ખબર હતી કે એક બિટકોઇનની વેલ્યુ આજ 24 લાખ રૂપિયા થઈ જશે, જે ત્યારે તેમની વેલ્યુ $400 હતી. અને વન મોર થિંગ, પાપા જોન્સના 2 પિઝાના બદલામાં જેમને 10,000 બિટકોઇન્સ લીધા એ કોણ હતા અને એમને શું કર્યું બિટકોઇનના? તો એ મહારથીનું નામ છે મિસ્ટર જેરેમી સ્ટુડીવેન્ટ. એમને પણ તરત જ 10,000 બિટકોઇન્સ ડમ્પ કરી દીધા. વાહ, હવે શું કહેવાય? હા, બટ ટેકનિકલી હેલ્ધી ઇકોનોમી માટે કરન્સી જેટલી સર્ક્યુલેટ થાય તેટલું સારું. સો 10,000 બિટકોઇન્સ વન્સ અગેન સર્ક્યુલેશનમાં આવી ગયું તો સરસ જ કહેવાય ને. આ છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત. હવે તમે સમજી શકો છો કે ડે બાય ડે લોકોમાં ક્રિપ્ટોની પોપ્યુલારિટી કેમ અને કેવી રીતે વધી રહી છે. વેલ, આજની ડીડ યુ નો એપિસોડમાં આટલું જ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક્સાઇટિંગ ક્રિપ્ટો ફેક્ટ્સ સાથે આપણે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો ટીવી. दोस्तों ने मजाक उड़ाया, गर्लफ्रेंड ने भी रोकना चाहा, लेकिन क्रिस्टोफर ने दाव लगाया. $26 से सीधा $15 करोड़ कमाया. जी हाँ, ये है एक्सीडेंटल मिलियनेयर की अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग कहानी. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट क्रिस्टोफर कॉच, जिसने बिना कुछ सोचे समझे 2009 में बिटकॉइन पर $26 लगाए. हालांकि $26 कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 2009 में ये वो वक्त था जब बिटकॉइन बस लॉन्च ही हुआ था और इसकी कोई खास कीमत नहीं थी.
इतना समझ लीजिए कि कोई कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से 100 बिटकॉइन खरीद सकता था। जाहिर है बिटकॉइन को तब कोई ट्रस्ट नहीं करता था। जब 2009 में क्रिस्टोफर ने बिटकॉइन पर $26 लगाने का मन बनाया तो उसके फ्रेंड्स ने उन्हें एक फेक कॉइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह दी। इनफैक्ट क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करने से रोका जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और जिसे एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि क्रिस्टोफर ने किसी की भी नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनी और ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके क्रिस्टोफर उसे अगले 4 सालों के लिए भूल गए। और फिर अचानक 2013 में जब मीडिया में बढ़ चढ़कर बिटकॉइन के चर्चे होने लगे तो क्रिस्टोफर को उनकी वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट याद आई। लेकिन फिर आगे कहानी में आया ट्विस्ट। क्रिस्टोफर अपने इनक्रिप्टेड बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके थे। फिर क्या था, पूरा दिन अलग अलग पासवर्ड के साथ जूझने के बाद आखिरकार उन्हें पासवर्ड याद आ गया। आप सुनकर हैरान होंगे, 4 साल बाद उनकी वो इन्वेस्टमेंट कुबेर का खजाना बन गई थी। वो $26 अब 5000 बिटकॉइन की वैल्यू रखते थे, जिसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन में की गई उनकी इन्वेस्टमेंट का महज 1/5 पार्ट यानी 1000 बिटकॉइंस बेचकर क्रिस्टोफर ने कमाए $886,000। वाह, मुझ पर कब होगी पैसों की ऐसी बारिश। चलो आएगा वो दिन भी। खैर, इन पैसों से क्रिस्टोफर ने ओस्लो नॉर्वे में एक अपार्टमेंट खरीदा। माना जाता है कि अब भी क्रिस्टोफर के पास करीब 4000 बिटकॉइंस मौजूद हैं और वो सही मौके की तलाश में है जब वो इसके एक और चंक से ह्यूमंगस प्रॉफिट कमाए। तब इसे क्रिस्टोफर का विजन कहें, उनकी गट फीलिंग कहें या एक स्मार्ट बिजनेस मूव दैट मेड हिम अ मिलियनेयर, या फिर जलने वालों की तरह कहें उन्हें एक्सीडेंटल मिलियनेयर बनाया। But he invested in Bitcoin when one could buy thousands of Bitcoins for $100 or less. Hope you like the story. हम आपके लिए और कई क्रिप्टो मिलियनेयर्स की कहानियां लेकर आते रहेंगे। I'm रुचि शर्मा. Keep watching Crypto TV. जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है दे स्टोर योर प्राइवेट कीज। तो अगर ये मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? नो, दिस इज द की व्हिच यू विल लूज ऑल योर मनी। ओह, हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना ह्यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि ह्यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचा आहे। पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे,
ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे. आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीनं हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे. हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल. याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल. मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन ॲक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या ॲक्सेप्टन्सला गती येणार आहे. आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदलात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते. We won't make any big promises, but we will do everything to make this work. Through all our disagreements and conflict, we hope to grow our understanding of each other and ourselves. These are the vows taken by Mr. and Mrs. Narasipuram on 15th of November 2021.
Now you would be wondering what is so special about these vows that I'm standing here and talking about it. Well. Then let me tell you that these are not just the vows taken during the Feras in Hindu marriage ceremony or in any church. These are the vows actually taken on blockchain. Hello and welcome to our show of fun facts. I'm your host Parvati Nirvan, aka Paro, with me having no deva in life, but I'm glad that this couple has found each other. And not just that, they have also immortalized their marriage on blockchain. Yes, you heard it right. And I have with me this cute couple who took the vows. Let's meet and greet them. Hello, Mr. Anil. Hello, Shruti. Welcome to our show and our channel, Crypto TV. Hi, Parvati. Hi, Parvati. How are you? How are you doing? Good. How are you? So I'm pretty excited, and let me just fire my first question. Who got the idea? Like, how did this whole journey of taking your marriage to a new platform that is on blockchain technology happened? Well, it was all Anil. It was his idea. It was his brainchild, and it was his passion. I'll ask him to convey more about it. Yes, I've been in the crypto space for a while, so I kind of been interested in the technology and how it can be used. And we got married in November last year. So as part of that, I thought that we could do something different. And I heard about this couple that did a blockchain wedding in the US. So I thought, why not give that a try? And it was especially appropriate given that given the times that we live in with the pandemic, we try to keep our wedding small and, limit the number of people as much as possible. And given the situation we're in, it just seemed appropriate to also do it in the blockchain. So that's how it came about. Did you guys face any difficulty like while executing the vows on blockchain? Like you share your journey, like how this whole thing happened. Like if anyone is looking forward to do something like you guys did, they will get a fair idea. And I'm sure you guys have inspired a lot of people. Sure. I would say just to describe what we did and how we went about it a little bit. We, like I said, we didn't want the big Indian wedding, and we didn't want to have a lot of people show up and avoid large crowds for obvious reasons. So we did a registered marriage, which is not that uncommon in India. So we went to the registrar's office and we signed the sort of offline ledger. And then, we came back home and we just got on a Google Meet. We invited some family and friends. We had a digital priest who helped officiate that Google Meet and the ceremony. And we had prepared these some things ahead of time, like setting up the wallets and setting up minting the NFT and all. So as part of the ceremony, we just went through the process of me transferring the NFT which we made ahead of time to my wife's wallet. And as part of that transaction, we embedded some vows, we embedded some language in the contract itself that we were getting married. And we tried to make it a fun ceremony with a digital priest sort of saying a few things about marriage and love, and we said our vows to each other. So we tried to combine the best of both worlds, and yeah, that's kind of how we went about it. Yes, lovely. Actually, this gives me another perspective to your marriage. Like people who are having some difficulty, like in this world, to get married, they can just go on blockchain and register and get married there. So any which ways, they are married somewhere in this world. Yeah, actually, it's like a different perspective to how you can go about your marriage. And you guys have put that on Ethereum blockchain, if I'm not wrong. Can you just tell us about that? Yeah, so we used OpenSea to
mint the NFT. And so, yeah, we use the default platform NFT, which is Ethereum. Yeah. OpenSea uses both Ethereum and Polygon, and because you are from this technological background, so I would like to ask, like, why did you choose Ethereum blockchain for the vows, and did you go Ethereum for NFT marketplace or Polygon? Which one? We used Ethereum. It was just no specific reason. It was just it was a default choice. Yeah, it was just easier, I guess. Yeah, I think gas fees are a little higher in Ethereum, but for something special like this, I wasn't really worried about Gas fee. fees too Yeah, much. at least for this one. Yes, of course. You wouldn't be worried about the gas fees in this case. What's your next step? Like, what are you guys planning? Like, this question is specifically to Shruti. I want to hear this answer from you. Like, are you like guys planning now something like in metaverse, like having a child in metaverse, like being that creative? Yeah, that would be fun, like having some digital avatar and kind of do things that we probably can't like in real life, like have a really big mansion or something in metaverse. Right. And probably do interiors the way I want to do it and not like fight about it. I know. Choose your own color, pick your own stuff to decorate it and stuff. Yeah, not a bad idea. And the kid also there. Yeah, somewhere playing it. And maybe have like a nice infinity swimming pool or something. Yeah. Just elaborate me, like hypothetically, what would it look like if you would? So yeah, probably like a really beautiful big mansion, something like what Kim and Kanye used to have. And like a big pool with a nice cute library somewhere, and he has his own office space with his computers and all the gears, and probably some mining machine somewhere. Anything else you would like to speak before we close? I mean, anything you would want to go about? It's just that one thing that this whole blockchain wedding and using blockchain to get married, as technically amazing as it sounds, for me it was more like having this personalized way of declaring the love for each other. And it made it more special that he made that effort to create the image that we used for our NFT. And it's a great memory more than anything. And no matter what the gas fees, it's still worth it. Yes. It is kind of very cute, and that's why I was very curious to talk to you both of the guys, like what it would be like. And you've actually given a lot of people new relationship goals in case if you're not aware about it. No, I saw some comments on Instagram where like people were tagging their boyfriends on our like news clipping, and the guys were like, "Ab ye bhi seekhna padega." Yes, of course. There's always new things to do and to impress. Right. Yeah, and I would say like what makes it special is that